Kinjarapu Ram Mohan Naidu to move for leave to introduce the Protection of Interest in Aircraft Objects Bill 2025. Honorable Chairman, sir, with your permission, I rise to move for leave to introduce the bill on the Protection of Interest in Aircraft Objects Bill 2025. There is one notice given by Sri Santosh Kumar P. opposing the introduction of the Protection of Interest in Aircraft Objects Bill 2025. Sir, would you like to say something? Go ahead. Are you on your seat? Pardon? Are you speaking from your seat? Yes, sir. Good. This is only to highlight that members... I always speak from my seat only. Oh, no. I want everyone to know that they can speak only from their seat. Right. So since India is a signatory to the Cape Town Convention, I can understand the importance of the bill, the necessity of the bill. But the point is that this ministry is so enthusiastic in bringing up legislations to adapt to international situations. But what about the passengers? This bill is overwhelmingly focused on the interest of lessors and creditors. The aviation business, airlines, had a huge profit of more than 16,000 crores of rupees during 20 to 23 financial year. And again, they are going to help the creditors and lessors. So this point should be taken into account. And the ministry should come up with something which is beneficial to the passengers. That's it. Hardly a ground to oppose. It speaks of greater participation. I leave it to you. The question is that leave be granted to introduce the bill. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Shri Kinjarapu Ram Mohan Naidu. Honorable Chairman, sir, I rise to move that the bill be introduced. The Union Budget 2025-26. I call upon Shri P. Chidambaram to raise the discussion. Shri P. Chidambaram. Mr. Chairman, I thank the Honorable Finance Minister for presenting the budget for 2025-26. There ought to be a philosophy behind the budget. But I cannot divine one in this budget. I shall not attempt to do so, because after going through the budget speech and the budget numbers, I believe there is no philosophy behind the budget. It is obvious that the budget was politically driven. I shall not elaborate upon that, but I congratulate the Finance Minister for achieving one of her objects a couple of days ago. Congratulations, Finance Minister. I would like to start on an unusual note. The Finance Minister's asked this House to appropriate 20,517 crore for the Ministry of External Affairs. Usually the MEA does not figure in a budget speech, but I want to start with the MEA. And I'll tell you why. In 2023-24, the past year, we allocated 28,915 crore. In the current year, the revised estimate is 25,277 crore, almost 3,600 crore less in the current year.
And for next year, the finance minister is asking for only 20,517 crore. Another 5,300 crore less. I wish the External Affairs Minister is here. I suspect that, and I hope not, I suspect that the Finance Minister is doing a Elon Musk on the External Affairs Minister. Somebody must explain. Are we shrinking our world presence? Are we closing down embassies? Are we closing down consulates? Be that as it may. A more serious aspect of the MEA. MEA stumbled badly in the last week, and I say that with responsibility. It's now clear that the United States informed India about the deportation. They gave a list of deportees. India verified the list and confirmed that 104 or so names are Indian citizens. So this was not a surprise to us. It was a surprise to the rest of the people. The deportation was known to the MEA. The External Affairs Minister met Secretary of State Rubio a few days before the deportation. And that was all published in the newspapers. I asked the government, did the External Affairs Minister raise the matter with Mr. Rubio? Did he know about the SOP? He told this House the SOP has been in place for many years, since 2012. If he knew about the SOP, did he protest the SOP to the Secretary of State of United States? Did he know about the SOP requires them to handcuff, tie the legs with ropes and mask? If he knew about it, did he protest to Mr. Rubio? If he did not protest, why did he not protest? And the most important question, did the External Affairs Minister... Are you yielding? Are you yielding? I'm not yielding. I'm only stating on basis of what he said. He can reply later. Did the External Affairs Minister... He can reply later. Sir, did the External Affairs Minister offer to Mr. Rubio, we will send an aircraft to bring our Indian citizens back? Yes. Another serious matter, another list of 483 Indians who have been identified as illegal immigrants. I don't know when the deportation will take place. I ask a specific question. Will the government send an Indian aircraft to bring back the Indian illegal immigrants? Now I go to the Finance Minister's trump card. No pun intended, sir. Trump card. No pun intended. Sir, when you said twice, I got worried that no pun intended. You said twice, which means pun is intended. And I'm wondering whether your reference to Elon Musk is a compliment to the Honorable Finance Minister. Sir, I'm looking at my clock. Groove of efficiency. I'm looking at my clock and my whip. I'll add up the time, sir. 1 minute I'll add. Yeah, please, please. Income tax cut is the FM's main thrust of this debate, and she has given a number of interviews. The House should know that only 3.2 crore persons pay income tax, from the last figures available. The rest file returns, but they pay nil tax. She has raised the government has raised the threshold from 7 lakhs to 12 lakhs. And it applies to all taxpayers right up to the highest taxpayer. Now, I've looked at the CBTT statistics of taxpayers
the last available statistics. My rough calculation is about 80 to 85 lakh taxpayers will go out of the tax net from next year, and 2.5 crore will benefit. But the 2.5 crore includes not only the middle class, which the finance minister passionately championed, it includes 2,27,315 persons who returned a total income of more than 1 crore. It includes 262 persons who returned a total income of more than 100 crore. And it includes 23 persons who returned a total income of more than 500 crore. So this is not benefiting the middle class alone, which I welcome, but it's benefiting the very rich and the richest in the world. Yes. Finance ministers also claimed that she had foregone 1 lakh crore rupees. Yet she has claimed that the net tax revenues to the center will grow by 11.1% in 25-26. In 24-25 also it grew by 11%. So it's about the same number. After foregoing 1 lakh crore, in this budget, how does she claim that the net tax revenues to the center will grow by the same 11%? This is pure magic, not mathematics. I will reserve how this magic unfolds, and I will comment on it later. Secondly, the finance minister says this 1 lakh crore will go into consumption, and that consumption will boost the economy. I find initially a lot of cheerleaders accepted that claim. But in the last 2-3 days, even the finance minister's cheerleaders are becoming skeptical about it. I asked the Honorable Finance Minister, will not part of the 1 lakh crore go into savings? SBI chairman has hoped that part of it will come to him and the banking system. Will not part of the 1 lakh crore go into repaying old household debts? Will not part of the 1 lakh crore go into travel abroad? Will it not go for educating children abroad? And will it not go into consuming imported goods? If you deduct all this, how does the Honorable Finance Minister claim that the entire 1 lakh crore will go into consuming domestic goods and services? It's only consumption of domestic goods and services will boost the GDP rate. And besides, what is 1 lakh crore when compared to the size of the GDP? The size of the GDP this year is 324 lakh crore. 1 lakh crore of 324 lakh crore is 0.3. Are you seriously saying, and are you asking this House to believe, that 0.3% will boost the economy? My humble advice to the finance minister is, don't rely on only one engine of growth, consumption. Look at other engines of growth, like exports, capital investment. Those other engines must be revved up. You can't rely upon one engine of growth. Most of this consumption will not go into consuming domestic goods and services. Now contrast what she has forgotten. She remembered the middle class, but I congratulate her for that. But what about the section of the people whom she has forgotten?
Look at the plight of Indian households. I'm taking purely from government numbers. Between 2012 and 2024, in the 12-year period, food inflation was 6.18%. Education inflation was 11%. Healthcare inflation was 14%. These have crippled Indian households. Household savings have fallen from 25.2% to 18.4%. And household consumption saving in September survey in 2023 shows, and mark these numbers, average monthly per capita expenditure of a rural family is only 4,226. And in urban areas, it is 6,996. Now we must examine these numbers more closely. This is the average for the whole India, 4,662 and 6,996, average for the whole India. But the bottom 50% will be even less. And bottom 50% of the 50% will be even less. Now, what has this budget done for the average Indian household in the bottom 50% and the bottom 25%? Nothing. What relief has the Honorable Finance Minister given them? She could have done one of several things. I'm not saying she should have done all the 4 things that I'm mentioning. She could have done one of several things. One, instead of cutting income tax, or along with cutting income tax, she should have cut the GST. Everybody pays GST. The richest and the poorest pay GST. She could have cut GST. She could have cut the tax on petrol and diesel. Everybody indirectly or directly uses petrol and diesel. She could have increased the Maganrega daily wage. She could have increased that rate because the poorest are the ones who are going to Maganrega work. And she could have raised the statutory minimum wage across the board under the Minimum Wages Act. That would have benefited thousands and thousands of labour. She did nothing, but she was focused on income tax and she was focused on the Delhi election. Let me turn to another subject. The most gravest challenge facing the country is unemployment. I think all of you will agree, unemployment is the gravest challenge. Even the Treasury benches must agree. Now, the periodic labor force survey, popularly known as PLFS, concluded that unemployment rate is 3.2%. Now, if the unemployment rate is 3.2%, and that the economic survey also repeats that, if the unemployment rate is 3.2%, I'm sure the London School of Economics, as well as every other university, teaches us that any unemployment rate less than 5% is equal to full employment. I won't get into the intricacies. If unemployment rate has fallen to 3.2%, why should we worry? We should all be happy because it's full employment according to economic theory. The same PLF says youth unemployment is 10.2%. The same PLFS says graduates unemployment is 13%. If youth unemployment is 10.2 and graduates unemployment is 13,
How does it conclude that the total unemployment rate in India is only 3.2? For every job, for 100 jobs, there are a million applicants. For 1,000 jobs, there are several million applicants. The economic survey, sir, I quote, we need to create 78.5 lakh non-farm jobs every year until 2030. I asked the Honorable Finance Minister, what is her plan? What is the way forward to create 78 lakh non-farm jobs between now and 2030? They will be in government until 2029. So the bulk of the period is their government. They should tell us clearly a path to create 78 lakh jobs every year until the end of the government. Sir, the next I come to the famous PLI. The budget has 8 lines of expenditure on employment generation. I've looked at it closely. If I'm wrong, the Honorable Finance Minister will correct me. There are 5 lines of expenditure under PLA. There's 1 line of expenditure called New Employment Generation Program. There is 1 line called Prime Minister's Employment Generation Program. There's 1 line called Skill India. I don't know the differences between these acronyms. What is the difference between Prime Minister's New Employment Generation Program and the New Employment Generation Program? We don't have a new PM, we have the same PM. On the 8 lines in the current year, mark these numbers, sir. On the 8 lines together, I've got the breakdown, but I'm taking all the 8 lines of expenditure. In the current year, the budget allocation when she presented the budget last year was 28,318 crore. This is the gravest challenge. You allocated 28,318 crore. But what will you spend? By March 31, you will spend only 20,035 crore. Why are you not spending 8,000 crore on the challenge, which is the gravest challenge facing the country? Yes. The PLI scheme is a spectacular failure. Yes. Otherwise, you would have spent this money. Employment generation is a spectacular failure. Now I look at another aspect. The wages of salaried male worker as well as female worker, but I'm giving the numbers of the male worker. The wages of salaried male worker has fallen in the last 7 years from 12,665 per month to 11,858 per month. This is the own numbers. From 12,665 to 11,858. The wages of self-employed male worker has fallen from 9,454 per month to 8,591 per month. So what is the position, sir? The position is incomes are falling, wages are falling, government expenditure is not keeping pace with the promises, household net savings have fallen, household debt has arisen. Yes. This is the plight of the bottom 50% of India. Yes. There's nothing in this budget for the bottom 50%. I think we cannot divide this house into one half speaking for the top 50% and one half speaking for the bottom 50%. I'm quite happy to speak for the bottom 50%, but I want the treasury benches also to impress upon their ministers to speak for the bottom 50%. Yes, yes, yes. Man ki baat. Sir, let's take Make in India. They made such a hullabaloo about Make in India, Made in India. What was Make in India
became made in India. In global manufacturing trade, India's share is 2.8%. China's is 28.8%. So we are not a big player in manufacturing goods trade. The share of India's manufacturing in the GDP has fallen under this government. Yes. And I give the numbers from the economic survey. 2014, it was 15.07%. 2019, it has fallen to 13.46%. And 2023, it is 12.93%. These are the numbers of the World Bank. Economic survey has proportions in the GVA, but that has also fallen from 17% to 14%. So manufacturing as a proportion of GDP has not increased under this government. So manufacturing is a spectacular failure. PLI is a spectacular failure. So what has this government got to boast about after the last 11 years? I come to my penultimate point. Now, budget is about numbers. I don't want to burden the House with numbers, but I have to mention some numbers, because the budget is about numbers. Now, the FM, Honorable FM, claimed in a number of interviews that she has not only met the fiscal deficit target, but has improved upon the fiscal deficit target. Absolutely true. If you look at the numbers, 4.9, achievement was 4.8. But how did she achieve this 4.8? She cut capital expenditure by the central government by 92,682 crore. Not revenue expenditure, sir. Capital expenditure by the central government was cut by 92,682 crore. She cut the grants in aid to states for creating capital assets, that's another form of capital expenditure, by 90,887 crore. So total cut in capital expenditure by the center and the states, I'm not apportioning blame, but the center and the states in the current year will be 1,83,569 crore. By cutting capital expenditure by such a humongous amount, she saved on the fiscal deficit 43,785 crore. I can understand if she has saved on the fiscal deficit 1,83,000 crore. It is bad policy, but I will understand. But after cutting 1,83,000 odd crore, she saved about 44,000 crore. Is it good policy? I don't know. Is it good economics? I say no, it is not good economics. You can't cut capital expenditure and compress your fiscal deficit and say, I have met my fiscal deficit, I've improved my fiscal deficit. On the expenditure side, I want honorable members, all of us are concerned, to look at these numbers. Where are the cuts fallen? On health, 1,255 crore. On education, 11,584 crore. On social welfare, 10,019 crore. I wish the Agriculture and Rural Development Minister was here. On agriculture, the cut is 10,992 crore. On rural development, it is 75,133 crore. And in urban development, it's 18,907 crore. Why do you make these cruel cuts? There are other unkind cuts. I won't give the numbers on Poshan, Jal Jeevan Mission, National
Social Assistance Program, Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana, Crop Insurance Scheme, Urea Subsidy, PM Garib Kalyan Yojana. And all these programs that have been Anushushet Jati Yojana. 1,340 crore has been cut. Young Achievers Scholarship, 455 crore. Post-Metric Scholarship for Scheduled Caste, 860 crore. Program for Development of Scheduled Tribes, 670 crore. You cut money for Scheduled Caste, Scheduled Tribe, and Anushushet Jati. And you say, I have reached my fiscal deficit, I've improved my fiscal deficit. Look at the grand announcements in this budget. One grand announcement was Urban Challenge Fund, para 58 of the budget speech. I was impressed. Urban Challenge Fund, 1 lakh crore was announced. What is the allocation? 10,000 crore. Jal Jeevan Mission, para 55 of the budget speech. Jal Jeevan Mission says, we have provided water to 80% of the population of India, and we will provide for the remaining 20%. We are therefore extending the scheme. The budget estimate for the current year was 70,163 crore. Actual expenditure is 22,614 crore. I mean, this is pure magic, sir. You don't spend 1/4 or 1/3 of your money, and you claim that everybody has been provided water. Now I come to my last point. Sir, you will give me 1 more minute. I would say, I'd undertake it. Yeah. Now, what did the CEA say? The Chief Economic Advisor is a reasonably autonomous office. I'm glad the Honorable Finance Minister has given him the freedom to speak his mind and to be frank and forthright. I congratulate the Honorable Finance Minister in the end for that. What did he say? Out of the way. Yes. It's all we are saying, get out of the way. In a different context. Deregulate. Deregulation drives growth. Work towards giving to people back their agency and enhancing the economic freedoms of individuals and organizations. What is the response of the Honorable Finance Minister? To get out of the way and to deregulate. Her response is to announce in the budget speech 7 new schemes, 8 new missions, and 4 new funds. Now, where will the money come from these schemes and missions and funds? I don't know, because there's no allocation. Sir, in conclusion, I want to say this. Half a minute. Governance is in the present. There is a government, but I'm sorry to say there is little governance. There's no philosophy, there's no policy. In 1991, we faced a graver situation. There was a man entered this parliament, entered the North Bloc. Yes. He had an economic philosophy. Yes. He followed it with policies that required wisdom and farsightedness. Dr. Manmohan Singh had them. The Honorable Finance Minister to recapture the wisdom and the farsightedness of Dr. Manmohan.
One last question. Finance Minister of the government, why have you not conferred Bharat Ratna on Dr. I thought the former finance minister would cheer and congratulate the present finance minister for having created a record of presenting 8 consecutive budgets, surpassing that of C.D. Deshmukh. The House takes note of it. It's a history information. Rest of the issues for the two sides to deal. I call upon Dr. Dinesh Sharma. Sir, your time is 25 minutes. श्रीमान मानी हमारे नेता के द्वारा मुझे 35 का अनुमति मिली थी। How much time? 35. It stands revised. Dr. Dinesh Sharma, 35 minutes. हमारी सभापति महोदय, ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे केंद्रीय बजट पर 2025-26 पर बोलने का अवसर आपने मुझे दिया। आपका धन्यवाद। और वास्तव में ये ऐतिहासिक अवसर है जब हमारी सम्मानित वित्त मंत्री के द्वारा लगातार ये मोदी 3 जो तीसरी बार एनडीए की सरकार है, उसमें 8वीं बार उन्होंने बजट को प्रस्तुतिकरण किया है। इस पूर्णकालिक केंद्रीय बजट की प्रमुख विशेषताओं को मैं सदन के सम्मुख रखना चाहता हूं। मानवर ये एक राजनीतिक अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं की संपूर्ति करने वाला ये एक असाधारण रूप से सफल बजट है। और मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं, इसने विभिन्न वर्गों को जहां छुआ है, वहां निम्न स्तर पर जो कम आय वाले लोग थे उनकी आय का सृजन करना, उनकी आय में समृद्धि करना, ये भी इस बजट का उद्देश्य रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें आवास, शहरी मामले, नवाचार, अनुसंधान एवं विकास, महिला सशक्तिकरण, जनजाति सशक्तिकरण के क्षेत्र में बहुत सारे क्रांतिकारी परिवर्तन किए गए हैं। और मैं जानता हूं कि बजट के प्रस्तुतिकरण, हालांकि ये बजट की व्यवस्था तो पहले तो 1997 तक शाम को 5 बजे होती थी, क्योंकि अंग्रेजों का जो उस समय होता था वो 11 बजे होता था। अब इसकी प्रस्तुति दिन में होती है, यानी भारतीय व्यवस्था के अनुसार जो इसका प्रतिपादन होता है। मैं माननीय जो वित्त मंत्री जी हैं उनको वित्तीय अनुशासन को बनाए रखने के लिए बधाई देता हूं। और बधाई इसलिए भी देता हूं कि जो हमारी लक्ष्य है 5वीं अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ना, निश्चित रूप में जिस प्रकार से राजकोषीय घाटे को कम किया गया है, जिस प्रकार से हमारी जो विकास की दर है वो स्थिर रूप में लगातार बढ़ रही है, हम 2026 तक चौथी अर्थव्यवस्था के रूप में पूरे विश्व की पटल पर आएंगे। और हमारा ये कहना है कि जो $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी की तरफ जो हमारे इस बजट में तमाम प्रावधान किए गए हैं, निश्चित रूप में ये 2047 में विकसित भारत की परिकल्पना का एक रोड मैप के रूप में ये प्रस्तुत हुआ है। और ये सही है कि ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा भी इसकी प्रशंसा की गई है और उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक मंदी के बीच एक उज्जवल स्थान दिया है और इसे विकास का केंद्र बनाया है। और जो हमारी मजबूत नीतियों और दूरदर्शी सोच के कारण ही संभव हो पाया है। मानवर मैं जानता हूं, अभी हालांकि हमारे पूर्व वित्त मंत्री महोदय समोता चले गए हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी तरीके से विश्लेषण किया है। आज एक विडंबना है मानवर कि भारत में और खासतौर से राजनीति में दो चीजें बहुत तेजी के साथ समाप्त हो रही हैं। एक है व्यक्ति का भरोसा और दूसरा है कांग्रेस पार्टी। ये दोनों बहुत तेजी से समाप्ति की तरफ बढ़ रहे हैं। मैंने इसको ऐसे नहीं कहा, जिन नीतियों के कारण उन्होंने अभी तक जिन बजट का वो विश्लेषण कर रहे थे, कभी गरीब को नहीं छुआ, कभी मध्यम वर्ग को नहीं छुआ,
मैंने तो तमाम विपक्षी नेताओं के बयान उस समय पढ़े थे जब वो कह रहे थे कि जो मध्यम वर्ग के लिए आप जो 7 लाख की जो सीमा है उसको 10 लाख तक करिए। प्रधानमंत्री जी ने के मार्गदर्शन पे हमारी वित्त मंत्री जी ने उसको 12% तक का कर दिया, 12 लाख तक का कर दिया। जो 7 लाख करना था उसको 12 लाख तक की छूट दे दिया। यही अद्भुत समायोजन है और नेक नियति के कारण जिस प्रकार से अर्थ संतुलन बना है आज के भारत के हमारे इस आर्थिक व्यवस्था में, मैं यही कहूंगा कि आज मैं कांग्रेस के लिए कभी कभी हंसी में कहता हूं कि खुद चिराग बन के जो वक्त के अंधेरे में, खुद चिराग बन के जलो वक्त के अंधेरे में, मांगी हुई रोशनी से कभी उजाले नहीं होते। आज वो राष्ट्रीय पार्टी आज छोटे छोटे दलों पर, छोटी छोटी नीतियों पर, आज तमाम विघटनकारी मंतव्यों पर अपनी नीतियों को उद्घाटित करती है। मैं तो आदरणीय खड़गे जी चले गए, हमारे वरिष्ठ नेता हैं, और आदरणीय सोनिया जी का उद्बोधन आज हम लोगों ने सुना है। मैं तो नहीं कहूंगा कि मैं आपको बधाई देना चाहता हूं और कोटिसा बधाई देना चाहता हूं। आपका जो प्रदर्शन लगातार है, आपने कम से कम दिल्ली की विधानसभा चुनाव में 3 सीटों पर अपनी जमानत बचाई है, इसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। आप जो है आप कहते रह गए, आप बदनाम करते रह गए संविधान खतरे में है, आप बदनाम करते रह गए कि आरक्षण समाप्त हो रहा है, और जनता ने आपकी जो बदनीयति थी उसको पहचाना। हरियाणा आया, महाराष्ट्र आया, दिल्ली आया और आगे की तैयारी प्रारंभ है। और इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि आज जो हमारे मित्र हैं उनसे मैं कहूंगा कि आपकी समस्या के 2 कारण हैं। एक कारण तो यह है कि बिना सोचे कार्य करना, जो मन में आया कर डाला, और दूसरा है बिना कार्य किए सोचते रहना। आपने जो किया नहीं उसके लिए भी आप सोचते रहते हो। आदरणीय चिदंबरम साहब ने भी अपने उद्बोधन में कहा कि मनमोहन सिंह जी को भारत रत्न देना चाहिए। आपने क्या दिया उनको? अगर 80 के दशक की बात की जाए, जब वो एक पद पर थे, संवैधानिक पद पे थे, वित्त मंत्री नहीं थे, योजना आयोग के संभवतः उपाध्यक्ष थे, उन्होंने यही जो बजट के बारे में वो कह रहे थे कि ग्रामीण में आपने क्या किया, ग्रामीण में ही तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था के उन्नयन के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन पे जो सीतारमण जी ने किया अभूतपूर्व है। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि उस समय यही बात मनमोहन सिंह जी ने कही थी। आदरणीय राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री हुआ करते थे और उन्होंने उस समय क्या कहा था, मनमोहन सिंह जी का अपमान करते हुए कि जोकरों का समूह है। उस समय मनमोहन सिंह जी जोकरों का समूह दिखाई पड़े थे जब उनका विधेयक को एक बड़े नेता कांग्रेस के फाड़ रहे थे और वो यूजलेस दिख रहे थे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, कौन नेता तो आप जानते ही हैं जो जाड़े में भी गर्मी का एहसास करते हैं। मैं यही कह सकता हूं कि आज बदले हुए समय में जब सरकार काम कर रही है तो सरकार के काम के समय आज उनको ये कहा जाता है कि आपने ये वादा पूरा नहीं किया, वो नहीं किया। अगर वादा नहीं पूरा किया तुम सत्ता में कैसे आए, कैसे हमने जीता? मैं तो कहूंगा कि हर वादा दिल से निभाते हैं हम, तभी तो जनता के मन में भाते हैं हम लगातार जीत रहे हैं, अब लगातार हार रहे हैं। और आज इसका अगर विश्लेषण किया जाए तो जहां हमने वित्तीय अनुशासन को बनाया है, वहीं जो FRBM है, जो बजट प्रबंधन अधिनियम है, उसके द्वारा जो निर्धारित लक्ष्यों के प्राप्ति के लिए जो राजकोषीय घाटे को लगातार कम करने का जो संकल्प हमने लिया था, वो आज हमारी सरकार ने बखूबी इसको प्रस्तुत किया है। अगर आप बजट का अवलोकन करें, उसका विश्लेषण करें, तो अद्भुत चीज दिखाई पड़ती है कि जो वर्ष 2023 का जो फाइनेंशियल ईयर था उसमें हमारा राजकोषीय घाटा था 4%। जो वर्ष 2025 का था हमारा फाइनेंशियल ईयर, जो रिवाइज एस्टिमेट हुआ वो था 1.9%। और जो फाइनेंशियल ईयर 2026 है, बजट का जो एस्टिमेट है वो आएगा 1.5%। यही एक अर्थ प्रबंधन की कुशलता का मापन यंत्र है। और मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आज जिस प्रकार से जो हमारी ये व्यवस्थाएं, अगर यही रुझान जारी रहा तो 2030 में आज आपसे कहना चाहता हूं कि 2030 तक हमें राजस्व अधिशेष, जिसको आप बोलते हो रेवेन्यू सरप्लस की तरफ हम लोग तेजी के साथ बढ़ जाएंगे, बल्कि हम उसको प्राप्त करेंगे। आप कह सकते हो कि एक बार और प्राप्त किया गया 1981 में,
लेकिन उसके बाद आपने क्यों नहीं प्राप्त किया? क्यों भारत को सोना बेचना पड़ा? क्यों भारत एक डेफिसिट फाइनेंसिंग की तरफ बढ़ता गया? आपकी नीतियों ने भारत को कमजोर बनाया और पराधीन बनाया, और वही कारण था कि आपने सड़ा हुआ लाल रंग का गेहूं आप अमेरिका से मंगाते थे, यहां पर राशन कार्ड लेके लोग लाइन लगाते थे, लाठी चार्ज होता था और बामुश्किल से वो थोड़ा सा राशन मिलता। आज यही आर्थिक नीतियों के कारण आज कुछ कुछ प्रदेशों में तो 10 किलो राशन मुफ्त मिल रहा है, कहीं 5 किलो राशन मुफ्त में मिल रहा है। यही अर्थ प्रबंधन का एक सारांश है जिसको समझने की जरूरत थी। और मैं ये कहना चाहता हूं कि आज माननीय जो हमारे वित्त मंत्री महोदय हैं, उनको मैं धन्यवाद देता हूं। हालांकि आदरणीय खड़गे साहब बड़े सम्मान से उनको कई बार, मैं तो ये नहीं मानता कि भूल से कहा उन्होंने माता जी कह के शब्दों का प्रयोग करते हैं। हो सकता है आदर मन में भाव रहा हो, लेकिन मां क्या है? मां तो वो है जो घर में सभी बच्चों का ख्याल रखती है, जो कमजोर है उसकी भी संपूर्ति करती है इच्छाओं की, जो सबल है उसको भी प्यार करती है, और पूरे परिवार का संचालन मां करती है। और आज अगर इस बजट को देखें तो आदरणीय वित्त मंत्री महोदया ने जहां ग्रामीण अर्थव्यवस्था के उन्नयन के लिए काम किया है, वहीं शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को भी किया है, तो वहीं पर बच्चों की शिक्षा के लिए और शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन के लिए बजट का अवलोकन है। तो आईआईटी और आईआईएम के लिए भी यहाँ कुछ न कुछ प्रावधान इसमें दिए गए हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि भारत का, जो लोग कहते हैं कि भारत में कि जो मूल अवस्था है, एक है उसकी प्रगति का जो जड़ है, वो प्रगति का जड़ निश्चित रूप में वहां का जो मध्यम वर्ग है वो है। और पिछली सरकारों ने क्यों नहीं मध्यम वर्ग के उस पर ध्यान दिया? आज इस बजट का जो मूल तत्व समाहित है, मैं समझता हूं उसने आज तक के इसके पहले कभी भी किसी ने इसके बारे में नहीं सोचा कि हम मध्यम श्रेणी को जितनी इनकम नहीं होती उससे ज्यादा, कभी कभी तो 30% तक का उनको अपनी आय में देना पड़ता था, उसके बारे में नहीं सोचा था। आज का जो बजट है उसने निश्चित रूप से 12,75,000 तक के वार्षिक आय वालों का शून्य आज ये आयकर कर दिया है। अभी तो आयकर का विधेयक आने वाला है, सरलीकरण भी होगा, तमाम चीजें भी होगी। और मैं कह सकता हूं कि ये जो कदम हैं सरकार के, ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने वाले हैं। आज निवेश बढ़ रहा है, मानवर आज आर्थिक विकास तेजी से बढ़ रहा है, और यही शायद अमृतकाल की और मजबूती के साथ हमको ले जाने वाला है। अभी कुछ दिन पहले अभी आरबीआई ने रेपो रेट कम किया है, और कुछ लोग इस पे भी व्यंग कर सकते हैं, लेकिन रेपो रेट कम होने का मतलब क्या है? लोन सस्ते हो जाएंगे, लोगों के हाथ में धन आएगा जिससे वह या तो खर्च करेंगे या उसे बचाएंगे तो निवेश बढ़ेगा, खर्च करेंगे तो उपभोक्ता की मांग बढ़ेगी, और मांग बढ़ेगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगा। सारा चेन एक साथ जो चल रहा है, मैं समझता हूं कि यही भारत का असली अर्थशास्त्र है जिसका प्रस्तुतिकरण होना चाहिए था। आजादी के बाद में वो करने में कांग्रेस की सरकार असफल रही। मैं इस बारे में भी कहना चाहता हूं कि भारत में तमाम चीजें हमारे सामने आई। हमारा जो विकास दर है, अगर हम देखें तो 25-26 में 6.4 तक इसका वास्तविक विकास दर का अनुमान है। पूंजीगत व्यय को 8.2% तक की बढ़ाने का जो अनुमान है, वो भी मैं समझता हूं कि हमारे अर्थव्यवस्था का एक वो पहलू बनकर सामने आता है कि जो हमारे देश को उन्नति की ओर ले जाएगा। मानवर हर क्षेत्र में काम हुआ है। अभी आवास के बारे में टिप्पणी हो रही थी। आवास, प्रधानमंत्री जी ने तो महिलाओं के नाम पर आवास का आवंटन किया है। यहां पर अगर देखें तो जो हमारी आयुष्मान भारत की जो स्कीम है, उसमें तमाम लोगों का घर परिवार सुखी हुआ है। अगर अपना मकान होगा तो एक महिला स्वस्थ वातावरण में रहेगी, स्वस्थ वातावरण में बच्चे का पालन होगा, और वो स्वस्थ मानसिकता अपने अन्य कार्यों के उन्नयन के लिए अपना योगदान दे सकती है। इसलिए मैं कहूंगा कि हमारे जो माननीय मंत्री हैं आवास और शहरी मामलों पे, उन्होंने एक अच्छी पहल की है। और जो मोदी सरकार, जो तीसरी एनडीए की तीसरी बार बनी सरकार है, उसने सबके लिए घर का जो लक्ष्य रखा है, पूरे देश भर में 3 करोड़ और परिवारों को पक्का घर मिलने वाला है। और यही नहीं मान्यवर, इसके लिए योजना के लिए 5,36,000 करोड़ का बजट का प्रावधान रखा गया है।
मोदी जी तो कहते हैं वही गारंटी है, मोदी जी जो कहते हैं वही करते हैं। लोग तो कहते हैं कुछ काम के लिए मोदी जी आपको दिल्ली के लिए अगला जन्म लेना पड़ेगा। नहीं, मोदी जी इसी जन्म में जो बड़ा सा बड़ा काम है वो करने की कुवत रखते हैं। इसलिए ये जो मैं तो कभी कभी अभी वहां पर वो साथी मौजूद नहीं है, आपदा समाप्त हुई है, लेकिन आपदा से संलग्न मैं समझता हूं कि दिल्ली आज खुशहाली मना रहा है। कुछ लोग यहां पर हैं नहीं, उनसे मैं यही कहूंगा कि जाड़े में राजनीतिक व्यक्तियों को कहूंगा कि जाड़े में ठंड और व्यक्ति का घमंड ये दोनों अकड़ पैदा करता है, और अकड़ को जनता राजनीति में बड़ी जल्दी ठीक करती है। और वही हुआ, अगले जन्म की जरूरत नहीं पड़ा, इसी जन्म में फैसला हो गया। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि मान्यवर इस बजट से घबराहट पैदा हुई है कुछ लोगों के मन और मस्तिष्क में, और वहीं के एक राज्य के भूत मेरा मुझसे गलत निकल गया, भूतपूर्व मंत्री, हालांकि भूत भी गलत नहीं है मान्यवर, भूत का विशेषता है कि वो चक्कर काटता रहता है चारों तरफ। भूतपूर्व जो मुख्यमंत्री रहे उन्होंने मान्यवर कहा था ये बात को कि जो बजट है वो गरीबों के लिए, मध्यम श्रेणी के लिए होना चाहिए, और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मध्यम श्रेणी के लिए जिसने सोचा नहीं था वो हो गया। उन्होंने 10 लाख की आय सीमा कही थी, यहाँ 12 लाख हो गया। यहाँ रेपो रेट कम हो रहा है। यहाँ पर अगर आप देखें तो 8वां वेतन आयोग का गठन हो गया। यहाँ पर अगर आप देखें तो गरीब और जो दलित महिलाएं थी उनके लिए किसी ने सोचा ही नहीं था। ST के लिए 2 करोड़ रुपए तक का टर्म लोन की व्यवस्था हुई है। इसमें कौन सा वर्ग ऐसा है जो अछूता रहा हो? नहीं रहा कोई। लेकिन मान्यवर ये जो अमृत काल की तरफ हम मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं, ये शायद इसलिए भी संभव हुआ कि हमने जो रोटी कपड़ा और मकान, दीनदयाल जी तो कहते थे कि भूल गए रास रंग भूल गए छकड़ी, 3 चीज याद रही नून तेल लकड़ी। अब नून तेल लकड़ी की जिम्मेदारी भी उनके अनुयायी, उनको मानने वाले, उनके जिसको कहना चाहिए एक शिष्यवत भाव रखने वाले प्रधानमंत्री जी सब कुछ पूरा कर रहे हैं। अब अगर जरूरत है तो दवा सरकार करेगी, बच्चे का विवाह है चिंता सरकार करेगी, शिक्षा है उसके मुफ्त शिक्षा हमारी सरकार करेगी, आज रोजगार है तो मुद्रा लोन की बड़ी भी राशि सरकार देगी। हर चीज की चिंता करने वाली ये चिंतनशील सरकार है मानवर। इसीलिए मैं कहता हूं चिंता जो करे, चिंता करता है तो निश्चित रूप में वो पराभव का भाव लेता है। और जो चिंता करने वाले लोग थे वो आलोचना करते थे, कटाक्ष करते थे, व्यंग करते थे। इन सब के बीच में एक दूरदर्शी न केवल बजट आया, बल्कि बजट ने तो जो 2025 तक 40,000 और घर पूरे करने का जो संकल्प लिया है, 50,000 घर तो अभी उन्होंने एक योजना के अंतर्गत जिसको हम बोलते हैं स्पेशल विंडो फॉर अफोर्डेबल एंड मिड इनकम हाउसिंग स्कीम, उस योजना में 50,000 मकान दे दिए। 2025 तक हम 40,000 मकान और देने वाले हैं। क्या चाहिए आपको? मैं समझता हूं कि अगर मैं तो वैसे कोई कवि नहीं हूं, काव्य का रचनाकार नहीं, श्रोता हूं, श्रवण करता हूं, और श्रवण करता है मुझे कुछ बातें याद आती। एक छत तो हर सिर का अधिकार है, एक छत तो हर सिर का अधिकार है, भारत के घरों में पलता विकास का आधार है। दीवारें नहीं, ये हर बच्चे की मुस्कान है, हर घर में बसता भारत का सम्मान है। और ये जो भारत का सम्मान है, इस सम्मान के उन्नयन के लिए हमारी सरकार ने काम किया है। और मान्यवर मैं यही कह सकता हूं कि आज चारों तरफ जो हमारे गरीबों के लिए कार्य किए जा रहे हैं, उसमें मैं यही कहूंगा कि जो अज्ञात को खोजने का साहस रखते हैं वही विकास की नई दिशा भी गढ़ते हैं। आज तमाम जगह पर जो नहीं हो रहा था उसको भी खोज के सरकार ने पूरा किया है। अभी 3 दिन पहले तो मैं सुभाष चंद्र बोस जी के ड्राइवर कमरुद्दीन साहब का एक चित्र देख रहा था उस पे समाचार पत्रों में। कमरुद्दीन साहब सुभाष चंद्र बोस जी के ड्राइवर रहा करते थे और वो एक बेदहाली के वातावरण में अपना जीवन यापन कर रहे थे। प्रधानमंत्री जी ने खोजा
और न केवल खोजा, उनकी सारी आवश्यकताओं को पूरा करने का वो किया। और प्रधानमंत्री चरण छूते हुए कमरुद्दीन जी के दिखाई पड़े। यही भारत है जो वाल्मीकियों के कुंभ मेले में सफाई कर्मियों का पैर धोता हुआ जहां देश का प्रधानमंत्री दिखाई पड़े, यही भारत का प्रतीक है। और माननीय, यही जो विडंबना है विपक्ष के लिए, ये दर्दनाक बनती हुई जा रही है। और वो तरह तरह की बातें, जहां पर जो भारत की जो प्रतीक है, भारत की जो सभ्यता है, जो भारत का एक जो सनातन है, उस पर कभी कभी आघात भी करते हैं और बाद में कभी कभी डुबकी भी लगाते हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में तो इतना निर्मल पानी था कुंभ में, यह अलग बात है। हमारे राष्ट्रपति जी ने भी दुख व्यक्त किया कि एक अप्रिय घटना घटी, नहीं घटनी चाहिए थी, सबको दुख हुआ। लेकिन जिस तरह व्यवस्था है आज कि एक जमाने में 4 करोड़ आ रहे थे, तो क्या कारण है कि 2025 में आज 40 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुका है, लोग आ रहे। क्यों? क्योंकि व्यवस्था भी अच्छी है और लोगों का जो जाति पाति अलग करो, काटो डांटो बांटो अलग करो, राज करो का जो अभियान था, वो सनातनियों ने एक साथ स्नान होता है। केवट साहब अगर नाव का है तो पंडित जी भी साथ में हाथ मिलाते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो दलित समुदाय जाति नहीं कोई पूछता, कोई धर्म नहीं पूछता और साथ में मिलकर ईश्वर की स्तुति में अपने को नतमस्तक करते हैं। यही महाकुंभ का जो जिस्ट है, उस जिस्ट को कोई मर्म को समझ नहीं पाया। लोग गए वहां पर, वीआईपी कल्चर में गए, 100 लोगों की सेना लेकर गए थे, 11 डुबकी लगाई। सम्मानित है हमारे, मैं सम्मान करता हूं। लेकिन जब दिल्ली में वैसे लोग कहते हैं कुंभ के मेले में बहुत सारे लोग खो जाते हैं, हालांकि कुंभ में खोया पाया का वहां पर वो लगा हुआ है कैंप। लेकिन दिल्ली के चुनाव में, जो दिल्ली का महाकुंभ था चुनाव का, उसमें 2 लड़के उत्तर प्रदेश के खो गए। एक लड़के कह रहे थे कि वो नेशनल हेराल्ड के घोटाले के आरोपी हैं, तो दूसरे उत्तर प्रदेश के लड़के कह रहे थे कि ये शराब घोटाले के ये आरोपी हैं। ये दोनों मिलेंगे, अलग होंगे, वो उनका अपना कार्य है। लेकिन मेरा प्रश्न क्या है? मेरा प्रश्न ये है कि जब आपने 11 डुबकियां लगाई थी, तो कम से कम यमुना मैया में आप साथ में हाथ पकड़ के एक डुबकी तो लगा लेते। आप नहीं लगाए क्योंकि आपने वादा नहीं पूरा किया, और वादा नहीं पूरा किया तो निश्चित रूप में जनता ने आपको नकार दिया। ये जो बजट है, ये वादों को पूरा करने वाला है। क्रमशः हर जगह पर एक छोटे छोटे वादों का, जनजातियों के संबंध में देखिए, धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान का चलाया है। अगर आपने देखें तो 24,100 करोड़ रुपया का जो बजट रखा गया है, वो न्याय महाअभियान पीएम जनमन के लिए रखा गया है। अगर आप देखें कि अत्यंत जो पिछड़े जनजाति समूह हैं, उनको जो लंबे समय से उनको उपेक्षित रखा गया था, उनके लिए तमाम कल्याणकारी योजनाएं ये हमारी सरकार ने बनाया है। और शायद पहली बार ये जो जनजाति गौरव दिवस है, उसको मनाने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। मैं कह सकता हूं कि ये ग्रामीणों के लिए, जनजाति के लिए, दलित महिलाओं के लिए, ये नौजवानों के लिए स्टार्टअप को भी दुगना बढ़ा दिया है। आज मुद्रा लोन को भी दुगना कर दिया है, रोजगार का सृजन करने वाला है। तो वहीं चमड़ा उद्योग में एक नई क्रांति लाने के लगभग 22 लाख नौकरियों का सृजन करने वाला है। तो अगर आप दूसरी तरफ देखेंगे तो तमाम प्रकार के एआई, उसके ऊपर भी तमाम पैसा का बजट का प्रावधान किया गया है। हर तरफ ये चौमुखी विकास का, अगर इसको मैं देखूं तो ये हमारे जो लक्ष्य हैं वो मिलेंगे, महत्वपूर्ण हैं। लेकिन अगर इसमें कोई बहाना ढूंढता है कोई कि हमने उस समय था, नहीं हुआ, आपको ये करना चाहिए था, निश्चित रूप में हमको जो करना चाहिए था हम कर रहे हैं। हमने तो आर्थिक सशक्तिकरण के लिए एक जनजातीय विकास मिशन को शुरू किया है। उद्यमिता के लिए हमने वोकल फॉर लोकल को शुरू किया है। हमने आवासीय विद्यालयों के माध्यम से 1,25,000 आदिवासी बच्चों की गुणवत्ता की शिक्षा को हमने आगे लिया है। हमने 10 वर्षों में, हमारी सरकार ने 10 से 30 नए मेडिकल कॉलेज जो है आदिवासी क्षेत्रों में खोलने का निर्णय लिया है। श्रीमान, शायद यही वेदना थी और यही वेदना बजट के राष्ट्रपति महोदया के भाषण के पहले दिन दिखाई पड़ी। आदिवासियों के लिए भाजपा सरकार योजना लाएगी,
दलित के लिए भाजपा सरकार योजना लाएगी। एक बड़े नेता, मैं फिर से, क्योंकि वो सदन के नेता नहीं है, प्रतिपक्ष नेता होंगे, लेकिन उनका जोश इतना रहता, सदन में खुद तो सोते हैं, लेकिन जब राष्ट्रपति महोदया भाषण करती है तो कहती उबाऊ भाषण था। एक आदरणीय जो खुद बहुत अमीरी का जीवन जी रही है, वो पुअर लेडी कहती है, सुस्त लेडी है, या थकी हुई लेडी बताते हैं। कौन थका, इसका निर्णय आप करेंगे। एक संवैधानिक पद पर आसीन एक उच्च पदस्थ आदिवासी महिला के संबंध में इस प्रकार के वक्तव्यों का, मैं समझता हूं कि भारत की राजनीति में यह शर्मनाक है। और यही नहीं, एक उन्हीं के पार्टी के एक नेता हैं, बंगाल से आते, पहले नेता थे उनके, कहते हैं ये राष्ट्रपत्नी के रूप में उनको संबोधित किया। आप अपमान की कौन सी सीमा पर ले जाना चाहते हो। एक नेता जो कभी उनके साथ रह के उनका पूरा का पूरा वो लेते हैं, झूठ का एक पुलिंदा लेकर उनके बारे में कि ये राम मंदिर नहीं गई, ये वहां नहीं गई। अरे आपको क्या पता भाई, माननीय राष्ट्रपति महोदया तो आज कुंभ में स्नान कर रही हैं। यही भारत की सनातन संस्कृति है। और अगर उनके बारे में पता करना है तो सर्च कर लेना। ये धर्म को प्रदर्शन नहीं करती, वो वास्तव में अगर देखा जाए तो मई 2024 में हमारी राष्ट्रपति महोदया राम मंदिर गई थी और उन्हें सरयू का स्नान भी किया था, वहां पर पूजा भी की थी, महाआरती में शामिल भी हुई थी। आपको जानकारी नहीं है। आप तो आरोप इसलिए लगाते हैं जिसमें आप भेद पैदा करें, ये अगड़ा, ये पिछड़ा, ये अनुसूचित, ये दलित, ये इनको बांटो, इनको अलग करो और फिर राज करने की परिकल्पना करो। ये कुंभ में चले जाएंगे तो कुंभ में ये सब आपस में मिलकर एक साथ कैसे हैं। इसलिए इनका जो दुश्मनी था, मैं दुश्मनी शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, तो वो किसी और पे नहीं था, वो कुंभ पे और सनातन पर था, इसलिए कि सब आपस में मिल क्यों रहे। ये दुख की घड़ी आ जाए इसकी तलाश में भटक रहे थे। इनकी जो गिद्ध दृष्टि है वो एक दुखद घटना की तलाश में भटक रही थी, और एक घटना होने के बाद में जिस तरीके से सर्वनाथ बयान लगाए गए वो मैं समझता हूं कि उचित नहीं थे। आज समय बदला है मानवर, और इस बदले हुए समय में मैं समझता हूं कि आज ये जो हमारा बजट है, प्रबंधन है, यही भारत का स्वराज्य है। और मैं कहना चाहता हूं कि 6 महीने में जो आगे जो है कि जो बीते 6 महीने हैं, ये इसमें 50 लाख महिलाओं ने इस लक्ष्य को प्राप्त भी किया है। मान्यवर, बहुत सारी चीजें, मैंने तो एक उक्ति बताई, एक कविता की लाइन बनाई। मैं लखनऊ का हूं और लखनऊ में एक शायर हुए थे, मशहूर शायर मजाज लखनवी। उन्होंने कहा कि तेरे माथे पे ये आंचल बहुत ही खूब है, तेरे माथे पे ये आंचल बहुत ही खूब है, लेकिन तू इस आंचल से एक परचम बना लेती तो अच्छा था। अब वो आंचल से वो परचम लहरा रही है। आज वो गृहिणी नहीं है, आज वो फाइटर प्लेन को चलाने वाली भी बन चुकी है, आज वो नेतृत्व करती भी है, तो आज वो राजनीति में भागीदारी भी कर रही है। महिला सशक्तिकरण के इस दौर ने पूरे विश्व को भारत का विश्लेषण करने के लिए मजबूर किया है। मान्यवर, मैं कह सकता हूं कि आज जो जहां प्रधानमंत्री जी ने, जैसे कहते हैं ना कि लोग कहते हैं कि राजकुमार राम, जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम थे, उनके बारे में कहते हैं कि राजकुमार राम को भगवान राम का बनाने का कार्य जनजातीय समाज ने किया था। आज उस जनजातीय समाज के उन्नयन के लिए जिस प्रकार से काम किया है, मैं समझता हूं कि ये अद्भुत है। और तमाम विश्लेषणों पर अगर देखा जाए तो आज ये 70 साल के बाद भी आज भारत अपने आगे बढ़ने की जो कगार पे चला है वो है हमारे देश का संविधान। और शायद संविधान ने जो कहा था कि हमारे यहाँ का सब निचले स्तर के लोगों का उन्नयन हो, तो आज मध्यम श्रेणी के लोग जो आज 8वां वेतन आयोग बना है, आज उनको रेपो रेट कम करने के बाद लोन की सीमा बढ़ेगी, वो बचत करेंगे। आज जो जिस प्रकार से उनको ये 12 लाख रुपए तक का आयकर की सीमा से वो मुक्त हुए हैं, मैं समझता हूँ खर्च जब बढ़ेगा तो ये जो सीमाएं हैं, वो लाभ हैं, वो भारत की विकासशीलता में आगे बढ़ेंगे। मैं आदरणीय विद्वत जन यहाँ से लापता हो जाते हैं, रोज ही हो जाते हैं। आज क्या है, ये पूरे भारत के परिदृश्य से लापता हैं। मैं उनको कहना चाहता था, लेकिन मैं उनसे यही कहूँगा कि आप लकीर दूसरों की छोटी करने में क्यों लगे रहते हो।
कभी आपने लकी को बड़ा करने की क्यों नहीं सोचा? मोदी जी कहते नहीं करते हैं, और शायद यही कारण है कि जो लक्ष्य का निर्धारण नहीं भी था, उस लक्ष्य के निर्धारण के साथ आज हमारा जो प्रकल्प है वो तेजी से बढ़ा है। मानवर, मैं कहना चाहता हूं कि आज जो महंगाई की दर है वो 10 वर्षों से 5.1% रही। आदरणीय चिदम्बरम जी चले गए, मैं उनसे कहना चाहता हूं, आपने क्यों नहीं किया? आपके पास तो अवसर था, आपने नहीं कर पाए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद जब मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में या उसके पहले महंगाई की दर 10 वर्षों में 5.1 रही, जबकि मनमोहन काल में ये दर करीब 8.2% थी। महंगाई की दर 10 वर्षों में इस समय भारतवर्ष की 5.1 है। ये अद्भुत है। और विदेशी मुद्रा का भंडार भी बढ़ चुका है। आपके समय तो 619 अरब डॉलर था, आज ये जो विदेशी मुद्रा भंडार जो है आज हमारे समय 619 अरब डॉलर बन गया है, जबकि आपके समय 292 डॉलर था जो कांग्रेस शासनकाल था। आज हम कह सकते हैं कि आज बेरोजगारी की दर जो घटी है, 2018-19 में ये 5.8% थी, आज ये 3.2% ये हो चुकी है 2022-23 में। और मान्यवर, जो हमारा आज का जो क्रम है, मैं समझता हूं कि चाहे वो भारतीय रेलवे हो, भारतीय रेलवे ने तो अद्भुत काम किया है, हमारा जो अर्बन डेवलपमेंट का है अद्भुत काम किया है, शिक्षा के क्षेत्र में नई शिक्षा नीति ने क्रांति लाई है, सभी भाषाओं को सम्मान मिलेगा। आज आप शोध सभी भाषाओं में कर सकते हैं, 14 से अधिक भाषाओं में आप परीक्षाएं दे सकते हैं। शिक्षा ने अभूतपूर्व काम किया है। और गृह मंत्रालय ने एक लाइन खींची है, लोग कहते थे कि आप तो झूठा वादा करते हैं, लेकिन क्या हुआ, 70 साल की समस्या 70 मिनट में 1, 2, 3 हो गया और पता चला कि धारा 370 और 35 एक गायब हो गया। आज कश्मीर में सुशासन है, आज कश्मीर अच्छा आगे बढ़ रहा है। और मैं यही कहना चाहता हूं कि आज रीजनल ट्रेन का युग है, हवाई अड्डे तेजी के साथ बढ़ रहे हैं, रेलवे, वाटरवे, हाईवे, बुलेट ट्रेन, सुधार हाईवे, ऐतिहासिक सुधार ये जो हाईवे में है, ये सारा कुछ एक अद्भुत दिखाई पड़ता है। मनवर में नागपुर गया था चुनाव में, मैं देख के अचंभित था, क्या काम किया था माननीय मंत्री महोदय ने कि नीचे सड़क है, ऊपर पुल है और उसके ऊपर मेट्रो है। ये भारत आज चुनौती दे रहा है उन विकसित राष्ट्रों को जो डेवलपमेंट प्रोसेस में अब हमारी बराबरी, हम उनकी बराबरी तो कर चुके हैं, हम उनको पछाड़ने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। मान्यवर, ये हमारा जो एक लक्ष्य है, मैं कहूँगा कि आज जो हमारा ये बजट है, ये तमाम उपलब्धियों को लाने वाला न केवल है, बल्कि इस बजट के माध्यम से मैं कह सकता हूं कि हम आज उन बारीकियों को भी देख रहे हैं जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो सपना देखा था कि हम एक संवैधानिक व्यवस्था वाला भारत देखेंगे। एक संस्कृत भाषा को वो लाना चाहते थे। जर्मनी की एक यूनिवर्सिटी से उन्होंने संस्कृत भाषा पढ़ी भी थी, लेकिन उस समय की सरकार कांग्रेस ने नहीं लाने दिया था। आज कमरुद्दीन उस समय के एक भाषा समिति के व्यक्ति थे, उन्होंने संस्कृत को भाषा में लाने के लिए संसद में भाषण दिया था, लेकिन उस सरकारों ने उस सब चीजों को नहीं किया था। आज शिक्षा नीति के माध्यम से सब हो रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, बस मैं इसको समाप्त करता हूं। आज फिर से लिए गए हमारे फैसले विकसित भारत की नींव रखेंगे, एक ऐसा भारत जो आर्थिक रूप से मजबूत, सामाजिक रूप से समावेशी, तकनीकी रूप से आगे हो, जहां तरक्की, समृद्धि, नवाचार की रोशनी पूरे विश्व में फैलेगी। मैं माननीय मंत्री, वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को इतना दूरदर्शी और प्रगतिशील बजट प्रस्तुत करने के लिए बधाई और धन्यवाद देता हूं और इसका पूरा समर्थन करता हूं। धन्यवाद। माननीय नेता सदन। माननीय उपसभापति जी, मैं जब भारत के पूर्व वित्त मंत्री बोल रहे थे तो मैं उसमें इंटरवीन करना चाहता था, लेकिन माननीय पूर्व वित्त मंत्री ने यील्ड नहीं किया, हमें परमिशन नहीं दी। लेकिन जो वो फैक्ट्स बोल रहे थे, मुझे लगता है कि उसको मुझे यहाँ पर क्लैरिफाई करना ये हमारी जिम्मेवारी है। पहली बात तो मुझे समझ में नहीं आया कि चिदम्बरम साहब was speaking on budget or speaking on external affairs ministry. He started his speech where
he questioned that did the foreign minister, external affairs minister, had a talk with the Secretary of State for Foreign Affairs of America. मुझे आश्चर्य हुआ कि ये क्वेश्चन उन्होंने 2012 में क्यों नहीं पूछा when he was the minister. मुझे ये प्रश्न हुआ कि why did they didn't ask this question in 2013? Why did they didn't ask this question in 2009? Or the external affairs minister has given a written statement, and he has come out, he gave a statement in the house, in this very house, where he explained in detail, and also along with that he took the questions also and gave the clarifications also. The clarifications were given, sir. The clarifications were given. मैं आज फिर इस बात को स्पष्ट करना चाहता हूं, क्योंकि ये ऐसा बताया जा रहा है जैसे कि ये जो डिपोर्ट किए गए ये अमानवीय ढंग से जो हुए, इसकी चिंता आपको ही है। ये अलग बात है कि 2009 में नहीं थी, 10 में नहीं थी, 11 में नहीं थी, 12 में नहीं थी, 13 में नहीं थी, जागे तो 2025 में जागे। देखिए, नेशनल इंटरेस्ट को कभी भी पॉलिटिकल चश्मे से नहीं देखना चाहिए। और मैं बताना चाहता हूं, ऑनरेबल members would be aware that the process of deportation is not a new one. I repeat, not a new one, and has been ongoing for several years. I would like to share with the House the details of deportation from United States of America since 2009. The numbers year-wise are as available with our law enforcement authorities is as follows: 2009 734, ये सारे का सारा पढ़ा। अंत में एक सेकंड ये हो, सुनो जयराम जी एक सेकंड, आई गेट योर पॉइंट। ये हो तो चुका है, पर होने के बाद माननीय चिदम्बरम जी ने बात कही, इसलिए आप बोल रहे हैं। आई एम चीयरिंग Honorable Leader of the House. Me. I would just like to say, deportations by the US are organized and executed by the Immigration and Customs Enforcement authorities. The standard operating procedure, deportation by aircraft used by ICE, that is effective from 2012. I repeat, it is effective from 2012 and provides for the use of restraints. ये रिस्ट्रेंट्स में ही 2009 से लेकर के सभी लोग आए हैं और ये 2025 में भी आए हैं। लेकिन जिस तरीके से मुझे समझ में नहीं आता है कि जिस प्रकार से वही चांद कभी अमावस्या में चला जाता है, कभी पूर्णमासी में आ जाता है, तो पता नहीं, जब अपनी बारी आती है तो अमावस्या में रहते हैं, और जब हमारी बारी आती है तो पूर्णमासी में अपने पूरी चांदनी दिखाने की कोशिश करते हैं। ये डबल स्टैंडर्ड्स ठीक नहीं है। इतने वरिष्ठ नेता ने बात कही तो मुझे हाउस में इसको क्लैरिफाई करना था, मैंने इसको क्लैरिफाई किया और मैं इसको ऑथेंटिकेट भी करता हूं। You will get your term after one speaker. All right. I permit one second. I permit very brief intervention by Tiruchi Shivaji. 1 minute. Sir, he gave a clarification that it is happening since 2012 that they are deported in the Air Force flight. But we would like to know whether they are being handcuffed and chained even from 2012. That's what he said. That's what he said. No, sir. No, sir. He said not it happened. He has not told that. He didn't tell that. The honorable, he didn't tell that. The honorable. He didn't tell that. Happened only this year, sir. One second. Let me clarify. I persuade members of the House, they are very learned, to know about the procedure. Mr. Chidambaram knows it much more than anyone else. The expression used by the honorable leader of the House is very categorical restraint. You know that. And restraint means... Sir, 2009 he said so. He exactly says the same thing. ये लोग इधर के लोग कभी जेल नहीं गए हैं। इनको इधर के लोग
अरे भैया, मैं इधर बोल रहा हूं। इनको मालूम नहीं है कि जब कस्टडी ली जाती है तो आपको ध्यान में होगा। Ask them to behave actually. मुझे मालूम नहीं है, शायद ये किसी जुर्म में गए होंगे, वो मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं यहाँ सार्थक बाबू, मैं इधर की बात कर रहा हूँ, क्यों बीच में आ रहे हो? आप उधर की बात क्यों कर रहे हो? प्लीज। इन्होंने जेल नहीं देखी है। कस्टडी में जब किसी को लिया जाता है, इसमें सारे एसओपीज लिखे हुए हैं। यू हैव टू फॉलो दोस एसओपीज फॉलो किए जाते हैं। वो सारे एसओपीज फॉलो किए जाते हैं, और वही फॉलो 2009 में भी हुए, जो 2025 में हुए। The House is progressing rather well, and ignore the first few minutes. It should not be a precedent. I will make one appeal. The honorable members of this House may work to get more involved with the procedure, and the restraint used quote within quote by the leader of the House and its connotations are sometimes dictated for survival and safety of the person subjected to restraint. Once again, after the External Affairs Minister made this statement, I learnt myself in detail to all that the External Affairs Minister had indicated, and I will share it with Jairamji during course of the day in my chamber, and he will fully appreciate that restraint is sometimes generated for pure safety of the person concerned. I call Sri Ritambra Banerjee. Sir, I stand to make my speech. Ritambraji, you have 15 minutes. Oh, thank you, sir. Thank you, sir. I stand to make my speech speaking on the budget for the All India Trinamool Congress. As an MP from Bengal, this is a special time to be speaking. Last week, history was being made in my state. Captains of industry, thought leaders, heads of missions of 40 countries, and leading entrepreneurs from across the world were drawn to Bengal for the two-day Bengal Global Business Summit. Last week, many path-breaking projects were announced, from AI to tourism, from steel to energy to telecom, about a mammoth of rupees 4 lakh plus crore in new investments, and tens of thousands of prospective jobs made headlines. One of the world's biggest industrialists said this at the Bengal Global Business Summit in Kolkata. Quote, "Now Bengal is also witnessing a renaissance in economy and business, and no power on earth can stop Bengal's resurgence." Unquote. Yes, madam, Bengal means business. Now let me dissect the below par union budget presented last week. India has more than 50% of its population below the age of 25 years and more than 65 below the age of 35. Now the question is whether the country looks upon this population as a liability or as a resource. This is the basic question which the budget must deal upon. And sir and madam, in the dark times, will there also be singing? Yes, there will also be singing. There will be singing about the dark times. The previous budget, the Honorable Finance Minister has just left, the previous budget presented by her in July 2024 after the Lok Sabha election had accorded priority to employment and skill development given the nature of the election mandate. The Finance Minister had announced a Prime Minister package of 5 schemes and initiatives to facilitate job and internship opportunities for 4.1 crore youth over a 5-year period with a central outlay of rupees 2 lakh crore. However, this year's budget, February 1st,
did not refer to the Prime Minister's package even once. There is not even a single mention of the package. What we learned, that a cabinet note on employment-linked incentive scheme is under finalization. Ministry of Labour and CII discussing it with the relationship between capital expenditure and employment generation. In simple words, the future of the scheme looks completely bleak. Now the periodic labor force survey, the PLFS, it's a government data, it reveals that in 23-24 youth unemployment rate 15 to 29 years has gone up to 10.2 and the unemployment rate among graduates 13%. The latest economic survey data is showing that every year the self-employed male workers, the real earnings are decreasing constantly from 17-18. There is a constant decline. The real wage of male workers, salaried workers, constantly declining. Surplus labor inundating the job market combined with high food inflation have severely squeezed the real income livelihoods of an overwhelming majority of Indian workforce. For a finance minister and the government always telling sabke saath sabka vikas, to overlook this is really, really dangerous. Modi government's mammoth bank heist, bank loot for the last 10 years has taken toll of our hard-earned public money. Over the last 10 years, frauds and corporate sharks frittered away at least rupees 12 lakh crore of rupees 16.11 lakh crore our banking system has written off. Out of this, the nationalized banks alone have written off more than 12 lakh crore. When the Honorable Finance Minister replies, I will urge upon that she must tell the House that how much of these written off loans of nationalized banks have been recovered. Now, we could also compare this 16.11 lakh crore that has been written off, that disappeared over 10 years with the union government budgets for education, where the total expenditure was less than 40% of this, and for health, where it was less than half. To make up for this lost money, banks charge higher and higher user charges for every little service. The rates for loans go up because banks have suffered at the hands of frauds and fund siphoning. Now, sir, Madam, the stupefying increase in the wealth of the favored 10 topmost cronies through favors, rule tweaking, and the low-value sale of high-value national assets during Modi's rule has been massive. But the rupees 12 lakh crore wipeout by nationalized banks may help us understand how the next tier of cronies and beneficiaries gain from the regime. After all, our money in banks did not really disappear. They just hopped on to line the pockets of those who knew their way around in very complex, corrupt and dark times. Now, in 1956, both the houses deliberated for 3 months. LIC was formed. The then Prime Minister of the country, Pandit Jawaharlal Nehru, gave from the corpus crore for the formation of the LIC. LIC started its journey. Today, LIC means 51,000 crore of rupees. LIC means 30 crore of policy holders. Now you are allowing 100% FDI, allowing total freedom and greater access to foreign capital could only retard the orderly growth of the insurance industry with the focus more on profits rather than providing the people and business the much needed security. Our Honorable Chief Minister has written to the Finance Minister last year on August 2nd. She wrote a letter asking her to withdraw the 18% GST on life insurance and health insurance policies. I quote from the letter, quote, with deep anguish I am writing to you regarding the imposition of 18% GST on life insurance and health insurance policies and the withdrawal of deductions. The GST is bad because it adversely affects the people's ability to take care of their basic vital needs. This additional burden may be acting as a deterrent for many individuals from taking new policies or continuing their existing insurance coverage, thereby leaving them vulnerable for unforeseen financial distress, unquote. Now, regarding the withdrawal of the GST on health insurances, the Finance Minister is always shifting the onus to the GST Council. Sir, Madam, everybody is aware who is in charge of the GST Council, who controls the GST Council. It is the BJP-ruled states who are the majority in the GST Council. Then what is stopping the Finance Minister and her party? The lack of political will is stopping them to roll back this GST on health insurances. Madam, I was born and brought up in a refugee colony in the arid areas of Kolkata. Migrated people bearing the bonds of partition had set up these colonies where from our adolescence we learned that when politics determines our future, we must determine the politics.
Political awareness runs in every blood and veins of Bengal in general, and these innumerable refugee colonies in particular. Though I don't have the first-hand experience of the horrors of partition, unlike my father, still like many third or fourth generation refugee, I consider my refugee ancestry as one of my greatest badges of honor. This refugee ancestry had passed on the political understanding of fighting for legitimate rights. As a trade union activist, fighting for the rightful dues of the working people becomes my duty. You are denying the people of their dues, denying the people of Bengal of their rightful dues. You are denying the MGNREGS workers. They are not in a begging mood anymore, as they have realized that this denial is completely political. West Bengal is owed a staggering figure of rupees 1.75 lakh crores. The delay has not only affected the implementation of critical programs, but also created challenges for local governance, particularly in rural areas that depend heavily on such funds for employment and infrastructure development. Madam, so the fight for these funds are necessarily political. We are aware that we are standing here. If we shift our position, we shift to the other side, things will fall in place. But Bengal refuses to surrender. Bengal hates to surrender. Bengal will never surrender. Bengal will never bow down. I understand the problem of the treasury benches. You cannot fight Mamata Banerjee politically. You cannot match Mamata Banerjee's good governance. You cannot match Mamata Banerjee's welfare scheme. So you continue depriving lakhs of our people. The more will be your deprivation, the sharper and greater will be our resolve, the resolve of our people to fight you in a befitting manner. The resolve finds resonance in the immortal words of the true polymath, who has been our greatest identity. গত 1000 বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি, শুধু শ্রেষ্ঠ বাঙালি নন, যিনি ভারতবর্ষের ধারণাকে চিরকাল একেবারে সর্বাগ্রে তুলে ধরেছেন. The greatest Bengali of the last 1000 years, it was Tagore who said, চিত্ত যেতা ভয় শূন্য উচ্চ যেতা শির, জ্ঞান যেতা মুক্ত যেতা গৃহের প্রাচীর, আপন প্রাঙ্গণ তলে দিবস সর্বরি, বসুধারে রাখে নাই খণ্ড ক্ষুদ্র করি. But the mind is without fear and the head is held high, when knowledge is free, where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls, where words come out from the depth of truth, where tireless striving stretches its arm towards perfection, where the clear stream of reason has not lost its way, where the mind is led forward by thee into ever-widening thought and action, into that heaven of freedom, my Father, let my country awake. Now, Madam, as I am a trade union activist, I want to give this august house some necessary figures. It is believed, I am not a student of economics, but these are very basic figures that when unorganized workforce in a country goes on increasing, the health of the economy is not in a proper shape. Now let me look into the figures that are available. The figure says, in unorganized laborers in Africa, 86% in the unorganized sectors, 14% in the organized sector. In Asia, Pacific and Arab countries, 68% in the unorganized sector, 32% in the organized sector. In Americas, 40% in the unorganized sector, 60% in the organized sector. In Europe and Central Asian countries, 26% in the unorganized sector and 74% in the organized sector. And now we come to Vishwaguru's India. Just let me tell the House, as a trade union activist, we are facing these problems. There are serious implications of this. 93% of the workforce has come under the ambit of unorganized workers. Only 7% are organized workers. The organized workers definitely have some statutory benefits, but the unorganized workers are deprived of the statutory benefits. 50% contribution of the GDP of our country comes from the unorganized sector. 6% of them are only falls under the social security measures. The blood, toil, sweat and tears of these workers are the bulwark of our economy, but the budget has completely neglected them, has said nothing about them. Now I want to mention about two schemes. One is the Pradhan Mantri Shram Yogi Mandhan Yojana, PMSYM. This is a central scheme, and a state scheme of Bengal known as Binamulye Samajik Suraksha Yojana, BMSSY. The PMSYM, the Pradhan Mantri Shram Yogi Mandhan Yojana, in this, they are the unorganized people who want to come under this scheme has to contribute every month. Every month you have to contribute money.
And in the BMSSY scheme of Mamata Banerjee, you need not contribute a single rupee. The entire money for 18 to 60 years is given by the government. Now, I come to figures, flat figures. The figures tell us the report up to January 2025 in Bengal is Binamulya Samajik Surakha Yojana of Mamata Banerjee. Number of registration, unorganized workers, 1,76 lakh plus. I repeat, 1,76 lakh plus. Number of benefit distributed, 34,94,000, almost 35 lakhs. And the amount distributed is 2,606 crores. Let the central government show political will and take up the responsibility and make the entire contribution from the workers like Mamata Banerjee is doing in the central schemes. Now, sir, as I am a trade union worker and Prakash, who stays in a tea garden, he is a worker of a tea garden in the northern part of Bengal, I will mention about some tea chronology that is very essential to mention. In 2016, when I was a member of this house, Honorable Finance Minister was then Commerce and Industry Minister. This is the Gazette notification. So the Gazette notification is dated 28th of January 2016, wherein the Gazette notification, before that the Honorable Prime Minister had gone to Madarihat, they are promised about taking up some Sikh gardens. So this Gazette notification on 28th of January mentioned Birpara, Garganda, Lonkapara, Tulsipara, Hantapara, Dhumchipara, Dimnima. 7 gardens will be taken over by tea board. Within 8 months, all these gardens got closed. And it was Mamata Banerjee and the Labour Department who took all the initiative of opening these tea gardens. 2016 was the assembly elections of Bengal. Now come to 2021-22 budget. In the budget, 1,000 crores announced for Assam and Bengal tea garden. I don't know about Assam, but as far as Bengal's experience is concerned, not a single penny has reached us. Now this year when the budget has been announced, their tea imports are hampering us. The central government's decision of plucking dates there is a damage of 7% crop, tea crop, problems are there. But the tea garden, there is a discussion in the tea garden. Common workers are discussing in the tea garden. Oh, this year is 2025, so in this budget nothing will come. Bengal's assembly election is in 2026. So in 2026, definitely, in 16, there has been there, in 21, there has been there, again in 26, you will have some promises about the jumlas, about the tea gardens. But the results will come out in the month of May. Next year, when Mamata Banerjee becomes the Chief Minister of West Bengal for the 4th consecutive time, we will be back here in the House and we will not raise slogans. We will come back in the House and we will be raising people's issues. Now, Madam, the fight against the anti-people policies will intensify. The fight against the discrimination of Bengal will intensify. This regime will try to suppress all truth by all possible means. I will take half a minute, madam, just half a minute. This regime will try to suppress all possible truth by all possible means. There will be conspiracies to bury Bengal into oblivion. But the voice of Bengal cannot be choked. But the voice of Bengal cannot be stifled. The people of Bengal, under the leadership of Mamata Banerjee, will give a befitting rebuff to the anti-people policies. El Pueblo. The party has so much of time. Please do not switch the word. Please do not switch the microphone off. The party has just 40 minutes. We will give him 1 more minute. We have not given him 20 seconds and a microphone has been switched off. The fight against the anti-people policies will intensify. The fight against the discrimination of Bengal will intensify. This regime will try to suppress all truth by all possible means. There will be conspiracies to bury Bengal and Bengal is into oblivion. But our voice cannot be choked. Our voice cannot be stifled. Bengal, under the leadership of Mamata Banerjee, will give a fitting rebuff to the anti-people policies of the government. El Pueblo Unido, Bojo Mama Mamata Banerjee, Llama Sera Vencido. The people united under Mamata Banerjee shall always be victorious. Joy Bangla. Everyone is participating in the budget speech. 1 minute this way, 1 minute this way. What has happened today is the microphone has been switched off. The microphone, these are very basic issues not to fight over. They're not basic issues not to. Somebody from that side may go over by 1 minute. We may go over by 1 minute. The party has 45 minutes of time. At 45 minutes, if you switch it off,
I'm not suggesting, madam, with all respect to you, can you please ensure that this thing doesn't happen? It's unbelievable that it's happened. His conclusion has been wiped off. Just 1 minute. This is not a complaint, madam. It's a good debate. Everybody is speaking. But please understand how we are feeling. The second largest opposition party here with 13 MPs, with 40 minutes on our clock, our opening speaker's mic is switched off. Okay. Somebody has to take care. And my appeal to you, through the chairman, is let's get all the experience we have in this house to make not this happen again. Thank you. Shri Tiruchi Shiva. Thank you, Madam Vice Chairperson. See, a budget is not merely a statement of accounts, but it is a statement of intent. The budget reveals the priorities of the government, and the priorities show the real governance of today. Our Prime Minister has described this budget as a roadmap to Viksit Bharat. Am I right? Viksit Bharat. No, the word Viksit Bharat means developed India. But the numbers show very well that the path seems only a mirage. There are so many reasons to explain that. For example, the union budget was presented as a proclamation of progress, but conveniently hiding the realities in the ground of stagnant growth, growing inequality, and a sizable demographic dividend slipping off the fingers into a demographic disaster. This government's economic policies have always enriched the privileged few, leaving behind a lot of the section of the people into joblessness, inflation, and shrinking opportunities. We have got many things to say about that. Before that, the finance minister was priced highly by the chairman, that she has presented continuously 8 budgets. But what is the progress? The graph, instead of going up, is dipping down. I would like to recall what all she has told from 2019. In 2019, she, when presenting the budget, was quoting from Purananuru, which is an advice to a Pandya king, Arivudai Nambi. I don't want to take the Tamil and consume my time. In English, it says that a few mounds of rice from paddy that is harvested from a small piece of land would suffice for an elephant. But what if the elephant itself enters the field and starts eating? What it eats would be far lesser than what it would trample over. This is the version of the Honorable Finance Minister quoting Purananuru from Sangam literature. But now we experience that the union government, the elephant, the union government is trampling upon the state's fields which have cherished very much. I will substantiate why I am telling all these things. There are, of course, ample evidences. And second, in 2020, that was in 2019 Purananuru, and in 2020, she quoted Tirukkural. Pini inmai selvam velaivinbam aniyanba naatil vaindu. In English, the country's 5 jewels are unfailing health, farm productivity, joy, good defense, and wealth. Any person who accepts anything in reality will say what is the development today after these budgets presented by her or by this government. Unfailing health, we are treading behind. Farm productivity, why 1 lakh tractors are waiting outside the borders of Delhi? If they are contented and if productivity is more,
or if they are given more, it would not have happened. So, and so also wealth. And 2021, she quoted another Tirukkural. Iyattalum, Eattalum, Kattalum, Katta Vagattalum, Valladu Arasu. A good king is one who is able to acquire wealth, guard it, and distribute it justly. That is it. Of course, you consume, you collect revenues, you guard it, but whether it is distributed justly to all the people equally in this country means no. As I said earlier, it enriched the privileged few and deserted the people who are in this country in the lower rung. That's what my senior colleague, Mr. Chidambaram, told here. When only 1% of this population are enjoying or controlling 22.6% of the income, and wealth is 40.1%. 1% of our population controls 40.1% of wealth and enjoying 22.6% of the income. Whereas the poor people at the bottom level, 50%, they are only getting 15% of the income and 6.4% of the wealth. This is totally disproportionate. Only the finance minister has to explain all these things. And in the 2025, she has said that as the living beings look upon the sky for rains, the citizens look upon the government for good governance. Yes, they are looking upon, but no good governance. These are all mere not allegations. What is happening is partisan approach of this government. For example, if a woman is going to buy some flowers from a woman who is selling on the roadside, she will measure it with her hands. But if the customer is regular and well known to her, you can measure it with your own hands. Because the seller's hand must be small, may be small. Like that, when they have a yardstick, they have a yardstick for the states which are ruled by the ruling party, and they have a smaller yardstick for those states which are ruled by the opposition party. They have to explain that. These are all not just allegations. There are ample evidences. My state, Tamil Nadu, being this a council of states and I represent the state of Tamil Nadu, before going into the larger issues and the greater implications, I have to mention something about my state, what all we are suffering, though we perform very well. The Tamil Nadu government is contributing to the GDP of this country 9.04%. And what we are getting by way of devolution is 4.08%. The 14th Finance Commission recommended for 42% tax devolution. The 15th person for reduced it to 41%, but actually it is only 32%. Even not that. That's what I say. When we contribute 9.04% to the GDP, we are given back only 4.08%. I have no grudges with any other person from the state. Except for the way of statistics, I have to tell, the Uttar Pradesh government contributes 8.19% to the GDP, but they are getting 17.94% of devolution. What is the rationale? Bihar, please. I say I have no grudges against your state, but what is happening, we have to elucidate. Bihar, GDP contribution is 2.87%, but is getting 10.08%. We give more, not even we get half of it. Why this discrimination? Why this partisan attitude? The finance minister has to enlighten us with the rationale behind this, what I call as victimization or discrimination, just because we are ruling, the opposition are ruling. But despite that, we are doing very well, better than the union government. We can say that with head strong. It's not just a statement. The union government's allocation to education, as again our senior colleague who initiated the
finance minister, he mentioned about Make in India. In the year 2015, lofty proclamations about Make in India was made by a Prime Minister. At the same time, Make in China was proclaimed in China. And in 2025, the recently elected President of USA, Donald Trump, has said, Make in America. This is in 2025. As soon as he assumed power, he addressed a conference of the international investors. In that, he told, you are all manufacturing from outside America and making America a market. Hereafter, you should make everything in America, then only you will be given the benefits, or else I will be taxing you very heavily, which you cannot tolerate. This is a way of coercion, or any way he is approaching, that the revenue of the status of economic position of America should improve, Make in America. What happened to 2015 proclamation of India and China? China has reached this target. India has not. Why? Because the basic things which a nation needs is education, healthcare, infrastructure. Everything has been achieved by China. But here what happens is very poor, it has to be admitted. The union government is allocating only 2.5% of total expenditure to education. That is 1,20,628 crore. My state, Tamil Nadu government, we are allocating 49,700, that is 13.6% of our total expenditure. What Tamil Nadu government is spending towards education is 40% of the total allocation by the union government to the entire country. Ours is 13.6%. And this year it is 13.17%. So also health care. The union government allocation is 1.89%. See, India is the thickest populated country. And what America does not have, we have is the youth population. America may have very good education, might have very good infrastructure, but they don't have the youth force as we are having. We are having 64% of our population as youth force. How you are going to utilize that? Because they are suffering because of unemployment. And healthcare is very much important, because the last rung of the people who work and who don't get anything. What is the reality? The income tax slab, which Madam Finance Minister has announced, that up to 12 lakh it will be exempted. I don't want to go into it. How many are the beneficiaries? Only 1 crore. 1 crore of the people are benefited. We have nothing against it. Let them enjoy it. But what about the remaining 139 crore of the people? And especially another thing, the EWS, which the government is very much proud of, economically weaker section, the slab is 8 lakh rupees per year. That is 75,000 per month. And if the residential area they are living is below 1,000 square foot and below 5 acres of land. 5 acres of land and 1,000 square foot of residential flat or anything which they live, and 8 lakh rupees is the slab for economically weaker section people. Leave that alone. But what does the BPL slab shows? I am not creating anything on my own. All the learned members here know that very well. Those who live in the urban area, if their income is below 37, they come under BPL. And in the rural area, it is 9 rupees. A person who is not able to earn even 1,000 rupees a month is considered as BPL. But a person earning 8 lakh will be considered, that is different. But they need basically education for their children and health care. This government is allocating only 1.89 of its total expenditure to health care, whereas my state, Tamil Nadu government, is spending 5.8% of the total expenditure.
What I am telling about Tamil Nadu is the Dravidian model of government by Mr. M.K. Stalin. What I am telling about the union government is Modi's form of government. The billionaires are increasing. In this 1 year, many will be surprised, not shocked because this is happening. 75% have added up to the billionaires list in our country. It's going up and up. How they are, that means what is happening actually? Billionaires are increasing, whereas the basic needs of the people are not fulfilled. And very important statistics, when I say that, yes, every 5 days, one billionaire is coming out up successfully. Millionaire or billionaire. Numbers are increasing. Every 5 days, India sees a person becoming a millionaire. Same, at the same time, I have some other statistics. There are two different views. You see a very high building, a millionaire is living on the other side. The rape cases in India, daily average, approximately 87 cases per day. And murder cases, approximately 78 cases per day. Farmer suicides, approximately 31 cases. I shall come to you. I'll come, my dear brother, Mr. Murugan, I'll come to your point. I know what you are telling. Wait. Thanks you intervened. Thanks you interrupted and I got a point. That's different. Please, I have a very good statistics. Farmer suicide, approximately 31 cases per day. Unemployment-related suicides, approximately 9 cases per day. Human traffic cases is approximately 6 cases per day. Dalit atrocities, approximately 141 cases per day. Student suicides, approximately 36 cases per day. And cyber crimes, approximately 180 cases per day. There are two different views. One side, the rich are becoming richer. The other side, the poor are becoming poorer. And this is the real stage of this country. And he said that, what about Tamil Nadu? I am telling about Tamil Nadu only. Tamil Nadu is performing so well. See, the national average of enrollment in higher education. See, as you have presented a budget with statistics, I am also speaking on statistics. Enrollment of students in higher education, national average is 27%. And Tamil Nadu is 47%. And what is it we are getting? What is it we are getting? The UGC is used by the union government to suppress the state governments. The colleges, the universities are within the purview of the state, the jurisdiction. The land belongs to the states. The building structures, everything spent by the states. The teachers who are working there, they are also the salaries are given by the government, state government. And the students' concession and everything that is given, scholarship, everything is given by the state government. But the UGC, crossing its jurisdiction, has recently given some guidelines that the vice chancellors of those universities will be selected by a panel headed by the governor of the state and the members appointed by the UGC. What does the state government role has? You have to tell that. See, everything is ours. That is because we are maintaining the government and we are looking after education, though it is in the concurrent list. Our enrollment is 47%, but you want to indirectly bring inside your person by a select committee headed by the governor, who is always against governments which are ruled by state governments. Whatever the people is in need of, if the state government enacts a law, that too also will not be given assent by the governor, and he will act extrajudicial activities, official things. But he will be heading the search committee and the members will be appointed by the UGC. What will happen?
There is a stiff opposition, but nobody listens. Why this is happening is, indirectly, the union government is encroaching into the powers of the states. Yes. They are transgressing. They are snatching the powers of the states, each and every manner. This is not the way. Yes. This is not the way for reforming education. Comparatively, wherever you are ruling and wherever all these things are being said, everything is very low, but Tamil Nadu is doing very well, but we are being victimized. In this budget, we had, of course, very sad observation. Our Honorable Finance Minister also belongs to Tamil Nadu. That's why she quoted Purnanuru and Tirukkural. I can also, but I am not in a position, we are only looking at the union government. We feel that we are in the Union of India. We are a state in the Indian Union, but the union government does not recognize us so. You talk much about infrastructure, and we are asking metro projects. As he said, time is ours, and we will adjust. Kindly don't interrupt. The metro projects for Coimbatore and Madurai, which has been demanded by the state government, has not been mentioned in the budget. And so many road highways which we have asked for has not found a place in this. And centrally sponsored schemes like Manarega, earlier it was 75-25, now it is 60-40. The state has spent its due share, but the center has not given its share. So also SSA, Sarva Shiksha Abhiyan. I don't know, the meaning is different. SSA, Sarva Shiksha Abhiyan. And even in that, the states are not being given the due share from the union. You know why? The states are not implementing the NEP. See, it is the state government's choice whether to accept a policy which is to the convenience of the union government. And we are saying that we have got our own new education policy. We have constituted a committee that would come out. But it says that if you don't adopt NEP, you won't be given your due share. Like UGC says, if the state doesn't abide by the guidelines of the University Grants Commission, the universities cannot award degrees to the students. How strange. Who are there to dictate? Who are there to dictate the universities that you can? And surprisingly, ma'am, you yourself will say what is right or wrong. The vice chancellors to be in the universities need not have an academic background. They need not have been a professor, a tutor, an assistant professor, or anything. Any person from outside will come and head the university, and he will decide the curriculum. He will be getting the colleges. What is it? Authoritarian to the extreme is in every sector. That's why, as I said, UGC, also the schools are victimized, that we are not entitled to have this SSA due from the center share. So also disaster relief. There were two cyclones, the Fenjam and the Minjam. So two cyclones. Tamil Nadu suffered a lot. And we have been asking for a relief measure of 30,000 crore from the union government. I also raised it during the 0 hour. And at that time, I have received a reply from the Home Ministry saying that the state could give from the SDRF. It is beyond that. It exceeds the SDRF limits. And what is the NDRF is for? They give only lame excuses. Members from all the parties with conscience tell us, we asked for 30,000 crore rupees, but we were given only 267 crore. What is it? We have to undertake so many things that have been damaged during the cyclone. Infrastructure. People have to be brought back to normalcy. For that, the states are spending, whereas the union government stays off and say, we don't have anything. So in this way, disaster relief is not being compensated properly. The SSA, we are being victimized. The Manarega scheme, we don't get what we want. The road projects which we ask, we are not getting. And also, the devolution of taxes is also not in the due manner or rational manner to my state. Ma'am,
what is happening in my country. As I said earlier, at one side it is very much we see richer people, on the other side. Very important ministry is the MSME, because the MSME is the largest employment provider next to the agriculture. And moreover, as per the budget of the finance minister, it is 7.5 crore who are getting employment. 36% of the manufacturing of this country is by MSME. 45% of the exports of this country is from MSME. But what is the support this government is extending to MSME? In the banks, when they go for PMEGP, every bank has a different rate of interest. The topmost bank, which is very closer by the person who is going to be an entrepreneur, it charges the highest. But they do not know. They cannot classify. They want that. And surprisingly, what I noticed in this budget is, it is enhancing the limits of the MSME. Micro enterprises, currently it is 1 crore rupee. It will be enhanced to 2.5 crore and the turnover to 10 crore rupees. Small enterprises, from 10 crore to 25 investment and turnover 50 crore to 100 crore. And medium enterprises 50 to 125 investment, 250 to 500 crore. My dear colleagues, please tell me, what is a micro enterprise? MSME people who are in just for 5 lakhs, just getting a 5 lakh loan, a woman is running something, doing some business, which gets gives an employment to 7 persons, 2 from the same family and 5 from that village. So giving more loans and showing that we have given that much, you have to give to more number of persons and generate employment. That is the purpose of the MSME. For example, a shopkeeper, at the time when he closes his shop, he won't come and check how much collection is there. He will see how many bills have been given, how many persons have entered his shop. That means he is bothered about the number of customers than the collection. In a mall, the customers will be very less. In a shop, in a multinational brand company, and the collection will be very much. But at the same time, ordinary textiles in our bazaar will have a lot of people, the collection will not be even half of that collected in a mall. So which is a necessary means, you have to help the MSMEs, that too the poorest people, to have more entrepreneurs, enterprises, and that way you can generate more employment. And this year, very surprisingly, again the income tax slab, everyone is praising about, the collection of taxes, direct taxes, 56.78% is from personal income tax. And the corporate tax has come down. The income tax, direct taxes is 56.78%, out of which 53.3% is from ordinary people. What you have done to these ordinary people, instead of that, you have favoring the corporates. And indirect taxes is the remaining 42.68 or something. And the indirect taxes mostly constitute the GST. And the GST this year mainly constitute, the indirect taxes constitute 83% of indirect taxes. 83% of the indirect taxes is from GST. That is what, again, our former finance minister told here. What are you doing with that? Why don't you cut down the GST? Every person, even an auto driver, even a farmer, even a laborer in a farm, they are paying GST. Income tax is given by some other people, middle class or upper middle class or anything. Every individual is paying GST. Why don't you cut down that? Have you cut down the excise duty of petroleum products, as he said? That would have benefited the lot in the nation. But you have not done so. You are not doing anything to the common man. You don't have them in focus. You are making a micro enterprises into a mini corporate. How can a 250 crore turnover is called as 50 crore turnover is called as a micro enterprises?
MSME is not able to market. That's why the government has a scheme, PPP, the public sectors have to procure from the MSMEs. 25% of their purchase should be from the MSMEs. In that, there is a slab, sub-quota of 4% to the women and 3%, 4% to SC/ST and 3% women. That has not yet been reached. We have been telling, why don't you include OBC also in that? But though there is an allocation, a reservation, a sub-quota, but it is not achieved, they are not able to market it. What are the devices you have for the MSE products to be marketed? How will you control the interest rates equally? You can prevail upon the RBI. You can say that the repo rate or anything of that sort. But an ordinary person who goes to a bank, the nearby bank, should not be taxed or in a manner of the interest verification. So in that way, the MSME, again I say, the largest employment provider has to be taken care of. But you are trying to make it again a corporate. The indirect taxes, the GST is going up and up. I don't have, rather I cannot say everything in this very short time, that what are the GST, which is more, which is lesser. And everything is contradictory, which affects the common man. You have taken away all the revenue rights of the state governments and it has been substituted into the GMT, but do you compensate that? You collect GST compensation cess. You collect surcharge for welfare schemes. These surcharges and cess are not in the divisible pools. So you are getting more money by way of another way, shortcut way, by way of cess and surcharge, and the union government is keeping that even not without sharing with the state governments. So the last person is paying, but the state governments are not benefited. So I have got much more to say, but as again to say, the one more thing, the Pradhan Mantri Awas Yojana, PMAY. Even in that, the state government, my government, is spending 6 lakhs rupees for a house. The union government is giving only 1.5. Even that is not being given. PMAY rural and PMAY urban. So also the Jal Jeevan Mission, what was the estimate last time? Budget estimate was 67,000, but actuals were revised was 22,000, and this year again say 70,160. When you have not achieved the target you fixed the earlier year, you are giving rosy pictures. So it is only the numbers that attract the people. Again, ma'am, I would like to conclude with one thing. Whenever a budget is presented, everyone is looking. Stock market is stumbling. The middle class people are relying upon the stock markets. The poor people are expecting whether the prices would come down. Prices are going up. Wealth inequality, unequitable distribution of wealth, Pramoji. Unequitable distribution of wealth. And in such a situation, they are all disappointed. We are not speaking anything ill or ill will towards against any individual. The government of the day, which has to take care of the people, is not taking care of that. So you have to mend your ways, or else the people will end your days. Thank you very much. धन्यवाद. श्री गोला बाबू राव. Thank you very much, Srimati Deputy Chairman Madam. Vice Chairman Madam. Thank you for giving me an opportunity to speak on the budget to the 2025-26 in this August House. I also thank my party, YSRCP, President and former Chief Minister of Andhra Pradesh, Sri Jagan Mohan Reddy Garu, for giving me the opportunity to speak on the important subject on the union budget. I congratulate Honorable Finance Minister for presenting the budget successfully for 8 years continuously. In fact, before I go into the details,
I was given only 8 minutes time. As our seniors gave a lot of really weaknesses in the budget, I too endorse with the senior members what all they spoke about the reality in the budget. But in Telugu, there is one sentence, Kondariki Khedam, Kondariki Modam. Modam is for the privileged sections. Khedam is for unprivileged sections. The entire, this budget from each and every point has deceived the poorer sections and the vulnerable sections. I will go through only 5-6 subjects. The budgetary allocations are fuel for the governance of the country. Everything is dependent on better financial allocation and optimal utilization of financial resources. Total expenditure 25-26 is expected to 50,65,345 crore in 2025-26, which is an increase of 7.4 over the revised estimate of 24-25. Out of this 16 lakhs, 21,899 crores is proposed to be spent on central sector schemes, which is 7.2% increase over the revised estimate of 24-25. And 5,41,850 crores is proposed to be spent on centrally sponsored schemes, which is 30.5% over the revised estimate. Government receipts, excluding borrowings, are estimated to be 34,96,409 crore, which is 11.1 higher than revised budget estimate. But it is a tough task to bridge the gap between these receipts and the expenditure of 15 crore 68,936 crore, as the revenue deficit is targeted 1.5% of GDP and fiscal deficit is targeted 4.4. There is a great need to cut the wasteful expenditure to bridge the fiscal deficit. Government increased the income tax exemption limit to 12 lakhs, which is a great relief, which is considered to be great relief to the middle class. But in the process of government losses, 1 lakh crores. I appreciate the income tax exemption, which will benefit the large number of people in this income tax bracket. But this is no help to the poorest of the poor, who are in the margins of society, though their statistics say the number of people living below poverty line has decreased considerably. Still, there is a lot to be done for the poorer sections of the society. Due to decrease in the value of money, whatever has been given to the poor is little, and lot needs to be done. For example, the value of 500 rupees per day wages has got much value 5 years ago than now. Similarly, whatever the poverty alleviation measures are taken are not much effective in the changed economic setting. So there is a great need to improve the poverty alleviation measures to match with the increase in the cost of living. Similarly, the inflation continues to make much impact on our day-to-day life, especially household budgets, making essential commodities, fuel, transport, and healthcare more expensive. So a lot more needs to be done to address the basic economic problems facing the citizens, especially the weaker sections of the society. Allocation towards Manrega and PM Kisan remained as the same as the revised estimates for the 24-25, despite the fact that rural distress has been increased. Government would have increased the allocation for Manrega and PM Kisan, as it remained the same since 24 budget estimates. The importance of these two schemes are well known to the government, as majority of poor and unemployed are dependent on these two programs for their livelihood. These two programs need to be given higher allocation, at least in the future. Ministry
The allocation towards rural development is estimated to increase by 14,527 crore, 8.3% to 1,90,406 crore in 25-26. The program for the welfare of women and children have been allocated the 5,65,161 crore 25-26, an increase of 18.5% over the revised estimate 24-25. These allocations include programs being implemented across all ministries. Allocation towards the welfare of women is estimated to increase due to increased allocation towards the Pradhan Mantri Awas Yojana, for which the female head of the family must be owner of the co-owner of the house. The allocation towards the welfare of children is estimated to increase due to higher allocation towards the school education under Samagra Shiksha Yojana. The allocation for scheduled castes has to increase due to increased allocation under National Rural Livelihoods Mission. New scheme for the first time SC/ST women allocated 2,523 crores compared to the last year budget. Our allocation for 1620 crores. The central schemes and projects have been allocated 1324 crores compared to last year's budgetary allocation for 910 crores. The allocation in this year's budget has increased, but there is need to implement the program to achieve the targets. For example, the funds for National Commission, SC/ST, BC have been reduced in this budget by 26 crores just over the previous years. So in this context, Madam, I want to appeal to the Honorable Finance Minister and the Government of India. Even for the entire 5 years, the Social Justice Ministry and Social Empowerment Ministry is really doing very, very meager in the entire program. Really, now really is just if you take the woman and BC welfare, SC welfare, ST welfare, all the put together are not even 2% of the total budget is allotted. It is most unfortunate. What I feel strongly, but we just instead of making Social Justice Ministry, we are making Social Injustice Ministry. This is my personal feeling about the budget. Now, we all were studied in the social welfare hostels. When we were studying, so many facilities were there. Now, in this at least for 5 years, no scholarships. No, at least National SC Development Corporation, no funds. National BC Development Corporation, no funds. Or even for Women Corporation, no funds. How can they at least increase their standard of living? This is really most unfortunate. I request the Honorable Finance Minister, Honorable Prime Minister to look into this deficit. That's why I request, once again, I request the Augusta House to really think over the real deceiving to the poor people of our nation. Now, entire budget stands only for the just 90% people are poor. But the entire budget is going for rich people. Now, for example, I tell you one example, madam. Even in my state, Andhra Pradesh, our former Chief Minister has allotted 275 crores for the poor people, BCs, SCs, STs, minorities, for all the people. Thank you, Madam. I start with the key shortcomings in this budget. Number 1 point, limited focus on wage growth. While there are mentions of employment generation and skilling initiatives, there is no clear plan to increase minimum wages or improve labor conditions. GIG and informal workers,
The speech briefly acknowledges the GIG workers and proposes healthcare benefits, but it does not address concerns like job security, social security, and fair wages for the growing informal workforce. Absence of direct support for industrial labor. The speech discusses boosting MSMEs and manufacturing, but does not propose substantial measures to improve the working conditions, wages, or rights of factory and industrial workers. Housing and social welfare gaps. While HWAMIH Fund 2 is introduced to address housing concerns, it primarily targets middle-income housing rather than affordable housing solutions for the low-income workers. Lack of direct cash transfers or subsidies. Unlike previous budgets, this one does not propose new or expanded direct financial support for low-income workers to counter inflation and rising living costs. Coming straight to the state of Orissa, sad, with concern, I highlight the persistent neglect of Orissa by successive governments at the center. This budget, which was expected to bring inclusive growth, has once again failed to address the pressing issues faced by the people of Orissa. I would call it a double betrayal. They came to power and said that now Orissa has a double engine. But I fail to understand this double engine has failed in Delhi as well as in Bhubaneswar. Isn't this Delhi government, central government? I meant the Delhi government. Not the Delhi government, sorry. This double engine government had spoken a lot about, infusing urban facilities. Of course, in this regard, I would like to state that the ex-Chief Minister Honorable Navin Patnaik ji had given a tremendous boost to the urban growth of Orissa, where Bhubaneswar became the #1 smart city. It's surprising. The center has announced a huge amount for the urban development. Shri Navin Patnaik ji, in his tenure, had sanctioned the Bhubaneswar-Puri-Cuttack metro and started work on it. And then he left the government with a 48,000 crore surplus, never had come to the center to fund for begging for funds for his metro. And he left the exchequer of Orissa with 48,000 crore surplus. Neither will ever the metro of Bhubaneswar see the day, or it was just shelved. There's no clarity about it by the finance minister. He left 48,000 crores. What have they done? The so-called main engine in Delhi hasn't funded Orissa after they have won, got 20 seats, that's why Modi 3 is here. This fund has been spent on some promises which were made in the manifesto of the BJP. They spend for giving an MSP some 5,000-10,000 crores, for Subhadra Yojana some 20,000 crores. And to change the color of Orissa into saffron, they have spent 2,000 crores. It's a disappointing budget that ignores the common man. The budget attempts to shine in the surface, but beneath that shine lies disappointment. It has failed to address the concerns of the common man. Rising unemployment, soaring prices and inflation, worsening poverty levels, lack of investment in health and education.
There has been an attempt to window dress the budget, but it falls far short of what the people of this country, especially Orissa, deserve. No measures so far to control inflation. Not a word by the finance minister how this inflation is going to be controlled. While the finance minister has announced tax relief of up to 12 lakh, what about the rural poor, daily wage workers, and tribal communities who are struggling under price rise? Inflation remains unchecked. Take the case of Kendu leaf workers, a major livelihood source for lakhs of tribal women. They are forced to pay 18% GST on Kendu leaf. In this, the way to support the most marginalized communities. We have been repeatedly asking for special category status. Other states are receiving special funds because of this government's political compulsions. Bihar has been given a substantial amount. That's not my concern. Let Bihar get. Orissa contributes significantly to the divisible pool of taxes, yet it does not receive its fair share. Due to this, we are losing vital funds that could have boosted infrastructure, strengthened welfare schemes, accelerated income growth. This is nothing short of economic injustice. Exploitation of Odisha's natural resources, the rich minerals we have, the center is the authority of this major minerals. Mineral royalties and auctions, the center auctions Odisha's mineral blocks, but the state gets an unfair share of the revenue. Coal block auction, Odisha was promised 70,000 crores, but Odisha received a meager 370 crores. What happened to the coal blocks being auctioned and what happened to that money? I hope the finance minister will keep a reply regarding this. This is an unjust burden on states like Odisha, which are already struggling with fund shortages. The Finance Commission must take these commitments into account. The historical neglect of Odisha's infrastructure, railways. They earn a whopping 25,000 crore annually, and they have allotted 10,000 crore only to Odisha. Key railway projects like the Bhubaneswar station. सदस्य आपका टाइम खत्म हो गया है और एक हाफ अ मिनट सबको दिया गया, ज्यादा टाइम मेरे को क्यों रोक रहे हैं? हाँ बोलिए। अरे भाई आप लोग इतने टाइम लिए तभी तो कंप्लेन नहीं कर रहे हो। 30 seconds. Odisha's rail density is much lower than neighboring states like West Bengal, Jharkhand and Chhattisgarh. Key railway projects are pending. बोल तो रहा हूं, कुछ तो दे नहीं रहे, किसी को भी नहीं दे रहे, केरला को क्या दिए? This is how the center treats the state that contributes so much to the national economy. Clean energy says central government collects 21,000 crore. Nothing towards that they've given. I don't know other states have got anything or not. Coal royalty not revised since 2015. And in the end, I would conclude by requesting through you that Orissa be granted special category status, fair share of central taxes and revenues, higher investment in railway and infrastructure, revision of coal royalty, equitable share from clean energy sources. Thank you. Thank you. Dr. M. Tambidurai. Thank you, Madam Vice Chairman. On behalf of ADMK party, on behalf of my leader, my party, Deregulating Palaniswamy, I rise to participate in the discussion on the Union Budget 2025-26 presented by the Honorable Finance Minister. Madam, I want to mention certain points which my leader, Deregulating Palaniswamy, observed about this budget. First, he said in an economic survey for the year 2024-25, it was mentioned that there is a necessity to promote investment capital and increase domestic consumption to achieve specific economic growth.
It was expected that the budget for 2025-20 would include plans for focusing on the poor, women, farmers, and youth, but we are missing that. At the same time, we have to, my leader, Deportation Palaniswamy, observed that he is welcoming the changes made in the custom duty to promote domestic production. And also, income tax limits have been changed, which is also welcome. While, Madam, as my other colleagues spoke from Tamil Nadu, we are also disappointed the allocation not made more for Tamil Nadu. While Bihar has got more schemes, state like Tamil Nadu did not get any major schemes or proposed in this budget. Tamil Nadu is water deficit state. We are sad to note that there is no project to take care of the irrigation needs of Tamil Nadu. We expected projects like interlinking of rivers, but there is no mention about this budget. Godavari Kaveri interlinking project would benefit Tamil Nadu, but it not find in the budget. We expected some new railway line projects. There is no mention in this. There is no mention of metro projects in cities like what our friend said in Coimbatore and Madurai. So railway line also, Madam, go on, I'm insisting, railway line between Jolarpeta via Krishnagiri, Hosur, Bangalore, it has met, but is not mentioned, not gone. Greenfield Airport in Hosur, we requested, that also not mentioned. I don't know what is the fate of other Greenfield Airport in Parandur Airport, that what the government is, what are the steps taken, central government, I don't know. Same way, 8-lane project, because our honorable member Siva said, there are many projects, National Highways project we requested not considered. Yes, this is the 8-lane project which our Deportation Palaniswamy requested from Salem to Chennai. It is not yet materialized. Same way, I also insisted when I was member of Lok Sabha, which represents Karur, which I requested to extend the road from Salem, Karur to Coimbatore 8-lane project, that also missing. And also I requested Trichy to Karur also linked, but it can be easily reached Coimbatore to Trichy easily, that also missing. Same way, Madam, but under the expansion of medical education, the finance minister budget next year, 10,000 additional seats will be added, he said. I appreciate that. It is worth pointing out here that the former minister of Tamil Nadu, Deportation Palaniswamy, was the only chief minister in Tamil Nadu who established 23 medical colleges in his 4 years term as chief minister. He also made the reservation for 7.5% for MBBS seats in those colleges from the government schools, especially rural areas, to benefit. Sir, Madam, he said higher education enrollment in Tamil Nadu is very high. I appreciate that what he said. But it is because of our former Chief Minister, MGR and Jayalalitha and Deportation Palaniswamy, they have established more engineering colleges and other things, it has been done. Regarding, I want to make rape cases said. Sir, rape cases said, the rape cases are taking place more in Tamil Nadu. That is what is happening. That is statistics if you take, and I have to assume the new government, the rape cases are taking place. This is another thing, sir. Madam, because my time is very late, I am appreciating the demand for the more money for Tamil Nadu, but the present DMK government failed to fulfill the election promises during the award given for election 4 years over. But electricity bill has increased in the tax on property increased. Registration is also increased. The present DMK government failed to implement the election promises at this. Housing scheme, sir, regarding housing scheme. Central government also giving, state government also giving. But the money is not sufficient. The quality of, because of the allocation of the money for each house is very low. It has been enhanced because the poor people not able to get the good house, they are suffering a lot. In Tamil Nadu, if you want to have a good houses for the poor people, Deportation Palaniswamy, our leader, is insisting always to see that central government, state government has to increase the
amount to establish each houses. Then poor people, especially rural area, especially scheduled caste, scheduled people get the good houses. I request to consider all these things. Thank you very much. Shri Ramji Lalji Suman. Ramji Lalji, 5 minutes. Before that, honorable members, I have included the names of Shri Rajiv Shukla and Shri Thambi Durai ji in the panel of vice chairpersons to help the chair in addition to the earlier panel. सभापति जी, सभापति जी, ये 2025-26 का जो बजट है, ये निराश करने वाला बजट है और विशेष रूप से ग्रामीण अंचल की उपेक्षा हुई है। मनरेगा एकमात्र योजना थी जो ग्रामीण अंचल के श्रमिकों को काम देती थी। सभापति महोदय, 2021-22 में मनरेगा का बजट 98,000 करोड़ रुपए था, जो इस बार घटा करके 2025-26 में 86,000 करोड़ रुपए कर दिया गया। सभापति महोदय, सबसे अहम सवाल है कि पिछली बार भी जो मजदूरों ने पिछले वर्ष में काम किया था, वो 9,754 करोड़ रुपए पिछले वर्ष के भी मनरेगा के श्रमिकों का वेतन बाकी रह गया है। सभापति महोदय, लोकसभा में जो समिति है, ये ग्रामीण विकास और पंचायत राज समिति सर, जिसके अध्यक्ष सप्तगिरी शंकर उलाका है, उन्होंने उस कमेटी ने सर रिकमेंड किया है, जिसको अभी लोकसभा अध्यक्ष जी ने कहा कि ये तो मिनी संसद है, और उसने कहा कि इस कमेटी ने रिकमेंड किया, सिफारिश की कि मनरेगा के जो श्रमिकों को वेतन मिलता है उसकी समीक्षा होनी चाहिए और महंगाई को आधार मान करके उनके वेतन का आधार होना चाहिए। सभापति महोदय, ये सरकार 5 किलो अनाज तो लोगों को दे रही है, लेकिन रोजगार देने के लिए तैयार नहीं है। और मैं आपके मार्फत निवेदन करना चाहूंगा कि 2022 और 24 के बीच में 1,55,00,000 श्रमिकों के नाम काट दिए गए हैं। इनके नाम काटने से पहले ये समीक्षा होनी चाहिए थी महोदय कि इनके नाम न काटने पड़े और श्रमिकों को बराबर रोजगार मिलता रहे। सरकार ने संसद के एक जवाब में खुद स्वीकार किया है कि पिछले 10 वर्षों में 50,000 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग बंद हुए हैं और 3,17,641 लोगों की नौकरियां खत्म हुई हैं। सभापति महोदय, आज भारत सरकार पर 712 अरब डॉलर विदेशी कर्जा है और हर व्यक्ति पर हिंदुस्तान में $5 यानी 430 रुपए का कर्जा है। सभापति महोदय, हमारे देश में जितनी विदेशी मुद्रा हमारे पास है, उससे ज्यादा विदेशी कर्जा हमारे ऊपर है। आज हम समाज को बेच करके देश की प्रगति की बात कर रहे हैं। बजट का 20% भाग तो जो विदेशी कर्जा है, सभापति महोदय, उसके ब्याज में ही चला जाता है। अभी देश में 42% लोग कृषि पर निर्भर करते हैं और ये 18.2 लोगों को रोजगार देने वाला क्षेत्र है। कृषि का योगदान 18.2% है। सभापति महोदय, कृषि का जो बजट है वो खाली 4.8% है। कृषि के संरक्षण और संवर्धन का जो काम हमारे देश में होना चाहिए था, नहीं हुआ। 2024 के जो आंकड़े सभापति महोदय, वो 127 देशों में से भूख के सवाल पर हम 105वें स्थान पर हैं। मैं निश्चित रूप से ये कहना चाहूंगा सभापति महोदय, 1% लोगों के हमारे देश के पास 44% दौलत है। ये जो आर्थिक असंतुलन है सभापति महोदय, ये हिंसा को जन्म देता है और ये समानता दूर होनी चाहिए। मैं आपके
मार्फत निवेदन करना चाहूँगा कि ये किसान विरोधी बजट है, नौजवानों के खिलाफ बजट है, ग्रामीण अंचल के खिलाफ बजट है। कुल मिलाकर के आम जनता का इस बजट से कोई लेना देना नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू रामजीलाल जी सुमन, थैंक यू। श्री मिलिंद मुरली देवड़ा, 10 minutes. Thank you, Honorable Chairman. So Time will start, don't bother, it has started already. So I'll hopefully also complete within time, sir. सर, भारत एक बहुत ही विविध देश है। ग्रामीण क्षेत्र में लोगों की डिमांड्स बहुत अलग है, शहरी इलाकों में लोगों की बहुत सारे डिमांड्स हैं, MSMEs के अलग डिमांड्स है, कृषि जगत में लोगों की अलग डिमांड्स और एक्सपेक्टेशंस है। और मैं मानता हूं कि देश के किसी भी वित्त मंत्री को सभी कंस्टिट्यूएंसीज को संतुष्ट रखना, उनको खुश करना बहुत ही कठिन है, एक प्रकार से असंभव है। लेकिन आई वुड लाइक टू से सर, दिस बजट genuinely in my parliamentary tenure, very rarely have I seen a budget where there's very little to add to. And इसलिए मैं माननीय वित्त मंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने सभी कंस्टिट्यूएंसीज को, मिडिल क्लास से लेकर MSMEs तक, सभी को उन्होंने खुश किया है इस बजट के माध्यम से। सर, एक प्रकार से मैं वित्त मंत्री जी को इसलिए भी बधाई देना चाहूँगा कि उनके नेतृत्व में भारत और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो ऐसे बहुत सारे इंटरनेशनल इकोनॉमिक पॉलिटिकल शॉक्स, उन शॉक्स का सफलता से सामना करना, वेदर इट इज़ द कोविड पैंडेमिक, मैनेजिंग इन्फ्लेशन, ड्राइविंग स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लाइक द PLI scheme, tax rationalization and capital market deepening, the finance minister has demonstrated remarkable leadership. And today India's fiscal strength, our record foreign direct investment inflows and booming digital economy stand as a testament to her execution capabilities. सर, मेरा मानना है कि आज इस बजट में जो सबसे महत्वपूर्ण एक प्रकार से फोकस है, that is to make India and to make India's smaller companies export ready. For decades, Indian businesses have competed globally despite challenges like complex regulations and inadequate infrastructure. This budget, in my opinion, changes the game completely. Number one, corporate tax कम करने से MSMEs को एक level playing field का अवसर दिया जाएगा. Number two, compliance का जो बोझ है, उस बोझ को घटाने से एक प्रकार से एक बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट अधिक मजबूत होगा। और वित्त मंत्री जी ने अपने भाषण में जब उन्होंने बजट प्रस्तुत किया, शी स्पोक अबाउट मेनी मेजर्स टू डीरेगुलेट inefficient regulations. I look forward to hearing from her in the months ahead what the finance ministry plans to do. और तीसरा, लॉजिस्टिक्स और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करके भारत मेक इन इंडिया को एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया में बदल दिया जाए। सर, हमारे पूर्व वित्त मंत्री जी, मैं एक्चुअली गाड़ी में था और मैंने मोबाइल फ़ोन पे उनका बजट सुना। चिदम्बरम जी ने कहा कि बजट्स आपके पहले, सर अभी है नहीं नहीं, उन्होंने कहा कि बजट्स आर अबाउट नंबर्स, एंड he rightly said budgets are about numbers. And without taking too much time, I spoke recently last week on the President's address, therefore I'll be very brief today. I only want to highlight the unparalleled progress that India has seen in the last decade. And I want to quote 14 numbers and 14 statistics. Number one, 2014, India's forex reserves were $304 billion. Today in 2024, last year, India's forex reserves are $642 billion, more than double. Ease of doing business ranking, which is very important. यदि हमें चीन के against, बाकी देशों के against compete करना है, ease of doing business ranking is very, very important. 2014 में भारत का ease of doing business ranking 142 था. 2024 में भारत की ease of doing business ranking 63 है. It has come down by more than half. FDI and manufacturing.
कुछ लोगों ने कहा कि PLI स्कीम्स आर नॉट वर्किंग, मैन्युफैक्चरिंग में इन्वेस्टमेंट कहाँ आ रही। मैं उनका ध्यान इस स्टैटिस्टिक्स की ओर आकर्षित करना चाहूँगा। 2004 से लेकर 2014 तक 10 वर्षों में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन मैन्युफैक्चरिंग वाज $98 बिलियन। 2014 से लेकर 2024 तक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन मैन्युफैक्चरिंग $165 बिलियन। इंटरनेट कनेक्शंस 2014 में केवल 25 करोड़ इंटरनेट कनेक्शंस हुआ करते थे हमारे देश में। आज हम गर्व से कह सकते हैं कि 2024 में 97 करोड़ इंटरनेट कनेक्शंस है, इंक्रीज ऑफ 4 टाइम्स। UPI ट्रांजैक्शंस, मैंने एक ही स्टैटिस्टिक्स को मैं रिपीट कर रहा हूं जो मैंने पिछले भाषण में भी कहा। UPI ट्रांजैक्शंस 2016 में, दिसंबर 2016 केवल एक महीने में 7 बिलियन UPI ट्रांजैक्शंस टुक प्लेस। December 2024, just 2 months ago, in 1 month only, 17 billion UPI transactions took place across different platforms. परमाणु ऊर्जा क्षमता, जो आज वित्त मंत्री ने कहा कि न्यूक्लियर एनर्जी को सरकार अनलीश करना चाहती, मैं इसका तहे दिल से स्वागत करना चाहूँगा। परमाणु ऊर्जा क्षमता 2014 में 4,780 मेगावाट्स, 2024 8,180 मेगावाट्स। मोबाइल फोन उत्पादन 2014 में केवल 2 फैक्ट्रीज हुआ करते थे। आज 2024 में भारत दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग देश है। एक्सपोर्ट्स 2013-14 में भारतीय एक्सपोर्ट्स $466 बिलियन हुआ करती थी। आज 2023-24 में $777 बिलियन की एक्सपोर्ट्स हो रही है। Medical colleges, which affects the common person, there were only 387 medical colleges in 2014, of which 7 were AIIMS. In 2024, there are 660 medical colleges, of which 23 are AIIMS. That's more than a 3-time increase. IITs and IIMs, 2014, IITs only 16, IIMs only 13 in the country. Today in 2024, 23 IITs and 21 IIMs. The biggest statistic in my opinion, जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, एयरपोर्ट्स। 10 साल पहले भारत में केवल 74 एयरपोर्ट्स थे। आज 2024 में 157 एयरपोर्ट्स हमारे देश में हैं, मोर देन डबल। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, मल्टी डायमेंशनल जो गरीबी है, 2013-14 29.17%, 22-23 11.28%। जन धन खाते 2014 केवल 15 करोड़ अकाउंट्स, आज 2024 में 50 करोड़ अकाउंट्स, मोर देन 3 टाइम्स ऑफ एन इंक्रीज। रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी 2014 76 गीगावाट्स, 2024 203 gigawatts, 3 times. So I welcome the former finance minister's remarks. Budgets are about numbers. These are numbers I have highlighted to show what progress has been made in the last 10 years. Sir, one last point I would like to make. In fact, the former finance minister, my friends from the Congress can correct me if I'm wrong, but I think in '97, when he presented his budget, he made a famous, he quoted, he said, the world does not wait for those who hesitate. He also praised Dr. Manmohan Singh. मैंने भी अपने president address में Dr. Manmohan Singh जी की प्रशंसा की. To be fair to Dr. Singh, he never hesitated when UPA was in power, nor was he in two minds or confused sometimes. Unfortunately, there were elements in his government who were hesitant about taking India forward. And because of that, unfortunately, India lost a decade of progress. Today, one of the biggest reasons that India has progressed, is progressing, and is able to withstand the global shocks that the world is throwing at us, is because of the decisive leadership of Prime Minister Narendra Modi ji, where there is no ambiguity that to grow the country, to solve the problem of inequality, we have to have aggressive economic growth. So with these words, I once again praise the Finance Minister for an outstanding budget. Thank you very much. धन्यवाद. आपने समय से समाप्त किया. बहुत अच्छे शब्दों में पूरा विवरण आपने दिया. धन्यवाद. श्री जोश के मणि
Thank you, sir. 5 minutes. Yeah. When you come to the nation's budget, we talk about the nation. But today I am compelled to talk about the state of Kerala. I stand here to raise the voice of the people because the budget has completely neglected the Kerala state. Sir, if you take last 8 years budget, can the Treasury bench spot out one single project or one single assistance or one single scheme exclusively for Kerala? Nothing has been done for Kerala. Nothing. Why, sir? I am not asking for a special treatment for Kerala. I am asking only what is fair. As you know, Kerala is a shining example in the growth of education, healthcare, and also tourism and more. And also we have earned our place in the India's growth map. In the case of human development, we are much higher than some of the nearby or some of the states in the country. But then, why we are being neglected? One of the state ministers in the center ministers was saying, he was commenting, the Kerala, if you want assistance, you must deteriorate the development and we'll give you money. It is not that. But I'll tell you what is the reason. The reason is that BJP do not envisage any political gain in Kerala, sir. Sir, out of the 25 lakh crores for the allocation of all the states, the Kerala has requested for 40,000 crores. And what has been given to Kerala? It is nil. It is zero. Now, if you take about Wayanad, sir, in the devastating landslide, the national TV, everyone, it was when the house was in session. I remember lots of people, about 375 people lost their life. Thousands of people have lost their homes, their dear ones. The Honorable Prime Minister came to Wayanad and visited. Thank you. And he visited the camps, got hold of all the people inside the camp, got a little child, a boy, about 12 years, got close to his arms and said, don't worry, we'll take care of it, all the people over here. We'll give you assistance. And what he has given, allotted. So many months have lapsed, but not even a single pie has been allotted. We've been talking about aims. You know the nurses of Kerala, most sought after in the world. But we asked for aims for last 10 years, and deliberately it is not allowed. Deliberately it is not sanctioned, because there is no political gain for BJP. Another thing, mainly because now we talk about rubber. I think in the Lok Sabha, for 10 years I've been speaking, and here also I've been speaking about the rubber. The Kerala economy revolves around the price of rubber. The rubber price is 10 years back, it was 240 rupees. Now it has come down the lowest during the years, like 140 per kilo. Why it was so? Because the inordinate or uncontrolled import of natural rubber. Now, let's be you are supporting, or it is done for the tire manufacturer. Let it be like that. But why the import duty is being done? It is to protect the rubber growers, isn't it? So last 5 years, actually the government has earned about 5,000 crores as per the import duty. That import duty is not the revenue of the central government. It is the sweat and toil of the farmers of Kerala, because 75% of the production is from Kerala. So I request, we have a scheme in Kerala, sir, a beautiful scheme, maybe one of the best in Kerala, sir. That is a minimum support price of 180 rupees. The price goes below 180, they'll compensate. So I request the government of India to give 75% of the money to the
rubber incentive schemes. One more thing, sir, the NRIs. As you know, the NRIs, this last 1 point, sir. Thank you. India received estimate of 129 billion worth of remittance, the highest ever the country in years. But the budget is a slap on the non-residents Indians all over the world by introducing a oppressive tax regime of NRIs under the guise of global financial transparency. Everywhere, if you look at Kerala, it is a slap by the center to the Kerala because there is no political gains. It is unfair. Please. अपनी बात को पूरा कीजिए. Thank you, sir. Next, Shri Virendra Prasad West, AGP. 10 minutes. Thank you, Chairman, sir, for allowing me to speak on the Indian budget. I raised here to speak on the budget on behalf of my party, Assam Gana Parishad, and on behalf of our party president, Atul Bora. Sir, this budget, yes, this budget is for the economic growth of the country. This budget is a farmer-friendly budget, sir. This budget is the poor and middle-class people of our country, sir. Sir, I am delighted to say the budget is also for development of the northeastern region of our country, sir, including Assam, sir. Sir, for development, 4 engines is required. Agriculture sector, MSME sector, investment sector, and export sector. Our government has given topmost priority in our agriculture sector, including the farmers' welfare and including rise the income of the farmers of our country, sir. So this budget is very good budget because people, every part of the country said this budget is for poor people, this budget is for middle-class people of our country, sir. In her budget speech, our finance minister have given tax holiday for the up to 12 lakhs rupees, which will be helpful for the middle class and poor people of our country. This is possible only for our Prime Minister Narendra Modi is here. This is possible only for Modi hai to Mangin hai. Sir, this budget is given more important structure, capital development, capital expenditure, more than 1121 crore is going to invest in our capital expenditure, which is 3% of our GDP, sir. So capital expenditure means, sir, it will create new airport, new railway line, new industry, new port. It means money will be coming to the market very large way. It means capital expenditure is going to expand in our country, and equally it means it will be helpful for job creation of our country, sir. So I must compliment Honorable Minister Nirmala Sitharaman. Equally, I like to compliment our Honorable Prime Minister for his wonderful guidance, sir. So this budget, a historic budget for Northeastern region, sir. In his budget proposal, Railway Ministry has proposed to invest for the infrastructure develop railway connectivity with Northeastern region. He has proposed near about 11,000 crore for the railway, improve the railway connectivity in our Northeastern region, sir, which will include, there will be 92 railway stations will be transferred around Amrit Bharat station, and entire Assam network, railway network will be covered by electricity. This is the historic announcement
of the Railway Minister. I welcome it. For the first time, Railway Minister is going to introduce near about 11,000 crore for the development of the northeastern region. And this is the first time, last more than 40 years, we are fighting for electricity connectivity, our railway track, and Railway Minister announced by 2025, all the railway track will be connected with the electricity, sir. Sir, with due respect to our former Prime Minister, Dr. Manmohan Singh ji, I like to say one thing, sir. Dr. Singh is a great economics. He was from Assam, sir. Our fertilizer minister was from Assam, sir. And last more than 30 years, sir, 40 years, we are speaking about the number of fertilizer companies, sir. Sir, can you imagine the fertilizer company was independent before 1960, sir. Now, this budget has given proposal to set up urea production in our state. There will be urea industry in Namrup annually, which is going to produce 12.7 million metric tons, sir. It's a historic decision, sir, because Namrup fertilizer has played very important role our socio-economic development, Assam and northeastern region, sir. Namrup fertilizer has played very important role for our growing of tea industry of our country, sir. But last several years we are fighting, we are not getting justice. Nobody is look after us, nobody is doing for us. I am grateful to the Honorable Prime Minister of the country who took initiative, and there will be a urea production unit in India which is going to produce 12.7 metric ton urea annually. In this regard, I like to say a simple sentence expressed by the Honorable Chief Minister of Assam, because in this project, Assam government is going to invest 40%, sir. I must compliment Chief Minister of Assam for his courageous and active support this project, and which will create new infrastructure development, new industry development in your country. Dr. Hemanta Biswa Sarma said, starter of the after semiconductor in Jagirur, Assam, in the state, the new urea production facility will be a game changer for the entire northeastern region, and described this is a historic decision for Assam. Yes, sir, this decision is a historic decision for Assam, sir, because this industry will be the game changer for the development of our northeastern region, because Atmanirbhar Bharat in urea production will be implemented from this project, and for this market we will get Southeast Asia, for this market we will get Bangladesh, other countries, sir. So I am grateful, sir. One more thing. Assam government took an ambitious plan, sir, to attract the investor in northeastern region. This is the advantage Assam 20. Sir, I am very, very happy to say that many prominent countries of the world, many prominent industrials of the world, including industrial for Japan, Korea, and near about 40 countries, already has given to participate advantage Assam in 2020 in Assam, which will be organized in Guwahati from 24th to 25th. I must compliment Chief Minister of Assam. This will be a new era. This will start a new history for the economic development of Assam, and after successful of this advantage Assam, Assam will be one of the major industrial players of our country, sir. Sir, I am very proud. I belong to the tea producing state, sir, Assam, sir. We produce tea, sir, and Assam tea have an international name, and we have earned lots of foreign exchange, which will be helpful to boost of our economy, sir. Sir, in our economy, especially for self-employed people, small tree growers play very, very important role, sir, because
they are self-employed, sir. I humble request to the government, because we are getting all possible support from the government to look after small tea growers of our country, sir, because they are self-made, they are self-employed. If they get some justice, some help from the government of India, our tea industry will go better, go more better. Our small tea industry will go very important in. Again, I salute Nirmala Sitaramji, Honorable Prime Minister ji, for given 12+ income tax reduction to the people of Assam, which will be helpful for poor people, middle class people. It means our Narendra Modi government is for the poor people, is for the economic backward people, is for the middle class people. With this, I totally support the budget, and I totally compliment our Honorable Prime Minister. Thank you very much for giving me support. बहुत धन्यवाद श्री वीरेंद्र प्रसाद वैश्य जी। नेक्स्ट डॉक्टर मेघा विश्राम कुलकर्णी, 20 मिनट्स। नमस्ते सर। सभापति महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस महत्वपूर्ण विषय पर बजट पर चर्चा करने के लिए, अपना समर्थन देने के लिए आपने मुझे मौका दिया। मेरे भाषण के शुरू में मैं सर्वप्रथम दिल्ली की ऐतिहासिक जीत के लिए सबको बधाई देती हूँ। ये कार्यकर्ता और जनता का विश्वास जो है मोदी जी ने हासिल किया है, और इसलिए केंद्र जो में काम चल रहा है वही दिल्ली में हो सके, इसलिए डबल इंजन की सरकार को उन्होंने चुन के दिया है। व्हाट्सएप पे बहुत सारे वायरल्स आ रहे थे कि लोगों ने आखिर शीश महल में रहने वालों को आईना दिखा ही दिया। पूर्व मुख्यमंत्री कह रहे थे कि मोदी जी मुझे कभी हरा नहीं सकते, लेकिन मैं कहना चाहती हूँ कि सरकार तो गिर गई, सरकार तो हार ही गई, खुद की सीट भी नहीं बचा सके। और ये भी कहना चाहती हूँ कि चींटी मारने के लिए हथौड़ा और रंगाड़े की आवश्यकता नहीं होती है। तो ऐसी ऐतिहासिक हार उनकी हुई है, उसके लिए और उनको आईना दिखाने के लिए दिल्ली वालों का बहुत बहुत आभार। इससे पहले महाराष्ट्र ने ऐसी ही बड़ी होश उड़ाने वाली जीत हासिल की थी, तो महाराष्ट्र भी अभिनंदन के पात्र है। हरियाणा ने शुरुआत की थी, हरियाणा ने एक श्रृंखला, एक कड़ी की शुरुआत की, और इसमें बाद में महाराष्ट्र और दिल्ली आगे बढ़ता गया। आने वाले चुनावों में आने वाले राज्य भी इस कड़ी में जुड़ते जाएंगे, ये मेरा विश्वास है। इस वार्षिक वित्तीय विवरण पर 2025-26 के वार्षिक वित्तीय विवरण पर मैं बात रखूंगी ही, लेकिन उसके पहले मैं एक हिसाब चुकता करना चाहती हूँ। इस अंदाजपत्रकीय वर्ष के शुरू में बजट सादर होने के पहले आदरणीय राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी जी मुर्मू ने बहुत ही प्रेरणादायी भाषण किया। उन्होंने कहा कि 2047 ये साल भारत एक ऊंची उड़ान 2047 तक ले सकता है, और ये उड़ान कैसी होगी इसके बारे में उन्होंने संकल्प चित्र रखा। विकसित भारत की यात्रा में कोई छूटने न पाए, विकसित भारत की यात्रा में कोई भी छूटने न पाए, इस ध्येय के अनुरूप ये सरकार काम करेगी, ये एजेंडा उन्होंने बताया। सच्चा राष्ट्रवाद केवल भारत की भौतिक एकता नहीं, सांस्कृतिक एकता का मजबूतीकरण भी होना चाहिए। ये डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का वाक्य उन्होंने उद्धृत किया। उन्होंने कहा कि एक राष्ट्र में अनेक रूप हो सकते हैं, लेकिन इन सब में हमारी पहचान एक है, और वो है भारत, और इस भारत का एक ही संकल्प है, वो है विकसित भारत। इनके प्रेरणादायी वाक्यों ने मुझे तो रोमांचित कर दिया। पिछले साल की मुझे याद आई, जब मैं नई सांसद बनी थी, पहला ही उनका अभिभाषण था। उन्होंने जो अभिभाषण के अंत में कहा, वो वाक्य इतना अच्छा है, इतना गहरा है, मैं आपके लिए एक बार दोहराती हूँ।
उन्होंने कहा कि ये सदी भारत की सदी है, ये सदी भारत की सदी है और इस सदी के पीढ़ी का योगदान आने वाले 1000 साल याद रखेंगे। ये वाक्य उन्होंने जो कहा था मेरे मन में बस गया है और जहाँ जहाँ मुझे मौका मिलता है ये वाक्य मैं उद्धृत करती हूँ। क्यों? लोगों को जागरूक करने के लिए, लोगों को ये बताने के लिए कि आओ चलो इस सदी के हम पीढ़ी के लोग कुछ ऐसा करें कि आने वाले 1000 साल भारत की तरफ कोई भी वक्र दृष्टि से देख नहीं पाएगा, ऐसा काम करके जाए। इतना गहरा ये वाक्य है। मुझे आश्चर्य हुआ कि जो भाषण मुझे प्रेरित करता है, बाकी अनेक जो राष्ट्रभक्त लोग हैं उनको प्रेरित करता है, किसी को बोर कैसे हो सकता है? किसी को बोर कैसे हो सकता है? लेकिन मैं एक अध्यापक हूँ, मुझे मालूम है कि कुछ स्टूडेंट्स की ऐसी कुछ दिमाग की हालत होती है, बौद्धिक क्षमता कुछ ऐसी होती है कि उनको कुछ समझ में नहीं आता, उनका कंसंट्रेशन भी नहीं होता, उनका ध्यान नहीं लगता, कभी कभी वो बोर हो जाते हैं, कभी कभी सो भी जाते हैं। आपने देखा होगा किरण रिजिजू के भाषण के समय वो इतनी गहरी नींद में थे कि कोई उनको उठा रहा था, वो भी उनको पता नहीं। तो ऐसी बात करने वाले कभी कभी जागते हैं और जागने के बाद क्या बात करते हैं कि हमारी लड़ाई किससे है? भारत की राष्ट्र संस्था के साथ हमारी लड़ाई, राज्य संस्था के साथ हमारी लड़ाई है, मतलब अपने ही राष्ट्र से लड़ेंगे। ऐसी राष्ट्रद्रोह की भाषा जब वो जगते हैं तब करते हैं। मुझे दुख भी होता है, दर्द भी होता है, शौक भी लगता है। जैसे हमें शौक लगा ना कि वो ऐसी कैसी बात कर सकते हैं, एक सांसद होकर ऐसी बात कर सकते हैं। वही है एजेंडा जो है, मैं आपको उत्तर नहीं दूंगी क्योंकि आपका एजेंडा अलग है, आपका एजेंडा अलग है। राष्ट्र भक्ति के ऊपर ये बजट राष्ट्र को समर्पित बजट है। जिनका माइंड राष्ट्रद्रोही है ना, उनको ये बजट निराशाजनक लगेगा। लेकिन जैसे हम शौक में चले गए, बिहार के हमारे एक सामान्य नागरिक है वहां के मुकेश चौधरी जी, उन्होंने जब ये न्यूज सुनी, आपने कदाचित सुनी होगी, उन्होंने जब ये न्यूज सुनी कि माननीय XYZ ने ऐसा राष्ट्रद्रोही विधान किया, तो उनके हाथ में दूध की एक बोतल थी, वो बोतल हाथ से गिर गई और दूध उनका वेस्ट हो गया। तो उन्होंने वो दौड़े दौड़े कोर्ट में गए और उन्होंने मुकदमा चलाना चाहा कि मेरा नुकसान भी हुआ है, मेरे देश का भी नुकसान हुआ है और ऐसे राष्ट्रद्रोही यहाँ होने नहीं चाहिए। मतलब लोगों को इनकी बातों से दिमाग खराब जो है, उनकी बातों से शौक लगता है, दुख होता है, दर्द होता है, लेकिन इनको राष्ट्रभक्ति के भाषण से बोर होता है और बाहर जाके बात करते हैं लोगों से कि पुअर थिंग। अरे पुअर थिंग किसको बोलते हैं? पुअर थिंग किसको बोलते हैं? भारतीय नारी का एक अपमान। वो पद है, वो छोड़ दीजिए, वो पद पर है, वो छोड़ दीजिए। कोई भी भारतीय नारी का अपमान अगर करेगा तो श्राप लगेगा ही। दिल्ली की चुनाव ने ये बता दिया है। आपकी बारी आए तो भारतीय नारी को ऐसी अभद्र भाषा बोलने वाले लोगों को आने वाले समय में और भी बोर होना पड़ेगा, क्योंकि उनको कोई भी राज्य में सत्ता नहीं मिलेगी, उनके मेंबर्स नहीं चुन के आएंगे और घर में बैठने की नौबत जब आएगी तो उनको और भी बोर होने वाला है। तब उनको पता चलेगा कि असली बोर और असली पुअर थिंग क्या होती है। चलो छोड़ो, मैं बजट पर बात करती हूं। सुनिए, लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में चल रही ये सरकार, आदरणीय वित्त मंत्री निर्मला जी सीतारमण, इनका मैं अभिनंदन करना चाहती हूं कि 8वीं बार उन्होंने अपना बजट यहां सादर किया और ये बजट सर्वंकष और सर्वसमावेशक है, इसलिए उनका बहुत बहुत अभिनंदन। मोदी जी ने अपने भाषण में कहा था कि हर भारतीय के सपनों को साकार करने वाला ये बजट है।
हर भारतीय नागरिक का तुष्टिकरण करने वाला, संतुष्टिकरण करने वाला, तुष्टिकरण करने वाला नहीं, संतुष्टिकरण करने वाला ये बजट है। और आदरणीय निर्मला जी ने भी कहा, अ कंट्री इज जस्ट नॉट अ सॉइल, अ कंट्री इज मेड अप ऑफ इट्स पीपल। अटल जी की कविता उससे याद आती है कि भारत केवल एक जमीन का टुकड़ा नहीं, जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। हम जिएंगे तो इसके लिए और मरेंगे तो इसके लिए। इस राष्ट्र पुरुष को और ज्यादा मजबूत बनाने वाला ये बजट है। और इस बजट का संकल्प क्या है? विकसित भारत। विकसित भारत कब तक बनाना है? 2047 तक। कैसे बनेगा विकसित भारत? सबका विकास करके। और सबका विकास कैसे होगा? रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म। और रिफॉर्म कैसे होंगे? इसके लिए 4 ग्रोथ इंजन या 4 पिलर्स आप बोल सकते हैं, इनको आइडेंटिफाई किया है। कृषि, MSME, इन्वेस्टमेंट और निर्यात। देखो कितनी ज्यादा, कितने बड़े तरीके से विचार किया है और फिर बजट तैयार किया है कि किसको स्ट्रांग बनाएंगे, कौन सी पटरी पर हमारा देश चलेगा। तो इसके लिए 4 ग्रोथ इंजन और सबसे वीकर, और वीकर क्यों बोले, सबसे स्ट्रॉन्गर, कि जिनको अगर स्ट्रांग किया जाए तो देश स्ट्रांग हो सकता है। ऐसे 4 घटक उन्होंने चुने हैं, जिनमें है अन्नदाता, युवा, नारी और गरीब। तो इसके सिद्धांत क्या है? उन्होंने कहा कि गरीबी से मुक्ति ये सिद्धांत है, अच्छे स्तर की शिक्षा ये एजेंडा है, सस्ती बेहतरीन सुलभ स्वास्थ्य व्यवस्था ये एजेंडा है, 100% कुशल कामगार और सार्थक रोजगार ये थीम है, आर्थिक गतिविधियों में 70% महिलाएं समाविष्ट हो ये थीम है, हमारा देश फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड बने इसलिए किसानों को सक्षम करना चाहिए ये थीम है, डेवलपमेंट में तेजी, मध्यम वर्ग की क्षमता को बढ़ाने में मदद, समावेशी इंक्लूसिव डेवलपमेंट, निजी क्षेत्र में निवेश को बढ़ाना और परिवारों के मनोबल को उल्लसित करना। मतलब इतने अच्छे थीम पर कोई भी योजना हो, कोई भी बजट डाला हो, कोई भी प्रावधान हो, सबके लिए ये थीम है कि इससे क्या होने वाला है। अब मध्यम वर्गीय का उल्लेख किया है तो मध्यम वर्गीय के बजट को, उनके बर्डन को कम करने के लिए 12 लाख तक की आय पर पूरी तरीके से टैक्स फ्री कर दिया है। जो सैलरीड इनकम लेते हैं, जो जॉब करते हैं और सैलरी है, उनको 12,75,000 इसके ऊपर टैक्स नहीं होगा। आप तुलना कर सकते हैं, जब 2014 की अगर हम बात करें तो 2014 में अगर आपकी आय 8 लाख होती तो आपको 90,000 की आय टैक्स देना पड़ता। 12 लाख की अगर आपकी आमदनी होती तो 2 लाख का टैक्स देना पड़ता। 24 लाख की अगर आमदनी होती तो 2.6 लाख इतना टैक्स आपको देना पड़ता। लेकिन इस सब सामान्य नागरिक के इस टैक्स की जो रकम है उसकी बचत हो चुकी है, इसलिए उनके लिए ये प्रावधान जो है, ये घोषणा है, बहुत ही महत्वपूर्ण और फायदा देने वाली है। लेकिन हम दूसरों से तुलना क्यों करें? माननीय मोदी जी के नेतृत्व में चल रही सरकार खुद से ही स्पर्धा करती है। पिछले साल में हमने क्या किया था, उससे भी आगे जाकर हम क्या करने वाले हैं और क्या कर सकते हैं, अपनी ही ऊंची बढ़ाने का काम ये सरकार करती है। तो इसलिए और एक तुलना मैं आपको बताती हूँ कि 2024 में अगर आप 8 लाख रुपए का इनकम अगर आपका होता तो 30,000 का टैक्स भरना पड़ता। 12 लाख का अगर आपको इनकम है तो 80,000 टैक्स देना पड़ता, और 24 लाख का अगर आपका इनकम है तो 1,10,000 का इनकम टैक्स देना पड़ता। लेकिन अब इसमें बचत हो गई है तो सर्वसामान्य नागरिक, मध्यम वर्गीय जो है, बहुत खुश है। कर सुधार में और भी नए तरीके, और भी एक सरल बिल आने वाला है जो लोगों को अच्छा लगेगा ही। 36 जीवन रक्षक दवाओं में से टैक्स हटा दिया है। सीनियर सिटीजन्स के लिए सुविधाजनक, उनके ब्याज पर टैक्स न लगे इसलिए निर्णय किया गया है। किराया लेने वाले मकान मालिक के लिए निर्णय लिया गया है। बहुत अच्छी तरीके से सभी डिपार्टमेंट में बहुत सारा
निधि का प्रावधान किया है, हम कंपैरिजन कर सकते हैं कि 2013 में कितना बजट आता था और 2025 में कितना बजट आ रहा है। डिफेंस का बजट है इस साल का 4,90,000, रूरल डेवलपमेंट का है 2,66,000, होम अफेयर्स का है 2,33,000। सभी आंकड़े गिना सकती हूँ मैं। आवासन का बजट है 96,077 करोड़ रुपीस, मतलब ये सब करोड़ में आंकड़े हैं। सड़क का बजट है 2.87 लाख करोड़। अब देखा जाए तो 2013 में ये बजट था 31,000 करोड़ और अब ये बढ़ा के ये हो गया है 2.87 करोड़। मतलब कितने गुना ये बजट बढ़ा है। और इसका इफेक्ट हम देख सकते हैं कि पूरी तरीके से जहाँ जहाँ भी हम जाएं सभी जगह इतनी अच्छी सड़कें बनी हैं। इतने साल में ये कर नहीं सके, लेकिन हमारी सरकार ने ये करके दिखाया है। रेलवे का बजट हो, स्टील का बजट हो, सभी में अच्छी तरह से। मैं महाराष्ट्र के बारे में ज़्यादा बात करना चाहूँगी। पिछली बार जब महाराष्ट्र के चुनाव होने वाले थे और हुए नहीं थे, तब महाराष्ट्र को बजट दिया गया। सबने बोला कि अरे महाराष्ट्र के चुनाव है तो महाराष्ट्र को बजट दे रहे। ऐसा नहीं है, इस साल भी बहुत अच्छी तरीके तरह से हमें बजट मिला है। पुणे मेट्रो के लिए 837 करोड़, मुंबई अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट के लिए 1,400 करोड़, मुड़ा मुठा नदी संरक्षण प्रोजेक्ट के लिए 230 करोड़, नागा नदी सुधार परियोजना के लिए 295 करोड़, मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल के लिए 4,000 करोड़, हाई स्पीड रेल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के लिए 126 करोड़, मुंबई मेट्रो के लिए 1,600 करोड़, ग्रामीण सुधार के लिए 683 करोड़। महाराष्ट्र मतलब बहुत ही है। इतना सब मैं यहाँ गिनाऊंगी तो बोलने वाला भी थकेगा और सुनने वाला भी थकेगा। तो इतना बजट दिया है। मैं कंपैरिजन करना चाहती हूँ। मैं पुणे से आती हूँ। पुणे में जब तक केंद्र में माननीय मोदी जी की सरकार नहीं है, तब तक नहीं आई थी, तब तक एक भी रुपया, एक भी काम पुणे में, महाराष्ट्र में केंद्र की योजना से नहीं हो पाया था। और आज ये स्थिति है कि पुणे में हर जगह मेट्रो का नेटवर्क हो रहा है। आज भी पुणे मेट्रो का मैंने पढ़ा कि बजट 800 से ज़्यादा करोड़ बजट दिया है। पुणे में नदी सुधार का प्रोजेक्ट हो रहा है, पुणे में सड़कें बन रही हैं, पुणे में अभी आळंदी का जिक्र किया था धनंजय जी पाटिल जी ने कि आळंदी से पंढरपुर तक और देहू से पंढरपुर तक वारी जाती है। तो वारी का जो मार्ग है, इतना अच्छा मार्ग वारकरी संप्रदाय के लिए इस डिपार्टमेंट में केंद्र ने किया है। रिंग रोड हो, एसटीपी प्लांट्स हो, सभी के लिए इतना अच्छा बजट दिया है। तो मोदी जी की सरकार इस तरह देश को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही है। आज दुनिया में मोबाइल बनाने में भारत देश नंबर 1 है। डिफेंस में 10 गुना एक्सपोर्ट बढ़ा है। दुनिया का सबसे बड़ा स्टील प्रोड्यूसिंग देश भारत है। हर दिन 2 कॉलेजेस बन रहे हैं, हर दिन 37 नए स्टार्टअप्स हो रहे हैं। मत्स्य निर्यात में विश्व में 2 नंबर पे है और बाकी भी सब उपलब्धि उनकी है। आवास योजना है, स्टार्टअप्स है, आयुष्मान भारत है, अन्न सुरक्षा योजना है, जल जीवन मिशन है। एयरपोर्ट्स की संख्या 157 बन गई और 120 डेस्टिनेशंस होने जा रहे हैं। IITs, पीएम रिसर्च फेलोशिप में 10,000 फेलोशिप्स दिए जाएंगे छात्र को। लेकिन इतने आंकड़े गिनाने के बाद भी ये बोलेंगे कुछ कर नहीं सकते, स्टैटिस्टिक्स ये नहीं बता रहा है, वो नहीं बता रहा है। मतलब कुत्ते की दुम होती है ना, वैसे कुछ लोग होते हैं कि कुछ भी करो, कुछ भी उनको बताओ, सिद्ध करो। आंकड़े जताते हैं फिर भी वो मानेंगे नहीं। टीका करना उनकी फितरत में है। कभी चुनाव पे बोलेंगे, कभी ईवीएम पे बोलेंगे, कभी संविधान पे बोलेंगे, कभी वोटर्स रजिस्ट्रेशन कितना हुआ है उसे बोलेंगे, कभी धार्मिक स्थलों पे बोलेंगे। कुंभ का तक नहीं छोड़ा इन्होंने। कुंभ के बारे में आज जो लोग जहाँ समय मुझे थोड़ा सा बढ़ा दीजिए कृपया, मेरी विनती है। नहीं बढ़ेगा नहीं, क्योंकि वो तो जो पार्टी ने टाइम दिया आपको वही तो आपका 1 मिनट मैं बताना चाहती हूँ
कि दुर्घटना जो जो कुत्ते वगैरह बोला है तो वो उसके लिए वो देखना पड़ेगा बाद में कि वो है कि नहीं अलाउड। तो मेरे समय में चलिए आप बोलिए बोलती रहिए। मैंने एक एनिमल के बारे में बोला, मैंने किसी आदमी के बारे में नहीं बोला। नहीं, लोगों की तुलना तो एनिमल से की है ना। ये मुहावरा है। जब स्वतंत्रता के बाद का पहला कुंभ था तब माननीय तब के प्रधानमंत्री नेहरू जी वहां गए थे और उनके जाने के बाद वहां जो भगदड़ हुई, मेरे जानकारी के मुताबिक 800 लोग वहां मारे गए। तो उस पर ये राजनीति नहीं करेंगे, उस वक्त राजनीति नहीं करेंगे। लेकिन आज अगर कोई दुर्घटना घटी है, 2003 की बात करती हूँ, नासिक में कुंभ हुआ था। नासिक के कुंभ में कालाराम मंदिर के सामने दक्षिण द्वार पे भगदड़ हुई थी और बहुत सारे लोगों की मौत हुई थी। 2013 में मॉरिशस के प्रधानमंत्री आए थे और गंदगी देख के रोते रोते वापस चले गए कि अरे क्या ये गंगा है, ऐसी गंगा तो मैंने कभी सोची नहीं थी। तो इस तरह से तब कुंभ का आयोजन किया था। और तब कुंभ का आयोजन किसने किया था? आजम खान को यह जिम्मेदारी 2013 में उस वक्त के मुख्यमंत्री जी ने दी थी। उस वक्त के मुख्यमंत्री जी ने अब इस साल वहां कुंभ में जाके डुबकी लगाई। अब जब उत्तर प्रदेश की सारी टीम जाती है, वहां के सब मिनिस्टर्स जाते हैं और डुबकी लगाते हैं और फोटो निकालते हैं, तो बोलते हैं कि आलोचना होती है, अरे फोटो निकालने की क्या जरूरत है, आप पब्लिसिटी करते हैं। लेकिन खुद जब जाएंगे, सारे लोग विपक्षी दलों के भी वहां जाके आए, फोटो निकाले, फिर भी आलोचना करनी नहीं है, तब उनको नहीं लगता कि टीका करनी चाहिए। धन्यवाद मैडम। अखिलेश प्रसाद सिंह। धन्यवाद सर महोदय, आपने मुझे। अरे हमारा टाइम कहाँ? अच्छा चलो 30 सेकंड में करिए मैडम। हाँ 30 सेकंड में बोलिए। टाइम फिर बंद करिए सर। मैं केवल एक आह्वान करना चाहती हूँ कि राजनीति को छोड़ दीजिए, विकसित भारत की यात्रा में कोई छूटने ना पाए, यही तो एजेंडा है। आप भी इससे मत अलग जाइए, आप भी इस विकसित यात्रा में आइए, इस बजट का समर्थन कीजिए और आने वाले समय में हमें जब अर्थव्यवस्था तीसरे नंबर पर लेके जानी है तो जो भी तरीके, जो योजनाएं यहाँ लोगों को अच्छी तरीके से अर्थ व्यवस्था हो इसलिए काम कर रहे हैं, तो उसमें शामिल हो जाइए। इतना ही मैं रिक्वेस्ट कर दूंगी। कुंभ की मौत का जो आपने बताया था 800, उसको भी आप ऑथेंटिकेट करके दे दीजिएगा लिख के टेबल ऑफिस को, जो मौत 800 बताई थी ना कुंभ की डेथ टोल। हाँ बिल्कुल ठीक है। अखिलेश प्रसाद सिंह। महोदय बहुत धन्यवाद, आपने मुझे अपनी पार्टी के तरफ से बजट पर बोलने का मौका दिया, इसलिए मैं बहुत आपका धन्यवाद करता हूं। मेरे लिए खुशकिस्मती है कि आपके जैसा विद्वान आदमी चेयर पर बैठा है और मुझे बजट पर बोलने का मौका दिया। महोदय वित्त मंत्री जी का इस बार का जो बजट भाषण था उसको मीडिया में और सब जगह ऐसे पेश किया गया जैसे बिहार को बहुत बड़ी सौगात मिली। संजय झा जी मुस्कुरा रहे हैं उधर से, क्योंकि तो इस तरह के सौगात वो बहुत बार देख चुके हैं। मेरे लिए गौरव की बात है कि एक बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और देश के सरकार में अभी मंत्री के रूप में काम कर रहे आदरणीय जीतन राम मांझी जी भी इस सदन में मौजूद हैं और बिहार के दुख दर्द का मैं उनसे साझा करना चाहता हूं कि बिहार क्या था और किस तरह से सिस्टमेटिक नेग्लेक्ट बिहार हुआ है, उसकी चर्चा मैं यहां करना चाहता हूं आपके माध्यम से महोदय। 2000 में मैं बिहार विधानसभा का सदस्य था और उसी समय बिहार का बंटवारा हुआ था। रीऑर्गेनाइजेशन बिल पर जब बहस हो रहा था देश की संसद में, उस समय के तत्कालीन गृह मंत्री LK आडवाणी जी, जो अब मार्गदर्शक मंडल में बैठे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, उन्होंने बिहार के बंटवारे पर चर्चा करते हुए बिहार को हरियाणा और पंजाब बनाने की बात कही थी।
बिहार को 1,80,000 करोड़ का पैकेज देने का बात किया था। आज भी उस पैकेज का बिहार का लोग बाट जो रहा है कि वो पैकेज कहाँ गया। उसके बाद सिस्टमेटिक तरीके से जो कुछ हुआ बिहार के संदर्भ में, मैं उसकी चर्चा आपके सामने करना चाहता हूं। पिछले 2-3 साल से हम लोग लगातार वित्त मंत्री जी के 5 ट्रिलियन इकोनॉमी और 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की बात सुनते आ रहे हैं। हम सब लोगों की भी एक यही इच्छा है कि भारत एक विकसित राष्ट्र बने, जो सबसे जरूरी काम है। और वह आर्थिक विकास की दृष्टि से देश में जो रीजनल इम्बैलेंस है, देश में जो क्षेत्रीय असंतुलन की स्थिति है, उसको जब तक एड्रेस नहीं किया जाएगा तब तक, या कोई विजन उसका नहीं रखा जाएगा, तब तक ये विकसित राष्ट्र की श्रेणी में नहीं खड़ा हो सकता है। महोदय, पिछले 60 सालों में क्षेत्रीय असंतुलन की दृष्टि से बिहार की जो स्थिति हुई है वह अपने आप में बेहद चिंताजनक है। कहीं और का रिपोर्ट होता तो आप लोग भी उसको मानने से सीधे तौर पर इनकार कर देते, लेकिन यह तो प्रधानमंत्री जी की खुद की जो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल है उसी की रिपोर्ट के आंकड़े हैं, और मैं उसी से कोट करना चाहता हूं। 1960-61 में बिहार में पर कैपिटा इनकम नेशनल एवरेज का 70% हुआ करता था, लेकिन आज के डेट में बिहार का पर कैपिटा इनकम नेशनल एवरेज का लगभग 32% रह गया है। यानी अगर नेशनल एवरेज 100 रुपया है तो बिहार का पर कैपिटा इनकम केवल 32 रुपया है। इतना ही नहीं, 1960-61 में देश के कुल जीडीपी में बिहार का योगदान लगभग 8% था, जो आज मोदी जी के रिजिम में घट के 4% रह गया है। बिहार में निवेश और इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च की क्या स्थिति है, इसके लिए भी मैं कुछ स्पेसिफिक डेटा सदन में रखना चाहता हूं। सड़कों पर बिहार पर कैपिटा खर्च केवल 44 रुपया है, जबकि नेशनल एवरेज 117 रुपया है। इसी तरह से सिंचाई पर बिहार में पर कैपिटा खर्च केवल 104 रुपया है, जबकि नेशनल एवरेज 199 रुपया है। इसी तरह से नाबार्ड ने खुद अपने एक रिपोर्ट में स्वीकार किया है कि बिहार में बाकी देश के मुकाबले एग्रीकल्चरल लोन का जो डिसबर्समेंट है वो काफ़ी कम है। यानी देश की लगभग 9-10% आबादी वाला राज्य, वहाँ अगर आर्थिक विकास के सभी पैरामीटर पर इतना पीछे हैं, तो ऐसे में आप देश को विकसित राष्ट्र बनाने की बात कैसे कर सकते हैं, और कौन इस पर विश्वास कर सकता है। केवल यही नहीं, अगर नीति आयोग की भी रिपोर्ट आप पिछले तिमाही या पिछले 6 महीने का आप देख लें, तो जो 28 बड़े राज्य हैं देश में, उसमें प्रायः सभी मानकों पर, चाहे वहाँ स्वास्थ्य सेवा हो, शिक्षा व्यवस्था हो, औद्योगिकरण के मामले में प्रायः या तो 28वें स्थान पर और नहीं तो 27वें स्थान पर बिहार चला गया है। शर्म की बात। मैं इन आंकड़ों के आधार पर केवल इतना कहना चाहता हूं कि बिहार का विकास इस सरकार की प्राथमिकता में कहीं भी नहीं है। जबकि ठीक इसके उलट, जब से 2014 में मोदी जी की सरकार आई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, बिहार ने पहले आपको 32 सांसद दिया, उसके बाद आपको 39 सांसद 2019 में दिया, इस बार थोड़ा घटा है, इस बार आपको 30 सांसद दिया। लेकिन उसके बावजूद, एक तो मैंने बिहार के बंटवारे के समय का आपको बात बताई सर। 2015 में जब आदरणीय नीतीश जी अलग थे, उस समय भी किस तरह से प्रधानमंत्री जी ने बिहार की बोली लगाई थी, बिहार के लोग अच्छी तरह से जानते हैं। आप सब, कई बिहार के सांसद यहाँ भिन्न भिन्न दलों के बैठे हुए हैं।
10,000 करोड़, 20,000 करोड़, 50,000 करोड़ और 1,25,000 करोड़ अंत में घोषणा हुआ। ठीक दूसरे दिन बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश जी का इश्तहार अखबार में आता है और उस 1,25,000 करोड़ में केवल 17,000 करोड़ का नया पैकेज का घोषणा था। बाकी जो पुरानी योजनाएं थी उसी को पैकेज में घोषणा के रूप में घोषित किया गया था। बहुत सही गणित है। अरे भाई, आप अपना नौकरी बचाइए नित्या बाबू, लेकिन कुछ सही बात भी सुनना चाहिए, तभी जाके कुछ कर सकते हैं। मंत्री पहले भी थे बिहार के, हम लोग भी मंत्री थे, लेकिन उसमें लगता था, एक धमक थी, दिल्ली की सरकार में हनक थी, जो आज तो कोई जानता ही नहीं है कि कौन कौन मंत्री हैं। हम आपको साफ तौर पर कहना चाहते हैं और कोई ऐसी वैसी बात नहीं कहेंगे जिसमें सच्चाई नहीं हो। हाँ, बैठ जाइए, बैठिए ना नित्या बाबू, बैठ जाइए, बैठ जाइए। अरे लंबा हो गया, आप भी उसी 2000 की विधानसभा में थे। नहीं, उनका माइक इनका आई एम नॉट माइक इनका ऑन है। हाँ, तो उसके बाद दे दीजिएगा। कैन स्पीक, उनको नहीं बोल रहे, माइक इनका ऑन है। ये जो सिस्टमेटिक नेग्लेक्ट है, मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि इस बजट में बिहार के बारे में एक फिर घोषणा की गई कि वहाँ पर फूड प्रोसेसिंग का नेशनल इंस्टीट्यूट खोला जाएगा। बहुत अच्छी बात है, हम लोग इसका स्वागत करते हैं। और आप जहाँ से आते हैं वहाँ केले की बड़ी खेती होती है, क्वालिटी बनाना वहाँ बनता है, लेकिन मखाना आयोग तो बनेगा, बनाना आयोग कब बनेगा? वहीं आपके बगल में इतना बढ़िया लीची आता है, लीची आयोग भी बनवाइए, उसका भी ये हो। लेकिन जो सबसे जरूरी चीज है वह पर्याप्त संख्या में कोल्ड स्टोरेज की स्थापना। और पिछले साल से, पिछली सरकार से, उस समय भी पारस जी फूड प्रोसेसिंग के मिनिस्टर थे, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के भाई, अभी उनके सुपुत्र चिराग पासवान जी उसी विभाग के मंत्री हैं। लेकिन बिहार में दूसरे राज्यों की तुलना में कोल्ड स्टोरेज की क्या स्थिति है, इसके लिए भी मैं एक दो आंकड़ा आपको बताना चाहता हूं। शर्म से सिर झुकना चाहिए कि क्या बिहार के साथ हो रहा है। लोकसभा में 11 अगस्त 2023 को एक अनस्टार्ट क्वेश्चन के जवाब में कृषि मंत्रालय ने जो आंकड़ा दिया, 1% उसके अनुसार बिहार में आप भी जवाब दे, आपका नंबर आएगा तब आप कोल्ड जवाब स्टोरेज की संख्या है 313, जबकि अकेले गुजरात में 1000 से ज्यादा कोल्ड स्टोरेज है। शर्म करो। और उत्तर प्रदेश में कोल्ड स्टोरेज की संख्या लगभग 2500 है। अब एक तरफ तो आप लंबी लंबी घोषणा करते हैं, दूसरी तरफ जो जमीनी हकीकत है और उसमें जितना आप पैसा दे रहे हैं बिहार को, उसके लिए भी मैं एक आंकड़ा और आपको बता देना चाहता हूं। फूड प्रोसेसिंग मंत्रालय कोल्ड स्टोरेज की स्थापना के लिए राज्यों को जो आर्थिक मदद देता है, उसमें बिहार को 2021-22 में मिला 33 करोड़ रुपया, 2022-23 में मिला फिर से 33 करोड़ रुपया, और 2023-24 में यह राशि घट के हो गई 32 करोड़ रुपया। तो यह तो है आपके कथनी और करनी में फर्क, इसको समझना चाहिए। अब देखते हैं कि पहले जो घोषणाएं आप लोगों ने की है, आदरणीय रविशंकर जी प्रसाद जी जब आईटी मिनिस्टर थे तो उन्होंने बड़े जोर शोर से कहा था कि बिहार में बेंगलुरु और हैदराबाद की तरह आईटी पार्क स्थापित करेंगे और इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर खोले जाएंगे। 10 साल बीत गया, लेकिन मेरे ख्याल में एक कॉल सेंटर भी बिहार में स्थापित नहीं हुआ। अब चीनी मिल की बात कर लेते हैं। यहीं 1960, 61, 62 जब आदरणीय मांझी जी उस समय कांग्रेस पार्टी में काम करते थे, तो उसी बिहार में 27% चीनी बिहार नेशनल किटी में देने का काम करता था। और अभी डबल इंजन की जब सरकार है
तो अब वो घट के 2% से भी नीचे चली गई। प्रधानमंत्री जी एक बार मोतिहारी गए और चुनाव के समय में अभी जैसे बजट आया है, बिहार बिहार हो रहा है, बिहार में बाहर फिर से आ रहा है, तो उसी तरह से वहाँ एक सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अगली बार जब मैं आऊँगा इस बंद चीनी मिल के चिमनी से धुआं निकलता रहेगा और इसी चीनी मिल के चीनी से मैं आप लोगों के साथ बैठकर चाय पीऊँगा। आज भी वो चीनी मिल उसी स्थिति में है, कोई चीनी मिल खुला नहीं, कि कोई बंद चीनी मिल के चिमनी से धुआं निकल नहीं रहा है। तो ये स्थिति इसलिए मैं कह रहा हूं कि बिहार को एक सिस्टमेटिक नेग्लेक्ट करने की जो आपकी राजनीतिक साजिश है, केवल वोट लेना है वहां के लोगों का और फिर बिहार को पिछड़ेपन का शिकार बना के रखना है। और इसके पीछे भी एक बड़ा कारण मैं देखता हूं कि बिहार को सिस्टमेटिकली इसलिए नेग्लेक्ट किया जा रहा है कि वो जो बड़े उद्योग घराने हैं, बड़े उद्योग धंधे वाले लोग जो इस देश में हैं, उनके दबाव में आपकी सरकार काम करती है, आपकी सरकार नीतियां बनाती है और वो लोग चाहते हैं कि बिहार एक लेबर फैक्ट्री के रूप में पूरे देश में काम करे। बिहार के लोग उन बड़े कल कारखानों में बिहार से निकल के आके उन कारखानों में काम करें ताकि उनका उद्योग धंधा ठीक से चलता रहे। इस बार एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की भी घोषणा हुई, चुनाव का साल है, 6-8 महीना बाद है, लेकिन वहीं पताही एयरपोर्ट पूर्णिया का एयरपोर्ट है, भागलपुर का एयरपोर्ट है, पहले से जो काम करता था वो फंक्शनल नहीं हो पाया। एक और मेरे साथी हैं लोकसभा में काम करते हैं, वो भी लगे हुए हैं कि सोनपुर में एयरपोर्ट हो जाए, लेकिन उस पर कोई विचार नहीं किया जा रहा है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी जब से आपके साथ सरकार चला रहे हैं, लगातार एक बात इमोशनली वो बात करते रहे हैं कि बिहार एक लैंडलॉक्ड स्टेट है। बिहार में लगातार जो बाढ़ की समस्या है, जो सूखे की समस्या है, जब तक आप बिहार को स्पेशल स्टेटस का दर्जा नहीं देंगे तब तक बिहार लो इनकम स्टेट से मिडिल इनकम स्टेट के ग्रुप में नहीं आएगा, बिहार की आर्थिक बदहाली दूर नहीं होगी। लेकिन कभी भी आपकी सरकार उनकी बात को नहीं सुना और हम इस बात को फिर दोहराते हैं। पटना विश्वविद्यालय की मांग भी मुख्यमंत्री जी हमेशा पब्लिक मीटिंग में करते रहे, लेकिन उनकी भी एक नहीं सुनी गई। पटना विश्वविद्यालय जैसा लब्ध प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय जिससे हजारों अफसर निकले, हजारों डॉक्टर बड़े बड़े हुए, हजारों इंजीनियर हुए जिनका देश में कंट्रीब्यूशन है, लेकिन फिर उसको भी सेंट्रल विश्वविद्यालय का दर्जा नहीं मिला। बिहार के साथ इस तरह का उपेक्षा और अपमान लगातार, आपको इतना विद्वान कहा था इसीलिए आपका टाइम पहुंच ना तो 2 मिनट। हाँ वही कहने की तो देना चाहिए। खत्म करिए। बिहार जैसे गरीब स्टेट के पर इस तरह का राजनीति बंद होना चाहिए और बिहार में जहां नालंदा विश्वविद्यालय था, पूरे दुनिया भर से लोग वहां पढ़ने आते थे। देश की मेहनत आज ज्ञान की फैक्ट्री बिहार, मेहनत और ज्ञान, बुद्धिज्म वहाँ, जैनिज्म वहाँ, सिखिज्म वहाँ, सबका कल्चरल सेंटर रहा है और बिहार की उपेक्षा और अपमान आप ज़्यादा दिनों तक करेंगे तो लोग वहाँ के कम इनकम वाले लोग हो सकते हैं, गरीब हो सकते हैं, लेकिन पॉलिटिकली वो सजग स्टेट है, वो आने वाले चुनाव में आपको सीख देंगे, आपको कान पकड़ के बाहर करेंगे। इतना ही कह के मैं फिर से सभापति महोदय आपको हृदय से धन्यवाद करता हूं। हालांकि आपने बीच में घंटी बजा दी, लेकिन कोई बात नहीं, बिहार के साथ इस तरह का अत्याचार आप न तो करिए
और न सरकार को करने दीजिए, तभी जाकर इस बजट का कोई मतलब होगा। और इस बजट पर जब बजट आ रहा था उस दिन हम अपने एक सीनियर कलीग से बात कर रहे थे तो कि क्या किस तरह का बजट है, तो मेरे सीनियर कलीग ने कहा कि ये जो बजट है वो वोकल और लोकल लोगों के बीच में फंस गया। जो 2% लोग हैं जिनको 12 लाख का झुंझुना थमाया जा रहा है कि उसमें नहीं लगेगा, तो उनके लिए तो ठीक है, लेकिन 98% लोग, अरे राजा साहब 98% लोग कहाँ देते हैं इनकम टैक्स, तो ये हम लोग लोकल का भी ख्याल करिए। धन्यवाद। सुष्मिता देव जी। नहीं, आप ही ने कहा था, आदरणीय जी ने कहा था, जब आपने कह दिया तो मैं बता दे रहा हूं। 12 minutes. Thank you, Vice Chairman sir. धन्यवाद। Thank you, Vice Chairman sir. I would like to start by thanking my party for giving me the opportunity to speak on the budget for 25-26. I am honored for two reasons, sir. Is because I'm positioned very uniquely in this house. The first reason is I come from a state in the northeast. My vote is in Assam, but 50 MLAs from across Bengal have voted me into the Council of House, and I thank my leader Mamata Banerjee. The second and the most significant reason why I'm positioned uniquely in this house is because when I look to my left and see so many members of parliament who come from the northeastern states, they tend to remain silent on all the ailing issues that the 8 states of northeast face. I feel lucky that when I look on this side of the house, when I look at the opposition, I think apart from Mr. Bhuya, I am the only other member of parliament in the opposition. That, sir, the silence on that side is killing. Not a word on what happened on Manipur, not a word on what's happening in Assam and the NRC, not a word on the Nagaland Accord, not a single word of sympathy, not a single word of apathy. Sir, I would like to say that this budget is an insensitive budget. Insensitive to the people of the country and more insensitive in particular to the northeast of India. I heard Prime Minister Modi say after the budget that the sop that has been given to the middle class is going to have a multiplier effect. But when it comes to the northeast, all the things that ail this nation, whether it is price rise, whether it's unemployment, whether it is lack of investment, the only multiplying effect I know is all these problems multiply as we go towards the northeastern states. So I would like to say that it has consistently been the vision of the government of India that they have given the states of northeast special status and special focus. Today I recall with a lot of respect and great tribute our former Prime Minister Dr. Manmohan Singh. It was his vision when he in 1991 said that if we want the northeastern states to develop, then we have to look east. What he meant is that northeast was the gateway to Southeast and East Asia, a landlocked region of India that if it had to trade, if it had to create employment, if it had to attract investment, then we have to look east. Whatever efforts were made by Dr. Manmohan Singh's government over decades has been undone by Prime Minister Modi by one single incident in one state, which is the state of Manipur. Shame. Sir, Prime Minister Modi changed look east policy to act east policy. But today, till the gateway to Southeast Asia, which is the state of Manipur, continues to burn, act east policy is destined to fail, sir. It is destined to fail. And I would like to say that today, our security concerns with China, the political situation in Myanmar, the political situation in Bangladesh, I can tell you
with great surety that the prospects of the economy of the northeastern states growing is rather dismal. I heard the Honorable Finance Minister talk about Bihar. I heard the Honorable Prime Minister talk about the middle class with the Delhi elections which were due. But I never once heard the name of Manipur from the Finance Minister, where 60,000 people have been displaced, where hundreds of people have been murdered and butchered and women raped and children who are out of schools. Thousands have fled from Manipur to different parts of India, sir. Whether it is Calcutta, whether it is Assam, whether it is Delhi. Today, sir, what the Finance Minister should have said is not just Bihar, but she should have promised a comprehensive package for the rehabilitation of Manipur, which she did not. There should have been a comprehensive package, because what happens to Manipur impacts all the northeastern states. Today we cannot accept just the resignation of the Chief Minister as a solution to Manipur. And if the Manipur tapes are investigated, we will see and we will find out, and we want to know if it was state-sponsored mayhem that was created in Manipur, sir. Sir, I come to the cuts in the budget. The non-lapsable central pool for funds, pool of resources has been slashed by 30%. The Northeast Special Infrastructure Development Schemes have been slashed by 39%. Special development packages slashed by 28.8%. PM Divine Development Initiative for Northeast slashed by 36%. Sir, grants to autonomous councils slashed by 96.6%. Ministry of Home Affairs decreased by 45.6%, and I can go on and on and on and on and on. When is this lip service to the northeastern states going to stop? I want to know from the Finance Minister. Madam tells us that now it is not Achhe Din. Nobody knows about Achhe Din, what happened to it. Then we were all hoping for New India. Nobody knows what happened to New India. Now she says our new destination is Viksit Bharat. 2047. I don't think I will be alive in this parliament to see what happens in 2047. Sir, I want to raise an important issue about my own state, the state of Assam. I thank the government for giving us a urea plant. I have no problem with it. But this government has systematically destroyed the public sector enterprises in the state of Assam. 2 paper mills owned by the Hindustan Corporation has been shut down. We heard about Advantage Assam from Honorable Member of Parliament who just spoke before me, and I want to say that more than 50% of the investment that Advantage Assam has attracted are from public sector undertakings and not private investments, sir. Today, we had heard that all the capitals of the northeastern states will be smart cities. Let me give just one example, and Kalita ji is here. One flash flood in Guwahati, and an 8-year-old boy falls from the scooter and gets drowned in the current of water. A flash flood, sir, in Guwahati. I want to say where the FM, the Finance Minister, talks about Heal in India and medical tourism. For us in Northeast, medical tourism is having to go for small surgeries, for minimal treatment to Chennai, Kolkata and Delhi. That is medical tourism for us in Northeast. Today you talk about Udan. Sir, I'm pained to say, I'm repeatedly saying in this parliament that I come from a remote area in Assam called Silchar. Not a single route is running from Silchar airport which gives Udan, which is recognized by Udan. I ask myself why. Sir, सबका साथ, सबका विकास बहुत बड़ा स्लोगन है, और मैं ये कहना चाहती हूँ, it is a huge slogan, but this government has to realize that without
strong states, you cannot have a strong center, sir. When is this government going to realize? When is this government going to realize? And I am pained to say that the finance minister says she will start an index to see that which are the states which are friendly to private investors. I ask her that एक और indicator उसमें लगा दीजिए वित्त मंत्री जी कि the states you deprive, the states you deny, and despite that, the states that thrive like Bengal, add that indicator and you will see that Bengal is ready. That you will see that Mamata Banerjee has succeeded in Bengal not because of Modi government but despite the Modi government. और मैं ये कहती हूँ असम के लिए भी एक इंडेक्स करिए कि असम में जो इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं सर, असम में जो इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं उसके लिए एक नया इंडिकेटर बनाइए सर। उस इंडिकेटर में हमें ये दिखना चाहिए कि असम में जो इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं, हाउ मेनी इन्वेस्टमेंट्स at the back of how many investments do we have the BJP political leaders money? Today whether it is schools, today whether it is hotels, BJP के कितने नेता है इस इंडेक्स में जिनका पैसा आज आसाम में लग रहा है सर, इसके लिए भी एक इंडेक्स होना चाहिए। आसाम शायद सबसे आगे रहेगा इसके लिए। सभापति महोदय, I hope that as parliamentarians, we go beyond the headlines and look at the fine print to see that in effect, this is an insensitive budget that does not talk about unemployment, that does not talk about price lies, that does not address the ailing issues, the burning issues of this country, and it is an absolute and total neglect of the northeastern states and Bengal, and unless you rectify your ways, you will be routed. You will be routed from northeast and you will be routed from Bengal. Because sir, let me tell you sir, let me submit that today people suffering and people's voice in a democracy is the loudest voice. And I can tell you that today Assam has got a urea plant, and the one single reason is Assam is headed for election, and Mr. Biren Singh has been asked to resign only because the entire tribal community of India has moved away from the Bharatiya Janata Party. With those words, I once again thank the party for giving me this opportunity. Thank you. Mr. P. Wilson. Thank you, Vice Chairman, sir. Sir, I wanted 5 more minutes, and you should not be like a finance minister. Give me more. Be gracious enough to give 5 more minutes. Speech, when you give next speech, take another 5 minutes in that speech, not in this one. No, I have only 4 minutes. Sir, the budget is not a budget for the people of this country. It is a budget of missed opportunities, misaligned priorities, and economic stagnation. In a nutshell, this is not a union budget. It's a coalition budget aimed at political appeasement rather than national development. This doesn't reflect inclusive growth. Sir, I will list out how Tamil Nadu is ignored in this budget. Tamil Nadu is the second largest contributor to GDP, third in GST, fourth in direct tax. However, this year, it is ranked 15th in railway budget allocation. This year, the allocation is rupees 6,626 crores, which is just 2.5% of the national railway budget. Sir, states like Madhya Pradesh have been allocated 14,745 crores, and Uttar Pradesh is 19,858 crores. Sir, for every 1 rupee which Tamil Nadu gives to Union Kitty, it gets only rupees 26 paise last year. Now, this has still gone down. Sir, our request to approve metro rail projects in Tamil Nadu, especially in Madurai and Coimbatore, is neglected. No new high-speed rail lane is approved. No new expressway is announced. Nothing on FAME bus scheme in this budget.
Sir, there is no allocation for Chennai Metro Rail project. Other states like UP has metro available in 5 cities, Maharashtra in 4 cities, but we are not getting enough funds even for one metro project which is in Chennai. Sir, Coimbator's AIMS project is totally ignored. The Madurai AIMS, inaugurated with fanfare by the Honorable Home Minister in 2019, is still moving in a snail's pace. It looks like the first batch of students will graduate from a temporary building without even seeing the Madurai AIMS. Sir, in December 2023, when Cyclone Mishang and flood hit Chennai and other coastal districts, our government demanded rupees 37,000 crores for damages and compensation. Sir, but unfortunately, Union government gave only a paltry sum of rupees 276 crores. However, when cyclone hit Gujarat, the Union government immediately released 5,000 crores when the Honorable Prime Minister visited. Sir, no major new national highway expansion or railway corridor projects were sanctioned in Tamil Nadu. Higher allocations were made for Gujarat and UP under the Bharatmala and railway modernization. Sir, there is reduction in rural development fund which impacts Tamil Nadu. This reduction will affect crucial rural infrastructure and poverty alleviation programs in Tamil Nadu. Sir, there is insufficient allocation for smart cities and urban development. In cities like Chennai, Coimbatore and Madurai received no specific urban development allocation despite their crucial role in the smart cities mission. Sir, the Chennai-Kanyakumari Industrial Corridor project was not given additional funding despite repeated state requests, which will now slow down the industrial and manufacturing sector growth in Tamil Nadu. Sir, there is a disproportionate tax devolution and GST compensation to Tamil Nadu tax share. There is 10.5% increase in devolution to other states, but no specific relief or GST compensation is given for Tamil Nadu. The state has been demanding higher GST compensation due to the revenue lost post-GST implementation. Sir, there is no special package for fishermen affected by Sri Lankan territorial issues and even for the climatic change. A blue economy fund to support the fishing industry is absent in the budget, which was expected. Sir, there is no increase in funds for disaster management for Tamil Nadu. Tamil Nadu is prone to floods and cyclones. Expected higher allocation for disaster resilience. The disaster management grant was increased by only 5%, which may not be sufficient during disaster time to meet any crisis. Sir, there is a neglect of Tamil Nadu renewable energy push. The budget focused more on nuclear energy, but Tamil Nadu, a leader in wind and solar energy, was not allocated additional funds for its renewable projects. Sir, we expect higher central grants for Tamil Nadu offshore wind energy projects. Sir, there is no special status or financial support for Tamil Nadu, which has demanded a special financial package considering its high revenue contribution to the center. Sir, the impact is 5 minutes, sir. Not at all. Please, कृपया समाप्त करें. Another 5 minutes, sir, or 2 minutes? No, sir. बिल्कुल नहीं. आप कृपया समाप्त करें. Sir, I'll complete, sir. I'll complete, sir. The state continues to less per capita funding compared to many northern states. In Union Budget 2025, the several sectors experienced a decrease in allocation compared to the previous fiscal year. There are 10. समाप्त करें माननीय सदस्य. Sir. धन्यवाद. श्री एस निरंजन रेड्डी. Thank you, Vice Chairman, sir. Sir, for me, the budget presents a mixed bag. So it has a continuity and commitment. It ticks off the macro boxes well, sir. It has a proper fiscal glide path. It is showing the way towards fiscal consolidation. The capital expenditure could have been little more, but it has been maintained constant because last year the utilization was not complete. Sir, overall, it seems like a sound budget on macro factors, but the budget also has its challenges, sir. If I can take a neutral point of view, sir, the country faces global headwinds in terms of economic prospects. There is a slowdown of global growth. There is a slowdown of global trade. So the government and the finance minister has to confront these challenges. Sir, but when I look at the government trying to stick to fiscal discipline, this is my starting point. I would like to compliment the finance minister and the government.
Maybe, sir, it shows some light in relation to the recent Niti Aayog report about some of the states needing to learn something from the center trying to stick to this fiscal discipline. Sir, I may have a few differences with the Honorable Finance Minister with regard to the allocation, but I would like to start by complimenting the government that they have remained fiscally responsible. Sir, the biggest splash the budget makes is in terms of the tax relief that is granted to the middle classes. Sir, all of us welcome it because these are the classes that have been contributing to the direct taxes, which constitute the largest chunk of the revenue that the government gets, sir. But 1 lakh crore rupees is a substantive money, sir. Sir, I would want to buy into the government and the Honorable Finance Minister's belief that this will spur the consumption growth leading to the money funneling back into the economy. But, sir, I think the government would have to be mindful. So 1 lakh crores per year is substantive amount, sir. So the total education budget estimate for the next year is 1,28,000 crores. Sir, for the health, it is 99,858 crores. Sir, for Ministry of Electronics and Information Technology, the total budget estimate, sir, is 26,026 crores. Sir, if I were to notionally look at this 1 lakh crores being divided amongst the Education, Health and Ministry of Electronics and Information Technology, it would have meant, sir, if there was no tax cut, I'm just giving a hypothetical, I'm not suggesting there should not be a tax cut, it would have meant 33,000 crores more for education. 1/3 of that amount would have meant that the education sector would have got a 25% jump on the budget estimates that the education department has. 33,000 crores for health, sir, for 1 year would have been a 33% growth of the amounts that would be allotted. Sir, for Ministry of Electronics and Information Technology, which I believe is going to be the engine of driving India's growth tomorrow, sir, the growth would have been 130%. Sir, if we just pause for a minute and look at if this 1 lakh crores could hypothetically be divided amongst these three, sir, the growth and the impetus in each of these sectors would have would have been stupendous. But, sir, as I mentioned, I would want to be optimistic. Let me buy into the government's vision. Let me buy into the Honorable Minister's vision, Finance Minister's vision, that this will spur consumption growth. I am slightly skeptical, sir, but even if it were to translate into a 50% reality, it would still be worth it because a large section that is contributing to Indian economy is felt rewarded by the government. That sections will feel that the government is listening to them. But it is time that most of that money, and I would appeal to those people who are getting those tax monies to please plow it back into Indian economy. Don't splurge it on traveling abroad, please travel in India. Don't splurge it on spending on foreign goods, please spend it on goods that are manufactured in India. Government made an overture to you. If you respond and if you were to give government a helping hand, you will get more reliefs later. If this does not work for the government, then the tax-paying class needs to understand that they are not repaying the government's faith and the government may not want to extend these kind of benefits. Let us please note this as a warning for ourselves. Sir, because I have touched upon three areas that could have immensely benefited if the amounts were to be contributed to them, I will touch upon only these three areas, sir, as my theme on the three suggestions that I want to make. Sir, education. Sir, one area within the limited allocation that is made, I want the government to really speed up this process, but that is sadly lacking, sir, is the internet connectivity to schools. Sir, the UDISC report of 23-24, which is of the government of India, shows, sir, that only 57% of Indian schools have functional computers, sir. And only 53% of the schools have internet access. Sir, if we have to take digital education, and that is the easiest way, sir, to scale and give education to the large masses, I would hope the government can get these figures to reach 100% as soon as possible. Sir, on health, two issues that I wanted to suggest to the government, sir. One is
we need to have an artificial intelligence rollout in terms of providing healthcare benefits for the people, because that will really scale up this whole process. Sir, I also find that one looming threat that we face, that is antimicrobial resistance. The government has been considerate. It has increased the budget allocation from 52 crores to 54 crores. But I want the ministry to note that the utilization has come down from 38 crores in 22-23 to 17 crores in 23-24. So the loss, sir, in notional GDP terms is going to be very high for India. This is a looming crisis. Everybody is forgetting about it because this does not immediately shriek for attention, but it is one of the largest crises that will confront India in the next 2 to 3 years. I want the ministries to give it full attention, sir. So then last of the topics I wanted to touch upon is Ministry of Electronics and Information Technology. Sir, as I said in the earlier part of my speech, so this ministry is going to be the greatest engine driver of growth, sir, because this ministry will work across sectors. It will work through education, it will work through health, it will work through every sector that is possible. Sir, the allocations are very minimal. So the centers of excellence, India can't have one center of excellence, sir, for one discipline in one part of the country. I think it is time, sir, the centers of excellence we need to have in every zone, if not in every state. I would request the government to at least make provisioning for next year onwards that these centers of excellence are given to each of the states, sir. So the last of the topics, since I have another 30 seconds, sir, is urban development. I would compliment the government, sir, for having this urban challenge fund, and 10,000 crores is allotted. Sir, the only recommendation and suggestion I have for the government, sir, is please use, if possible, 80% or 90% of this fund for urban planning. States are not doing urban planning. All our cities are becoming cesspools. 40% of Indian population is going to be living in cities by 2035 or 2040, and no urban planning goes into the growth of cities. We don't have new greenfield cities. Please plan 5 or 10 new greenfield cities. Make provision out of this urban fund. And with that, sir, I would want to wish the government the best. As I said, I don't think it's a great budget, but it's a good budget. I'm willing to live with it, but I will feel it is great if they actually implement these schemes. Thank you, sir. रेड्डी साहब, माननीय प्रोफेसर राम गोपाल जी यादव। धन्यवाद श्रीमान मैं केवल 4-5 मिनट बोलूँगा, आपको घंटी बजाने का अवसर नहीं दूँ। आपके लिए घंटी क्यों बजाएंगे? सर, इस बजट में जो सबसे महत्वपूर्ण सेक्टर हैं देश की तरक्की के लिए, विकसित भारत के लिए, जैसे एग्रीकल्चर है, एजुकेशन, हेल्थ सेक्टर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, पिछले साल का जो बजट था उसकी तुलना में इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ जीडीपी इन चारों सेक्टर में इस बार कम हुआ है पिछले साल की तुलना में। एग्रीकल्चर में पिछली वर्ष ये जो था 2.7%, अब की रह गया 2.5%। टोटल में 10-5 लाख करोड़ बढ़ जाए उससे कुछ नहीं, लेकिन कंपैरिजन तो हम पिछले साल के जीडीपी के हिसाब से ही करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर जो बहुत ज़रूरी है उसमें पिछली बार था 3.4%, अब की हाथ थी 3.1%। हेल्थ में तो 2% भी नहीं है, 1.97%, जबकि लक्ष्य रखा गया था कि 2.5% कम से कम हो जाए। अगर 2.5% भी हो जाए तो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है वो बहुत कम हो सकता है। अभी लगभग आंकड़े कुछ कहते हों, लेकिन वास्तविकता यह है कि 60% लोग ऐसे हैं जिनको अपनी जेब से इलाज का पैसा देना पड़ता है। तो केवल इसमें अगर ये बहुत आवश्यक है, तमाम लोग, एक रिपोर्ट आई थी जब मैं 2-3 साल पहले कुछ लोगों को बुलाया था हेल्थ कमेटी में, एक्सपर्ट्स को, तो उन्होंने कहा कि 4-5%
हर साल केवल बीमारी के इलाज पर पैसा खर्च करने की वजह से बिलो पॉवर्टी लाइन लोग चले जाते हैं। एजुकेशन में 6% का लक्ष्य था, 20 में ही नई एजुकेशन पॉलिसी की 4 समथिंग है अभी %। जो सबसे महत्वपूर्ण सेक्टर हैं उनको अगर नज़रअंदाज किया जाएगा बजट में तो विकसित भारत नहीं बन सकता है, बात कितनी भी करें। एक का मुझे बहुत चिंता है एक बात की, रेपो रेट कम किया है, इंटरेस्ट रेट कम कर देंगे, इसका दुष्परिणाम क्या होगा? यहाँ बैठे हुए लोगों ने, मांझी जी कैलकुलेट करिए, अगर हम 50 लाख का कर्ज लें बैंक से तो पिछले बार की तुलना में जो रेपो रेट कम हुआ है उसमें केवल हमें 1950 रुपये का लाभ, 1950 का 50 लाख रुपया कर्ज लेने पर। लेकिन बैंकों का क्या हाल होगा? बैंकों से तो हजारों करोड़ रुपया, लाखों करोड़ रुपया लेते हैं लोग। बैंकों का स्वास्थ्य बहुत खराब होगा। दूसरे, फिक्स डिपॉजिट में कोई जमा नहीं करना चाहेगा, बैंकों में पैसा नहीं जाएगा, बैंक कमजोर होती जाएंगी। आशंका लोगों को, अर्थशास्त्रियों को यह है कि अगर यही स्थिति रही तो बैंकें डूबने लग सकती हैं। और जो लोगों ने अपना पैसा जमा किया है, एक एक पैसा, आम लोगों ने, बड़े लोगों का तो राइट ऑफ भी हो जाता है, जो कर्ज राइट ऑफ हो जाता है, लेकिन जो लोगों ने जमा किया है वो बैंक का तो यह, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की यह है कि आपका चाहे जितना पैसा जमा हो, अगर बैंक डूब जाए तो 1 लाख रुपया देंगे, चाहे 100 करोड़ आपका जमा हो, चाहे 200 करोड़ जमा हो, चाहे 50 लाख जमा हो, 1 लाख देंगे केवल। तो ये बहुत स्थिति ठीक नहीं है। और एक चीज़ में आपका सर ध्यान आकर्षित करना, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, ये जो NCLT है, इससे बड़ा भ्रष्टाचार हिंदुस्तान के इतिहास में कभी नहीं हुआ जो लगातार हो रहा है। ये बैंकों को नुकसान पहुंचा रहा है, कुछ व्यक्तियों को लाभ पहुंचा रहा है। जैसे ही NPO होता है, किसी व्यक्ति की प्रॉपर्टी कर्ज है उस पर 50,000 करोड़, प्रॉपर्टी ले ली 2 लाख करोड़ की, और नीलाम केवल की उसे 40,000 करोड़ में, तो 10,000 करोड़ तो हेयर कट में चला गया। बैंक का लॉस, बैंक का आप लेना देना, बैंक का कुछ नहीं। और जो 2 लाख करोड़ की जमीन थी या प्रॉपर्टी थी किसी की, वो किसी व्यक्ति विशेष को केवल 40,000 करोड़ में मिल गई। ये वित्त मंत्री और वित्त मंत्रालय के नाक के नीचे ये हो रहा है। मैं चाहूँगा आपके माध्यम से कि इस मामले की जांच करें कि किन किन लोगों ने प्रॉपर्टी NCLT के माध्यम से खरीदी है, एक्चुअल उसकी क्या वैल्यू रही होगी, और हेयर कट के द्वारा बैंकों को कितना नुकसान पहुंचाया गया है। इस करप्शन पर रोक लगाने की ज़रूरत है। मैं पर्सनली कभी वित्त मंत्री के टाइम देंगी तो मैं कुछ ऐसे एग्जाम्पल उन्हें देंगे कि उन्हें आश्चर्य होगा कि ये क्या हो रहा है। तो मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहता हूँ, अपनी बात यही कह के ख़त्म करना चाहता हूँ कि जो महत्वपूर्ण सेक्टर हैं उनका एलोकेशन बढ़ाया जाएगा, देश को विकसित करना है, और ये भ्रष्टाचार को रोका जाए जो NCLT के जरिए लगातार किया जा रहा है, कुछ लोगों को लाभ पहुंचा रहा है। थैंक यू सर। धन्यवाद प्रोफेसर साहब। श्रीमती सुलता देव, श्रीमती सुलता देव, 3 मिनट्स। जय श्री जगन्नाथ। थैंक यू वाइस चेयरमैन सर। फाइनेंस मिनिस्टर ने बहुत सारी आंकड़ाएं दिए हैं, मैं भी कुछ आंकड़ा देना चाहती हूँ। ग्लोबल पीस इंडेक्स 116 इंडिया, ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स 126, जेंडर गैप इंडेक्स 129, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 105, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 134, पासपोर्ट इंडेक्स 84, जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स 129, करप्शन परसेप्शन 93, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 159, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स 112। ये है विकसित भारत का छवि। कौन सा अमृतकाल? सुनने में जो हमको गुलाबी चित्र सुनाया जा रहा है वो सुनने में अच्छा है, मगर कौन सा अमृतकाल आ गया? ऐसा अमृतकाल आ गया जहां महंगाई की नाम की जहर खाकर गरीब अपना पेट भर रहा है।
मगर फिर भी अमृतकाल बोलते जुबान नहीं थकती। ये अमृतकाल आप लोगों को और बिस्कुट मीडिया को मुबारक हो। जीडीपी के ऊपर आते हैं, मान्यवर बोले थे जीडीपी को ऊपर लाएंगे। जीडीपी ऊपर आ रहा है, कौन सा जीडीपी? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट नहीं, ये कौन सा जीडीपी आ रहा है? ना गैस, डीजल और पेट्रोल का जीडीपी ऊपर 100 में आ रहा है। ये जीडीपी की बात कर रहे थे। सबका साथ सबका विकास, कहाँ गया सबका साथ सबका विकास? यहाँ पर पूंजीपतियों का साथ और गरीबों का विनाश ही विनाश हो रहा है। ये है आज का सबका साथ सबका विकास। आपके का माननीय प्रधानमंत्री ने जब ओडिशा के बारे में बोल रहे थे राष्ट्रपति के अभिभाषण के थैंक यू गिविंग में, तो बोले आपके माने उनके कालखंड में पारादीप हरिदासपुर रेलवे लाइन के बारे में बोले कंप्लीट हो गया, मगर वही कालखंड में खोर्धा बलांगीर कितना टाइम लगेगा? पारादीप हरिदासपुर मिनरल्स लेने के लिए कंप्लीट हो गया, मगर खोर्धा बलांगीर मिनरल्स है नहीं ना, लोगों को लेने के लिए है, इसलिए वो कंप्लीट नहीं हो रहा। ये बजट में कैसा बजट हुआ? बस बिहार 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 सुनाई दे रहा था। हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर ये बजट एक पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट बन चुका है। ये बजट ओडिशा के लिए कुछ इतना है ही नहीं, क्योंकि जहां इलेक्शन होता है बजट वही दिया जाता है, बार बार वही हो रहा है। ये फेडरल स्ट्रक्चर को मारने की साजिश है। ओडिशा फोकस स्टाटस डिमांड कर रही है, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस डिमांड कर रही है, स्पेशल जो हमारा डिजास्टर फंड डिमांड कर रहे हैं, मगर नहीं मिला। ऐसा ओडिशा ऐसा नहीं होना चाहिए ना। और देखा जाए तो फिर जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के बारे में बात किया जा रहा है, कहाँ है, कैसे होगा? ये भी एक गुलाबी चित्र है। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी कैसे हो सकता है, जबकि $1 के चलते आज रुपया सेंचुरी मारने के कगार पर खड़ा है। कैसे एक 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं? कैसे होगा ये 5 ट्रिलियन इकोनॉमी? फिर भी देखिए, फिर भी जो बजट उपस्थापित हुआ यहाँ, उसमें एग्रीकल्चर, एजुकेशन, रूरल डेवलपमेंट, हेल्थ, सोशल वेलफेयर बजट में घटती गई है। टेलीकॉम, रेलवे, बैंकिंग में नेशनल एवरेज से ओडिशा बहुत कम है। अगर ओडिशा डिमांड भी कर रहा है, 20 सांसद भी दिया है, मगर फिर भी अनदेखा किया जा रहा है। मगर ओडिशा को जगह देखा जाए नेशनल एवरेज, तो एवरेज पड़ोसी स्टेट से भी ओडिशा में कम है। अभी डिक्लाइन कर रहा है रेलवे बजट, जो पिछले बार से अब का, पिछले बार 2.62 था, इस बार 2.55 लाख करोड़ है। आईटी एंड टेलीकॉम बजट फ्रॉम पिछले साल से 1.16 था, इस बार 95.298 करोड़ से। ऐसे कैसे चलेगा? मैं इसलिए बोल रही हूँ, ये कहाँ का विकास हो रहा है? ओडिशा में जब हम लोग बोलते हैं कि इंटरनेट नहीं है, बैंक फैसिलिटीज नहीं है, रेलवे कनेक्टिविटी सब जगह पे नहीं है, कहाँ जा रहा है? मैं इसीलिए बोल रही हूँ, ये जो सारे बनाया हम कंक्लूड कर रहा हूँ एक आधा मिनट के अंदर। एक बात है, हमारे ओडिशा में एक गाना अभी बहुत ट्रेंड में है, बहुत वायरल है, सुना के चिन्ह लू गरीब, सुना के चिन्ह लू, बाना के चिन्ह लू गरीब, मनोज चिन्ह लू नहीं। आज ये गवर्नमेंट मनीष नहीं चिन्ह रहा है। थैंक यू सो मच। जय श्री जी के वासन। Sir, I stand here to support this budget on behalf of my party, Tamil Manila Congress, Mupanar, sir. Sir, this budget, no doubt, drives to push Vikasit Bharat 2047. The proposed measures takes important sectors, poor youth, farmers, and women, sir. Sir, no doubt, sir, the middle class provides strength for India's growth, and I would appreciate the finance minister for giving this very important budget. I would also say this is the most pro-middle class budget in India's history, sir. By raising the nil tax slab of income tax payable from 2.5 lakh in 2014 to 5 lakh in 2019 and 7 lakh in 2023. It is now, sir, being raised to 12 lakhs in 25-26. That means, as a result of about 1 lakh crore in direct could be foregone, sir.
I'm very happy, sir, that India's middle class could use this extra savings for driving their aspirations and quality of life, which is the need of the hour in the country today, which the finance minister has reflected in her budget, sir. Honorable Prime Minister has always has a special focus on Tamil Nadu, be it direct or indirect, sir. As recommended by 15th Finance Commission, Tamil Nadu's share of central taxes is 4.079%. The amount to be received by the state has been increased from 491.88 crores in the revised union budget estimates. It was only 5873.76 crores in the initial estimate, sir. Thanks to the Honorable Finance Minister. Sir, an outlay of 1.5 lakh crores is proposed for 50-year interest-free loans to states for capital expenditure and investments for reforms. Besides, incentives to boost local manufacturing in areas like mobile phone, electric vehicles, textiles, etc., sir. Tamil Nadu, sir, accounts for 40% of India's textile production, with Tirupur, Coimbatore, Erode, and Karur major centers, sir. The new outlay would further boost Tamil Nadu industries. A 6-year mission has been proposed for Atmanirbhar Bharat in pulses. It will definitely focus on improving productivity, domestic pulse production, assuring price for farmers, and climate-resilient seeds. This effort, sir, will enhance cotton and pulses production, will benefit Tamil Nadu farmers, especially in Madurai, Virudhunagar, and Coimbatore regions, sir. Sir, Kisan credit card facility, short-term loans, 7.7 crore farmers, fishermen, dairy farmers will be helped, sir. I am sure, sir, lakhs and lakhs of farmers will be helped in Tamil Nadu. At the same time, sir, Kaveri water is the need of the hour for us, sir. I would only request the central government, sir, that the Kaveri implementation, Kaveri board should be given proper importance. The award should be given to Tamil Nadu so that lakhs and lakhs of our Delta region farmers will be helped, sir, especially Tanjavur. Sir, KCC loans would be increased from 3 lakhs to 5 lakhs under the modified interest subvention scheme will help us, sir. The Swadesh Darshan 2.0 and PM's Vishwakarma Yojana could massively boost tourism in Madurai, Mahabalipuram and Kanyakumari, sir. 6,626 crores have been allotted for Tamil Nadu railway projects, up from 4% last year. Average outlay between 2009 and 2014 for the state was only 879 crores. Current allocation to Tamil Nadu, sir, is 8 times, 800% higher, and could support track doubling, new lines, and station development, sir. I thank the Minister for this concern, sir. To conclude, sir, I would like to say that this budget has given a powerful message for the country, for its future progress. People of the nation trust the government under the Honorable Prime Minister. Recent Delhi Assembly election results is the outstanding example for the success of the union budget. Thank you, sir. धन्यवाद वासन साहब. श्री शंभू शरण पटेल. धन्यवाद उपसभापति महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने का मौका दिया है, इसके लिए मैं आपका हृदय से आभारी हूं, आपका आभार व्यक्त करता हूं। महोदय, मैं पूरे बिहार के 14 करोड़ जनता की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी को के नेतृत्व वाली सरकार के तीसरे कार्यकाल के उनके प्रथम आम बजट के लिए धन्यवाद देता हूं, साधुवाद देता हूं कि आपने बिहार के 14 करोड़ जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने हेतु इस
आम बजट में बहुत से प्रावधान किए हैं, एक्स्ट्रा पैकेज दिया है। इसके लिए आपको और आप हमारी वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को साधुवाद और धन्यवाद देता हूं। महोदय, कुछ महीने पहले बिहार के अति पिछड़ों के मसीहा, अति पिछड़ों के लाल, गुदरी के लाल, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय कर्पूरी ठाकुर जी को प्रधानमंत्री जी ने भारत रत्न देने का काम किया है। इसके लिए मैं पूरे अति पिछड़ा और पिछड़ा समाज की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। महोदय, मैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी, उनके वित्त राज्य मंत्री, उनके अधिकारियों को भी हृदय से धन्यवाद देता हूं कि आपने 140 करोड़ भारतीयों के आकांक्षाओं को पूर्ण करने एवं मध्यम वर्ग को पूर्ण राहत देने, समाज के सभी वर्गों की रक्षा करने एवं भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने एवं सशक्त, समावेशी, सर्वस्पर्शी और राष्ट्र प्रथम की भावनाओं से ओतप्रोत बजट जो है इस सदन में पेश किया है। महोदय, अभी कुछ देर पहले मैं सुन रहा था, हमारे कांग्रेस के बड़े भाई, कांग्रेस के सांसद हैं जो पूर्व में केंद्र में मंत्री भी रहे हैं, अखिलेश जी, वो कह रहे थे, अभी सदन में नहीं है, वो कह रहे थे कि बिहार में इस तरह माननीय सदस्य वो सदन में नहीं है, सदन के में नहीं है सर। सदन का नियम ये है सर कि जो वक्ता बोले उसको कम से कम उसके बाद में जो दूसरा वक्ता बोले तब तक उसको सदन में रहना चाहिए, ये संसदीय परंपराओं में है। आप बात करिए। जी जी बोलिए। ठीक है सभापति, ठीक है उपसभापति महोदय। मैं बिहार जैसे आकांक्षी राज्य से आता हूं महोदय। 2005 के पहले बिहार में 50 वर्ष, लगभग 50 वर्षों तक यूपीए की सरकार ने वहां शासन किया, जिसमें कांग्रेस ने सबसे अधिक शासन किया, और 90 से 2005 के दशक में आरजेडी का शासनकाल रहा। उसमें कांग्रेस और कम्युनिस्ट जो है साथ मिलकर बिहार में सरकार चलाती थी महोदय। उस कालखंड को, हम तो बहुत छोटे थे, लेकिन उस कालखंड को जब हमारे घर के बुजुर्ग, जब हमारे घर के लोग बताते हैं तो सुन के रूह कांप जाता है महोदय। वहाँ उस समय जो हाईकोर्ट को भी ये बोलना पड़ा था कि बिहार में जो है ये शासन नहीं, यहाँ जंगल राज है, और उस जंगल राज के पुरोधा कांग्रेस और आरजेडी वाले हम लोगों को, भारतीय जनता पार्टी वाले को नसीहत देने का काम करते हैं महोदय। 2005 के पहले पूरा बिहार का 3800 का 38 जिला लगभग जो है ये उग्रवाद, नक्सलवाद, जातिवाद, जातीय नरसंहार और क्या कहते हैं संगठित अपराध के लिए जाना जाता था महोदय। और 2005 के बाद जब भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार बिहार में जब से आई है, अभी तक बिहार में सुशासन का राज है। अब कोई यह नहीं बोल सकता है कि हम अपराध करके बच जाएंगे। या तो अपराधी वहां मारे गए, या तो जेल के सलाखों के पीछे हैं, या तो अपराध छोड़कर समाज के मुख्य धारा में आ गए हैं महोदय। अखिलेश जी ने कहा कि बिहार में इस बजट को कुछ नहीं दिया गया है, तो मैं उनको यह सदन के माध्यम से, चूंकि हमारे वो बड़े भाई हैं, हमारे बिहार से ही राज्यसभा के सांसद हैं, उनको या तो उनको अपने एलओपी पे विश्वास नहीं है। माननीय खड़गे जी ने जब बजट भाषण हुआ तो उसमें कहा था कि यह तो बजट लगता है सिर्फ बिहार के लिए है, या तो वो पहले आपस में फैसला कर लें माननीय अखिलेश जी कि वो खड़गे जी और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ हैं या नहीं है, वो उनके बातों से वो इत्तेफाक रखते हैं कि नहीं रखते हैं। 2005 के पहले महोदय 2014 में जब हमारे नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी, उसके पहले महोदय बिहार में सिर्फ एक एयरपोर्ट था, वो जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा। आज 2014 के बाद बिहार में दरभंगा जैसे जो मतलब बिहार का, उत्तर बिहार का एक रीढ़ है, मिथिला की राजधानी है, वहां पे उन्होंने दरभंगा एयरपोर्ट देने का काम किया है महोदय। अगर ये विकास उनको नहीं दिखती है तो उसमें मुझे कुछ नहीं कहना है महोदय। आजादी के बाद से पूरे ये सिर्फ 7 एम्स था महोदय, उस 7 एम्स में 6 एम्स जो है माननीय पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में बना, और अभी पूरे हिंदुस्तान में
23 एम्स है महोदय, जिसमें 2 एम्स सिर्फ बिहार को भारत सरकार ने, अब नरेंद्र मोदी जी ने देने का काम किया। अगर यह विकास कांग्रेसियों को और आरजेडी वालों को नहीं समझ में आता है तो इससे मुझे कुछ नहीं कहना है महोदय। पूरे बिहार में गंगा ब्रिज, बिहार को 2 भागों में बांटा जाता है, उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार। उत्तर बिहार में जो है जोड़ने के लिए सिर्फ एक हाजीपुर से होते हुए जो राजेंद्र सेतु पुल था महोदय, जो 1980 के दशक में बना हुआ था, उसके बाद अभी जो है बक्सर, एक पुल जो है बक्सर से उत्तर बिहार को जोड़ने के लिए बक्सर से गंगा ब्रिज पे करोड़ों रुपए की लागत से माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार में वो ब्रिज बनकर तैयार हुआ महोदय। कोलवर पुल जो कि जिसमें अंग्रेजों के जमाने से ही सोन नदी पे एकमात्र अंग्रेज के जमाने से पुल हुआ करता था, हमारे नरेंद्र मोदी जी की सरकार आने से 2014 के बाद वहां पे करोड़ों की लागत से जो है वो कोलवर का जो ब्रिज बनकर तैयार हुआ है। अगर वो कांग्रेसियों को नहीं दिखता है तो ये हमारा प्रॉब्लम नहीं है, उनके चश्मे का नंबर का बदलाने का जरूरत है महोदय। आप सुन लीजिए महोदय, से बेगूसराय जो को जोड़ने के लिए जो सिमरिया घाट है, जहां अर्ध कुंभ जैसे वहां अर्ध कुंभ का मेला लगता है, वहां राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी की जन्मभूमि हुई है महोदय, उनको जोड़ने के लिए सिर्फ एक राजेंद्र सेतु था जो कि जर्जर स्थिति में था। अभी करोड़ों की लागत से मोकामा और बेगूसराय को जोड़ने के लिए, जो उस मोकामा से जो बेगूसराय पार करेंगे तो सीधे सीमांचल तक, नेपाल के बॉर्डर और बांग्लादेश के बॉर्डर तक जाने के लिए अभी नरेंद्र मोदी जी की सरकार में वहां करोड़ों की लागत से वहां ब्रिज बना है महोदय। अगर ये विपक्षियों को समझ में नहीं आता है ये बिहार का विकास है तो इसमें मुझे कुछ नहीं कहना है महोदय। मैं अपने प्रधानमंत्री जी को साधुवाद और धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मखाना बोर्ड बनाने का घोषणा किया है। मखाना महोदय जितना खाने में स्वादिष्ट है, जितनी पौष्टिकता उस मखाने में है, उसकी खेती करना उतना ही कठिन, उतना ही ये मुश्किल भरा होता है महोदय। आज मखाना बोर्ड बन जाने से हमारे लाखों मिथिला के किसानों को, लाखों मजदूरों को, लाखों अति पिछड़ों, लाखों दलित समुदाय के लोगों को जो उसमें मजदूरी करते हैं, जो उसमें खेती करते हैं, उनको पूर्ण लाभ मिलेगा। उनका मखाना की लागत का जो है उचित मूल्य मिलने के वजह से उनकी मजदूरी बढ़ेगी, उनका आय बढ़ेगा। इससे हमारे जो मखाना के किसान हैं उनका विकास होगा महोदय। अगर ये उन्होंने कहा कि क्यों नहीं दिए, तो आप तो 50 साल में थे साहब, आप दे देते मखाना बोर्ड बना देते, आप लीची बोर्ड बना देते। आपको किसने रोक रखा था? आखिर दिया, जो भी दिया वो नरेंद्र मोदी जी ने दिया। आपने बिहार को क्या दिया? नक्सलवाद, उग्रवाद, जातिवाद, इसके अलावा आपने कुछ नहीं दिया महोदय। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने बिहटा में करोड़ों की लागत से 500 या 600, मैं एग्जैक्ट उसका मूल्य नहीं जानता हूं, लागत मूल्य, कि 600 बेड का जो ईएसआई हॉस्पिटल दिया है महोदय बिहटा में, जो पटना जो बिहार की राजधानी है, वहां मुश्किल से वहां से 35 किलोमीटर पे है महोदय। इसके बाद आजादी के पहले से कोसी महासेतु बनकर, आजादी के बाद से कोसी को कोई देखने वाला नहीं था। आज उस कोसी को, जो कोसी ब्रिज पे जो है कोसी महासेतु बना है, वो नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में बना है महोदय। ये अगर विकास अगर विपक्षी को नहीं दिखता है उसमें मुझे कुछ नहीं कहना है महोदय। कोसी कहना, और इस बजट में माननीय वित्त मंत्री जी ने, आप बहुत कुछ कह रहे हैं। क्या सर? कहिए। गलत नहीं बोल रहा हूँ सर, उनको सही बता रहा हूँ, पर बोलते रहिए। वो बोलना है सर। बोलिए। मेरा सर समय बढ़ा दिया जैसे आग्रह है। आप तो बोलिए, पहले जितना समय उतने में तो बोलिए। महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय वित्त मंत्री जी ने इस बजट में मखाना बोर्ड के साथ साथ आईआईटी पटना, पूछिए उनसे, मैं पूछना चाहूंगा उनसे कि उन्होंने पटना को आईआईटी देने का काम क्यों नहीं किया था। आज आईआईटी पटना का विस्तारीकरण करने के लिए, वहाँ का जो छात्रावास है उसका डेवलप करने के लिए उन्होंने इस बजट में प्रावधान किया है, तो हमारे विपक्ष के साथियों को बुरा लगता है महोदय। आज भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है महोदय। अगर वो देख नहीं पाते हैं तो ये उनका कसूर है महोदय। मैं छोटा सा संक्षिप्त विवरण जो है, जो हमारे नरेंद्र मोदी जी के कालखंड में हमारे बिहार के लिए जो उन्होंने पैकेज और जो विकास का कार्य जो देने का कार्य किया, मैं उसको संक्षिप्त में, मैं इस 10 वर्षों में मैं अपनी सरकार की उपलब्धियों को बताना चाहूँगा महोदय।
नरेंद्र मोदी जी के सरकार के नेतृत्व में पटना में 2 एम्स, IIT पटना, बिहटा में ESI हॉस्पिटल, कोइलवर आरा पुल, बिहटा सरमेरा हाईवे, मोकामा से बेगूसराय जोड़ने के लिए करोड़ों की लागत से पुल, सिमरिया घाट का पुल, पटना और हाजीपुर होते को जोड़ने के लिए, उत्तर बिहार को जोड़ने के 3 नए ब्रिज। मैं आग्रह सर, मैंने अपने MOS से आग्रह किया है महोदय, मुझे दिया। पहली बार मैं बजट पे बोल रहा हूँ महोदय। आप समाप्त करें। हाँ 5 मिनट सर, 5 मिनट समाप्त करें। मेरे आगे का किसी भाषण में मेरा काट लीजिएगा सर। 5 मिनट मुझे बोलने दीजिए सर प्लीज। यहाँ गुणा भाग नहीं होता है, आप तो बोलिए। समाप्त करिए जल्दी। महोदय, हमारी नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने गंगा ब्रिज पे 4 नए पुल देने का काम किया है जो उत्तर बिहार को जोड़ेगा महोदय। अगर ये सब विपक्ष को नहीं समझ में आता है तो मैं कुछ नहीं कर सकता महोदय। मैं 5 मिनट आपसे इसलिए लिया, उन्होंने कुछ कर रहे हो, का बहुत अपमान किया है। एक काव्य के जरिए मैं अपने बिहार का बखान विपक्षियों को करना चाहता हूं महोदय। वो कर दीजिए, काव्य के द्वारा ही करिए। हाँ करिए। जिस तरह से कांग्रेस और विपक्ष के पार्टियों के नेताओं ने हमारे बिहार का उपहास किया है, जिस आरजेडी और कांग्रेस के ने मिलकर 50 वर्षों तक शासन करने के बाद भी हमारे बिहार को विनाश की ओर ढकेला था, उस बिहार के बारे में स्पेशल पैकेज देके माननीय प्रधानमंत्री जी ने अगर उसको बढ़ाने का काम करने का प्रयास किया तो उन्होंने कहा ये बिहार का बजट है, बिहार का उपहास किया और आरजेडी वालों ने उसको सपोर्ट किया। मैं बताना चाहता हूं कि मैं क्या हूं और मैं बिहार क्या है। हाँ मैं बिहार हूं, मैं जनक जननी सीता मैया की जन्मस्थली पुरधाम हूँ, सीतामढ़ी हूँ। हाँ मैं बिहार हूँ। हाँ मैं बिहार हूँ, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का ससुराल हूँ। हाँ मैं बिहार हूँ, गुरु विश्वामित्र जी की धरती और भगवान प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी का पहला पाठशाला बक्सर हूँ। हाँ मैं बिहार हूँ। रुकिए महोदय, अभी टोकिएगा नहीं। भगवान गौतम बुद्ध की ज्ञानस्थली हूँ, मैं बिहार हूँ। दुनिया को अहिंसा और मानवता का पाठ पढ़ाने वाले भगवान। एक मिनट सर, 1 मिनट प्लीज समाप्त करें। 1 मिनट, मेरा 15 मिनट नहीं हुआ सर, 15 मिनट नहीं हुआ सर, बोलने दीजिए सर। मेरा एमोशन बोला, बोलिए ना। माननीय सदस्य समाप्त करें। मैं 1-2 मिनट में समाप्त कर दूंगा। बोलिए आप समय बिना भेदभाव की मानवता की रक्षा करने वाले सिख धर्म के 10वें धर्म गुरु गोविंद सिंह महाराज जी का मैं बिहार हूं। माननीय सदस्य समाप्त करें। पूरे सनातनियों के पूर्वजों का श्री राजीव शुक्ल न समाप्त करें। समाप्त हो आपका भाषण। धन्यवाद उपसभापति जी। श्री राजीव शुक्ल, अवसर देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को इस बात की बधाई देता हूं कि 8वां बजट वो पेश कर रही हैं। ये अपने आप में रिकॉर्ड है, इसलिए मैं उनको बधाई देता हूं। बिहार का सब जानते हैं, है क्या सब जानते हैं बिहार को। आपका भाषण बहुत अच्छा, आप माननीय सदस्य जानते हैं। आपका समय पूरा हुआ, जान दे दिया आपको। मुझे तो ऐसा लगता है कि बजट इज ऑफ द इलेक्शंस, बाय द इलेक्शंस एंड फॉर द इलेक्शंस। चुनावी बजट है, 140 करोड़ भारतीयों का नहीं है, भारत के भविष्य का नहीं है, बल्कि उन राज्यों के लिए होता है जहां या तो चुनाव हो रहे हो या होने वाले हो। इसीलिए शायद 1 नेशन 1 इलेक्शन का चल रहा है। हाँ वो तो प्रैक्टिकल नहीं है। कैसे लागू करेंगे जब तक हाउस जो है डिसॉल्व ना हो, 5 साल तक उसका प्रोविजन ना हो, तब तक वो बड़ा पॉसिबल नहीं है। अब जैसे उदाहरण के लिए दिल्ली में चुनाव था, बजट में दिल्ली के बारे में घोषणा है। अब बिहार के बारे में घोषणा है, लेकिन बिहार की अगर असलियत देखो तो इन्होंने तो बताया अखिलेश जी ने, लेकिन बिहार की अगर असलियत देखो तो इसके पहले 5 साल बिहार नहीं याद आया। आपको पता है कि बिहार की पर कैपिटा इनकम सबसे कम है, 60,000 रुपए, बाकी राज्यों के 70,000 है। तो वहां तो इसीलिए जो है ना, आप सुनो तो ना स्पेशल राज्य का दर्जा आप दिला पाए पटेल साहब। कविता पढ़ने से कुछ नहीं होता, स्पेशल राज्य का दर्जा दो ना। नहीं, हमने तो कहा था कि हमने तो कारण बताए। अरे आप तो 10 साल से बैठे हो, आप तो दो ना। अच्छा आप बैठिए। कितने साल ने, क्योंकि ये टाइम हमारे इसमें जोड़ दी। कृपया उपसभापति इस टाइम को हमारे इसमें जोड़ दीजिए। सिट डाउन, आप बैठे। ये टोका टाकी करेंगे तो मेरा टाइम कम ना हो। नहीं, आपको टाइम नहीं। हाँ, अगर ये टोका टाकी करेंगे तो मेरा टाइम नहीं। आप विराजे पटेल साहब, आप विराजे।
तो इसलिए जो है बिहार को अगर असली मदद करनी है तो वहाँ की पर कैपिटा इनकम बढ़ाइए, प्रति व्यक्ति आय बढ़ाइए, जीडीपी में उसका योगदान जो है ज्यादा करिए। भाई अगर आप ऐसे करेंगे तो बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि तरीका बोलते चले जा रहे अपने, आप बोले हम बोले, आप बोले हम बोले, ये नंबर बढ़ाने का काम बंद कर दिया आप। माननीय सदस्य पटेल साहब कृपया विराज जाएं, कृपया विराज जाएं। आप अपना एग्रेशन वहां दिखाइए। आप माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, माननीय सदस्य बिल्कुल आप विराज जाएं, आप बैठे। आप चेयर धमकी दे रहे हैं, क्या बात कर रहे तुम? ऐसा ना धमकी, सर क्या हो रहा है? धमकी दे रहे हैं, धमकी दे रहे हैं। माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, बताओ ना, माननीय सदस्य धमकी किसकी दे रहे? कृपया बैठ जाएं। मेरी आसन की बिना अनुमति के, आसन की बिना अनुमति के जो भी बोला है उसको अंकित नहीं किया जाए। श्री राजेश शुक्ला जी बोले। हाँ, उसका टाइम भी देख लीजिए सर उसमें। इसके बाद जो बेरोजगारी, तो दिस इज नॉट द फिजिकल पॉलिसी, दिस इज अ पॉलिटिकल एक्सपेंडेंसी, दिस इज व्हाट आई वांट टू से। बेरोजगारी की बात आती है तो 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी की दर बढ़ी है, और ये CMIA की डेटा में कहा गया है। यूथ जो शक्ति होती थी हमारी, आपको पता है कि 60% युवा शक्ति इस देश की थी, उसका सब जगह कहा जाता था कि भारत सबसे यंग देश है, भारत सबसे नौजवान देश है। लेकिन आज वो नौजवान कहाँ है? वो गांव में बैठा हुआ है, क्योंकि कोरोना के बाद वो गया वापस लौट के। आप देख लीजिए, ना पंजाब में कृषि के लिए उपलब्ध है, ना गुजरात में जो सूरत में डायमंड इंडस्ट्री उसके लिए मजदूर हैं, ना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए। मुंबई में हमारी लेबर कास्ट इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर उससे सफ़र कर रहा, उससे कास्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बढ़ जाता है, इसलिए हमारा एक्सपोर्ट सफ़र करता है अल्टीमेटली। इसलिए जो है, और इस मामले में चीन, वियतनाम, इंडोनेशिया ये आगे निकल जाते हैं। तो हमारी युवा शक्ति को कैसे वापस जो है हम मैन्युफैक्चरिंग या उसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ले जाएं, छोटे छोटे कल कारखानों उद्योगों में जाके उनको कैसे हम भेज सकें, ये होना चाहिए। जो युवा शक्ति हमारी बेकार बैठी है उसको हमें निश्चित रूप से कार्य देना चाहिए, काम देना चाहिए, और रियल एस्टेट सेक्टर सब जगह उनको जो है मौका देना चाहिए। अब मनरेगा का एलोकेशन 33% कम कर दिया गया, जबकि गाँव में एक रोजगार का एकमात्र साधन है। वहाँ इसी से लोगों को रोजगार मिलता है और उसी से लोगों का पेट पलता है। लेकिन वो उस समय की मनमोहन सिंह सरकार की योजना थी, उसका 33% एलोकेशन क्यों कम हुआ है? मैं माननीय वित्त मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि कोई ऐसी स्कीम है जो निश्चित रूप से ग्रामीणों को कर्ज से निकालती है, क्योंकि तमाम ग्रामीण कर्ज में डूबे हुए हैं, और उनको उससे मदद पहुँचती है। वेल्थ डिस्पैरिटी, 1% लोगों के पास 40% धन है सर। तो ये जो एक्यूमुलेशन ऑफ मनी है कुछ लोगों के पास, इसका जितना जब एक केंद्रीकरण होगा, जितना लोगों में जाएगा तो अच्छा वो तभी हो सकता है जब सबको आप अवसर मुहैया कराएं और उनको मौका दें, अपॉर्चुनिटीज़ दें। तो ये जो है, जो केंद्रीकरण हो रहा है पूंजी का, वो रुकना चाहिए। ये एक हमारी वित्त मंत्री जी से मांग है। महंगाई के तो रिकॉर्ड आपके कहने की जरूरत ही नहीं कि क्या बुरा हाल है, हर चीज़ महंगी है। पेट्रोल डीजल तो छोड़ दो, इसके अलावा खाने पीने की सारी चीज़ें बेइंतहा महंगी हैं। हर चीज़ जो है उसमें जो कहते हैं रिटेल इन्फ्लेशन जो है 5.7%, जबकि लोगों की जो वेजेस बढ़ी हैं 0.8% से 5% तक बढ़ी है। तो ये जो गैप है दोनों का, इसमें से कैसे लोगों को राहत मिलेगी? क्योंकि अगर महंगाई पे काबू नहीं किया गया, वादा था महंगाई को काबू करेंगे, लेकिन दाल हो, सब्जी हो, तेल हो, जितनी खाने पीने की चीज़ें या दूसरी कपड़ा इत्यादि, हर चीज़ इतनी महंगी होती जा रही है कि उस महंगाई पे काबू नहीं आ पा रहा, जिसके लिए सरकार को प्रयास करना चाहिए। हिडन टैक्स, अगर ये कुछ मतलब एक तरह से महंगाई हिडन टैक्स से छुपा हुआ कर है, क्योंकि जितना आप आयकर में छूट देते हैं, दूसरे करों में छूट देते हैं, वो महंगाई के जरिए लोगों को भुगतान करनी पड़ती है। वो इतना बढ़ जाता है तो उसका दाम देना पड़ता है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। अब मैं फ्लैगशिप
स्कीम पे आता हूँ, फ्लैग स्कीम, क्योंकि मैं योजना मंत्री भी था। प्रधानमंत्री आवास योजना 25% फंड यूटिलाइज्ड ही नहीं हुए, उनका इस्तेमाल ही नहीं हो पाया। और 2022 तक हर एक को छत देने का जो वादा था वो नहीं पूरा हुआ। वादा तो लाल किले की प्राचीर से किया गया था, लेकिन आज तक वो वादा नहीं पूरा हुआ। हम 4 करोड़ कह रहे हैं, 4 करोड़ हो सकता है, लेकिन 140 करोड़ देश में 4 करोड़ से क्या फ़र्क पड़ने वाला है वहाँ पे। और जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, उसमें जो सर्वे हुआ एक्सपर्ट्स का, उसमें बताया गया कि 21% रोड जो है संतोषजनक स्थिति में नहीं पाए गए। तो इसका नाम उनके रख रखाव, मेंटेनेंस और बनाने की क्वालिटी, इस पर भी जो है हमें जो है ध्यान देना होगा, क्योंकि इससे बहुत बड़ा नुकसान जो है, अगर ग्रामीण सड़कें इस तरह से बनी तो उसका बहुत भारी नुकसान हमें होगा। ग्रामीण कौशल योजना 2369 ट्रेनिंग सेंटर्स के लिए जो है पैसे दिए गए, उनको बनाया गया, लेकिन काम सिर्फ 629 कर रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ा जो है फेलियर है, बहुत बड़ी ये स्कीम फ्लॉप हुई है। फसल बीमा योजना में धन घटता चला जा रहा है। 29,000 करोड़ पहले दिया जाता था किसानों का, अब 16,000 करोड़ रह गया है। और एजुकेशन का बजट सर, सबसे देश में जरूरी तो शिक्षा है। अगर हमने युवा को नहीं पढ़ाया, आज की जनरेशन को नहीं पढ़ाया, इस पीढ़ी को नहीं पढ़ाया, तो आगे कैसे तरक्की करेंगे, कैसे बड़े बड़े इंजीनियर, डॉक्टर विदेशों में कैसे नाम करेंगे। और यहाँ पे तो सिर्फ 4% GDP का बजट है जो है एजुकेशन के लिए। तो ये शिक्षा के लिए बजट मतलब मेरे ख्याल से बहुत कम है, मीगर अमाउंट है, इसको बढ़ाना चाहिए। इससे कुछ होने वाला नहीं है, तो इस तरफ भी जो है वित्त मंत्री जी को ध्यान देना होगा। पब्लिक हेल्थ केयर सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। कोविड हुआ, कोविड के समय लोगों को समझ में आया कि कितनी बड़ी जरूरत है कि हम अपने आप को, हमारे अस्पताल कैसे हो, हमारे इक्विपमेंट, हमारी दवाएं, सब इतना बढ़िया होना चाहिए कि देश में उस समय कितना भी पैसा व्यक्ति के पास हो, वो बिल्कुल उसके हाथ में कुछ नहीं रह गया था। हर व्यक्ति के हाथ में, लोग एक एक ऑक्सीजन के सिलेंडर के लिए लाखों देने को तैयार थे, लेकिन मिल नहीं रहा था। तो उस समय लोगों को समझ में आया कि हमारा जो है पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम कितना मजबूत होना चाहिए। लेकिन दुख है कि उस पे जो है बजट में जो 2% से नीचे है प्रावधान। ये तो बहुत होना चाहिए, क्योंकि एक बहुत बड़ी चीज है कि पब्लिक हेल्थ केयर जो है लोगों के स्वास्थ्य के लिए लंबा चौड़ा बजट दिया जाना चाहिए, लेकिन हम कोरोना से सबक नहीं ले पाए और वो भी 2% से नीचे। R&D का बजट, जो शोध है, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट। अगर हम शोध नहीं करेंगे, नई नई चीजें नहीं निकालेंगे और पश्चिमी देशों के भरोसे रहेंगे, तो बहुत हमारे ऊपर जो है हम प्रगति नहीं कर सकते, विकसित भारत नहीं बन सकता अगर हम शोध नहीं करेंगे। R&D पे जो है, रिसर्च पे हमें सबसे ज़्यादा खर्च करना चाहिए। चीन 2.4% खर्च करता है, दक्षिण कोरिया ऐसा देश 4.5% खर्च करता है, लेकिन हम 0.7% खर्च करते हैं, जो कुछ नहीं है, मूंगफली है बिल्कुल। तो इस तरफ भी हमें सरकार को इस तरफ देखना होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज। एक चीज आज सुबह सोनिया जी ने जिक्र उसका किया कि फूड फॉर सिक्योरिटी जो है, जिसके जरिए अनाज दिया जा रहा है लोगों को, गाँव में मुफ्त राशन, वो सब, वो मनमोहन सिंह सरकार की योजना थी, कांग्रेस सरकार की योजना थी, अच्छा है, उसको लागू किया गया। लेकिन वो 2011 की जो हमारा सेंसस था, जनगणना, उसके आधार पे, तो उससे कम से कम 5 करोड़ लोग अब वंचित हैं। तो वो जो है उन जनगणना को कराई जाए और उन लोगों को मिले तो बहुत अच्छा, जो वंचित लोग हैं। तो वो चीज़ आज सोनिया जी ने सुबह उठाई थी, मैं उसको भी दोबारा इसमें से रखना चाहता हूँ। यहाँ पर बड़े अर्थशास्त्री हैं रुचिर शर्मा, उन्होंने अपनी जो उनकी अभी हाल में पुस्तक आई है, और उन्होंने कहा भी है कि इस देश में उद्यमियों, उद्योगों और व्यापार को जो छूट मिलनी चाहिए, जो फ्रीडम मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल रही, क्योंकि जो है सरकारी एजेंसियों का इतना दबाव है उनके ऊपर कि वो आदमी चाहे GST देने वाला हो, चाहे इनकम टैक्स देने वाला हो, चाहे और कोई उसमें हो, तो वो अपने आप को बड़ा, उसको ये जब बिजनेस व्यापार में आसानी नहीं लग रही। और दोनों तरफ के लोग इस बात को अनुभव करते हैं कि व्यापार में सब डरे रहते हैं। इसीलिए आप देखो, आपके कम से कम 1 लाख उद्यमी व्यापारी तो नागरिकता छोड़ चुका है,
और हजारों लोग जाके दुबई और कहाँ बस गए यहाँ से छोड़ के। तो जब एक उद्यमी सोच हो जाता है तो लाखों लोगों का नुकसान होता है, क्योंकि इतने लोगों को रोजगार देता है। अगर वो चला गया तो रोजगार चला जाता है। वो विदेशों में जाकर रोजगार ले रहा, वहाँ के लोगों को रोजगार दे, यहाँ वो इतना डरा हुआ है सरकारी एजेंसियों से कि वो यहाँ से भाग जाता है इसके ऊपर। तो ये फ्रीडम जो है ना, बिजनेस की फ्रीडम, इकोनॉमिक फ्रीडम, ये थोड़ी होनी चाहिए। ये बात रुचि शर्मा ने अपने सारे उसमें कही है वर्ल्ड वाइड जो है भारत के लिए। और इन्होंने एयर फेयर का भी जिक्र किया कि सुबह किस तरह से विमानों के किराए वगैरह पे नियंत्रण होना चाहिए। वो मैं भी उसको मानता हूँ कि ये ठीक है। सारे आज कोई सरकारी एयरलाइंस नहीं रही, सारी एयरलाइंस प्राइवेटाइज्ड हो गई। तो उनके लेकिन कुछ ना कुछ जो है सिविल एविएशन मिनिस्ट्री को ध्यान देना चाहिए कि अनाप शनाप वो किराए न ले और कुछ इस तरह से करें कि ताकि लोगों को उसका लाभ मिल सके। अब एक बहुत बड़ी चीज़ है डॉलर के मुकाबले रुपए की गिरती स्थिति। आपको पता है कि हम आदरणीय मोदी जी ने कितना मनमोहन सिंह जी का मजाक बनाया था कि प्रधानमंत्री की उम्र पार कर गया रुपए की जो स्थिति है। लेकिन आज क्या, आज 87-88 रुपये और 90 किसी भी समय पहुंच सकता है। मजाक का विषय नहीं है, लेकिन जिस तरह से रुपए की स्थिति गिर रही है हमारे लिए चिंता का विषय। क्यों? क्योंकि हमारा एक्सपोर्ट नीचे जा रहा है, निर्यात, और जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है लोग निकाल के ले जा रहे हैं। तो हमारी स्थिति ऐसी होगी कि हमारा जो विदेशी मुद्रा भंडार है, फॉरेक्स रिजर्व, वो बिलियंस ऑफ डॉलर में गिर रहा। रुपए को आप रोकने के लिए कोई और गिरावट ना हो, आपको पैसा काफ़ी डालना पड़ता है। वो बिलियन डॉलर हमारे फॉरेक्स रिजर्व से, जो विदेशी मुद्रा भंडार, उससे कम होता चला जा रहा है। तो हमें जो इस तरफ भी देना पड़ेगा कि रुपया कैसे मजबूत रहे। वो ठीक है कि आप ये करते हैं, उससे एक्सपोर्ट को प्रमोशन मिलेगा, लेकिन आज की स्थिति हमारा एक्सपोर्ट तो डाउन जा रहा है, उसको स्थिति नहीं रह गई है। और जीएसटी आप भी जानते हैं, राजस्थान में भी देखते सब जगह कि जो ये था कि ये कर आया था तो लोगों को लगा था कि बहुत बड़ी आज़ादी मिलेगी, इसीलिए 1947 की तरह उसको आपने याद हो कि सेंट्रल हॉल में फंक्शन किया गया कि आज कर मुक्त, कर से आज़ादी मिली, देश आज़ाद हुआ। लेकिन जीएसटी से हर व्यापारी परेशान, हर उद्योगपति परेशान, छोटे छोटे उद्योग वाले परेशान, दुकानदार परेशान। और जीएसटी के लोग इतना मतलब तंग करते हैं, उनको अनाप शनाप जीएसटी लगा देते। उसका वो प्रावधान तो सबसे खराब कि सरकार में आप काम कोई करते हैं, बिल जिस दिन आपने रेज किया, बिल लगाया, उस दिन जीएसटी काट लेते हो, पेमेंट आता है साल भर बाद गवर्नमेंट से। तो आदमी को सोचो लोन ले लेके जीएसटी देनी पड़ रही है। इस चीज़ पे भी माननीय वित्त मंत्री जी को ध्यान देना चाहिए कि कैसे, मैं सब सुझाव इसलिए दे रहा हूँ कि वो कैसे जो है इससे राहत दे सके और इस समस्या का समाधान हो सके। और इलेक्टोरल बॉन्ड्स का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था चुनावी चंदे को लेके, आज तक न उस पर चर्चा हुई, न उस पर कोई बात हो रही। उस मामले में सरकार को व्हाइट पेपर लाना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा था उस तरह से सारी बातें जनता के सामने रखनी चाहिए, जो हम नहीं रख पा रहे हैं। कुल मिला के अगर हम कहें, और जीएसटी के मामले में माननीय वित्त मंत्री जी यहाँ नहीं है। अब जैसे पॉपकॉर्न को लेके जो वो होता है मक्के का, वो बनता, उनको क्या बोलते हैं, पॉपकॉर्न, और वैसे हिंदी में क्या बोलते हैं, हाँ, तो वो उसमें आप देखिए कि वो कह रही हैं कि जो नमकीन पॉपकॉर्न है उस पर 50% जीएसटी और जो मीठा पॉपकॉर्न है उस पर 18% जीएसटी। लोगों की समझ में नहीं आ रहा कि पॉपकॉर्न पे 2 जीएसटी कैसे हो सकती। और ये तो आम लोग खाते हैं सब जगह, युवा, आज का युवा, बच्चे, सारे लोग चाहे स्कूल के कॉलेज के सब पॉपकॉर्न खाते हैं, तो उनको कितना इस बात का मजाक उड़ता है। तो ये देखना चाहिए कि पैरिटी, समानता कैसे लाएं। आप एक ही प्रोडक्ट पे 2 जीएसटी अगर लगाएंगे उतने फ़र्क के साथ, तो उसका बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। कुल मिला के मैं यही कहूँगा कि यह बजट युवा, किसान, महिलाओं, व्यापारी, बेरोजगारों के लिए नहीं है, बल्कि बैलेट बॉक्स और वोट बैंक के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद शुक्ला जी। श्री मानस रंजन मंगराज विल स्पीक इन उड़िया। 3 minutes। आम ओडिया गोटे कथा अच्छी, कही जानिले कथा सुंदर, जार अर्थ होउछि पनी चुनी कही पारले अत्यंत गौण और गुरुत्वहीन कथा भी लोकादृत हो पार। अर्थमंत्री संसद में उपस्थापन करथिबा 2025-26 बजेट सेहीपरि अनेक गौण और गुरुत्वहीन कथार समाहार। एबे यही बजेट को देशर बजेट बोली कहजिया परिवर्ते बिहार बजेट बोली कहिबारे आदौ असंगति नहीं। अर्थमंत्री संभवतः बिहार व्यतीत देश में आहरी अनेक राज्य और केन्द्रशासित अंचल थिबा कथा भूली जाइछंती,
केउं राज्य को स्वतंत्र अनुदान और सहायता देवा को आम विरोध करूना, मात्र संघीय व्यवस्था अनुसार मो राज्य ओडिशा परी अन्य राज्यगुड़िक समान भाव में हकदार। महोदय, अर्थमंत्री तांकर 77 मिनिट्र अभिभाषण ने 3 मिनिट केवल बिहार कथा कहते, 9 थर बिहार नाम उच्चारण कर, मात्र ओडिशा, पश्चिमबंग, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र परी अन्य राज्यगुड़िक कौन भारत भीतर नहांती? 6 मास तले 2024 बजेट रे बिहार पर 59,000 कोटी टंकार स्वतंत्र सहायता दिगला। आंध्र प्रदेश को पोलाभरम निमंते स्वतंत्र पैकेज दिगला, मात्र ओडिशा को सेतेबेले किछि मिलला नहीं। एबे भी बजेट रे ओडिशा पई किछि घोषणा करागला नहीं। पूर्वतन मुख्यमंत्री मान्यवर श्रीजुक्त नवीन पट्टनायक नेतृत्व में बीजेडी विपर्यय प्रवण ओडिशा पई स्वतंत्र पाह्या दाबी करी आसुअछि, मात्र ओडिशा को स्वतंत्र पाह्या कि स्वतंत्र सहायता मिलू नहीं। ओडिशार खनिज संपदरू संगृहीत राजस्व अन्य राज्य में खर्च होउछि। ओडिशार कोयला सारा देश को आलुओ जगाउछि, मात्र ग्रीन सेस रु केंद्र सरकार वर्ष को ओडिशार 10,000 कोटी टंका संग्रह करुथिले भी कोयला खनि प्रभावित अंचल विकास पई फटा पाहुलाटे मध्य देउनांती। महोदय, केंद्रीय बजेट रे कृषि उत्पादन, लोकों आय वृद्धि, ग्रामांचल निजुक्ति, पुष्टिकर सहायता विस्तार, मुद्रास्फीति चाप ह्रास, कृषकों ऋण भार लाघव कौन व्यवस्था नहीं। फसल सर्वनिम्न सहायक दर आईन करने को देशर कृषक मैंने करुवा दाबी संपर्क में सरकार रहस्यमय भाव में नीरवता अवलंबन कर। महोदय, कृषि केसीसी व्यक्तिगत सीमा ऋण सीमा को 3 ରୁ 5 लाख टंका को जो वृद्धि करा मूलतः कॉर्पोरेट क्षेत्र द्वारा महंगा सामग्री विक्रय को बजाय रखा उद्दिष्ट। यह आर्थिक अभिवृद्धि को पुनरुद्धार करिपारिबो नाही। महोदय, ग्रामीण विकास बराद गत वर्ष तुलन में मात्र 1 कोटी टंका वृद्धि करा जायछि। कृषि और आनुषंगिक क्षेत्र पर वृद्धि मात्र 20,000 कोटी। सबुठारु बड़म्बना होउछि खाद्य सब्सिडी गत बजेट रे 2.05 लाख कोटी टंका व्ययबराद कराइथिया बेले चलित वर्ष 2.03 लाख टंका को ह्रास कराइछि। एही बजेट रे देशवासी को किपरि लाभान्वित करि परिबो? देशर कोटी कोटी वृद्ध, वृद्धा, विधवा और भिन्नक्षम उद्दिष्ट मासिक भत्तार केंद्र सरकार भाग 2006 मसीह मात्र 200 टंका रही बेले चलित बजेट भी से कौन वृद्धि न करवा अत्यंत क्षोभर विषय। महोदय, सरकार 5 ट्रिलियन अर्थनीतिर गोलापी स्वप्न देखा बेले टंकार मूल्य सर्वकालीन निम्न स्तर में पहुंची। स्वाधीनता समय डॉलर और टंकार मूल्य प्राय सामान थिला, एबे $1 विनिमय मूल्य 88 टंका को छुईला। सुखी राष्ट्र तालिका रे भारत स्थान तलक भारतीय पासपोर्ट वर्ष को वर्ष दुर्बल हो चली प्रकार अभिवृद्धि? सर समाप्त करें। सर समाप्त हुआ। महोदय, अर्थमंत्री 12 लाख टंका को टिकस मुक्त कर घोषणा मात्र 12 लाख टंका पढ़ना अलाउ नहीं है, केवल कानून को अलाउ कर रखा है। आप कृपया बैठ जाएं, आपका भाषण समाप्त हुआ। धन्यवाद। धन्यवाद। श्री संजय कुमार झा। आदरणीय सभापति महोदय, मैं धन्यवाद देता हूं आपको कि इस बजट पे मुझे बोलने का मौका दिया। मैं सिर्फ 2-3 विषय आपके सामने रखना चाहता हूं। एक तो आदरणीय वित्त मंत्री जी ने जो कर में छूट दिया, उससे निश्चित रूप से 1,75,000 करदाता को फ़ायदा होगा और 1 लाख करोड़ रुपया उन्होंने छोड़ा है जो लोगों की बचत होगी। और हमारे एक साथी यहाँ अच्छा बोल रहे थे कि ये अपेक्षा करते हुए कि कंजम्पशन में, सेविंग में, इन्वेस्टमेंट में ये काम आएगा कि मार्केट में वो पैसा जाए लोगों को और फिर वो चेन डेवलप होता है। जब आप जाके पैसा खर्चा करते हैं तो प्रोडक्टिविटी भी होगा, मैन्युफैक्चरिंग भी होगा, मार्केट भी चलेगा, तो वो यहीं पे खर्चा करे, ये अपेक्षा ज़रूर किया होगा। उसी तरह हम देख रहे थे कि TDS, TCS आजकल हम लोग देखते हैं जो इनकम टैक्स रिटर्न है वो 1 दिन में, 2 दिन में आ जाता है, 48 घंटे में आ जाता है। फेसलेस कर दिया है, टेक्नोलॉजी को यूज किया है। तो इन सब चीज़ों से काफ़ी परिस्थिति बदली है। एक क्षेत्र जो हमारे मांझी जी बैठे हुए हैं, इनका MSME में भी बहुत सारे इशूज़ को एड्रेस किया गया है, जिसमें क्रेडिट एक्सेस, रेगुलेटरी सिंप्लीफिकेशन, फिजिकल एंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर सुधार के लिए काम किया गया है और देश मैन्युफैक्चरिंग हब बने, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बने, उस पर काम किया गया। एक जो बहुत महत्वपूर्ण बात बजट में है वो दलहन में आत्मनिर्भरता के लिए 6 साल का मिशन लॉन्च किया गया और अगले 4 साल तक किसानों से दलहन की केंद्रीय
खरीद की जाएगी। बिहार जैसे प्रदेश में जहां मकामा टाल वगैरह में दलहन की खेती होती है, निश्चित रूप से ये दलहन के उत्पादन बढ़ने से इसका एक लाभ मिलेगा। एक और जो एग्रीकल्चर सेक्टर में किया गया कि जो 100 लो प्रोडक्टिविटी वाले जिला है उसको अडॉप्ट करने का किया गया है, जहां उपज कम होता है 100 डिस्ट्रिक्ट जो है कि वहाँ क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करके चीज़ों वहाँ प्रोडक्शन बढ़ाने का 100 जिला को चुन करके किया गया है। उसी तरह किसान क्रेडिट कार्ड के लिए 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख किया गया। पीएम स्वनिधि योजना का नवीकरण, जिसमें कि स्ट्रीट वेंडर्स को 30,000 की सीमा से यूपीआई लिंक्ड क्रेडिट कार्ड और बैंक लोन मिलेगा। जो जिग वर्कर्स हैं, जो उबर, ओला, जोमेटो इस सब में काम करते हैं, उनके लिए उनको आयुष्मान, करीब 1 करोड़ उनकी संख्या है, आयुष्मान भारत के तहत और हेल्थ इंश्योरेंस के तहत अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ मिले, इसका इस बजट में किया गया है। हम लोग देखते हैं कि अभी कोरोना हुआ या यूक्रेन में वॉर हुआ तो कितने सारे स्टूडेंट मेडिकल का वहाँ पढ़ने गए हुए थे। इतना डिमांड है तो अगले 1 साल में 10,000 और अगले 5 साल में 75,000 मेडिकल स्टूडेंट के सीटों को बढ़ाने का इस बजट में आया है। उसी तरह जो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो चैलेंजेज हैं उसके लिए स्पेशल फंड दिया गया है कि जो अर्बन, इस बार तो दिल्ली के चुनाव में हम लोग देख रहे थे किस तरह दिल्ली के कॉलोनियों में रोड पानी का हाल था, तो उसके लिए जो पूरा देश के लिए दिया गया है। उसी तरह न्यूक्लियर एनर्जी के लिए मुझे लगता है कि सरकार ने 20,000 करोड़ का बजट दिया है। एक बात मैं ये जो जनरल चीज़ें जो बजट में हाईलाइट करने वाली थी, और हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि जिस तरह हमारे साथी बता रहे थे कांग्रेस के भी कि बिहार के साथ हिस्टोरिकली निगलेक्ट बिहार को किया गया। जब झारखंड भी अध्यक्ष महोदय बिहार के साथ था तो फ्रेट इक्वलाइजेशन था, सारा मिनरल्स झारखंड का पूरे देश में जाता था, लेकिन उसका कोई भी एडवांटेज बिहार को नहीं मिला। और हमेशा बिहार का डिमांड रहा, सही बात है, विशेष राज्य का दर्जा का, लेकिन फाइनेंस कमीशन ने ये बात खत्म कर दी और हम लोगों की पार्टी और हम लोगों के नेता नीतीश कुमार ने कहा कि भाई नहीं, अगर विशेष राज्य का दर्जा मिलता है तो बिहार को विशेष पैकेज मिले। और हम धन्यवाद देना चाहते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कि पिछले बजट में भी बिहार के फ्लड को उन्होंने एड्रेस किया। कभी एड्रेस नहीं हुआ, कोसी का फ्लड आता रहा। हम लोग जिस एरिया से आते हैं अध्यक्ष महोदय, मिथिला एरिया है, वो हर एक साल फ्लड देखते रहे। हमेशा होता था कि नेपाल में हाई डैम बन रहा है, लेकिन पहली बार भारत सरकार ने नॉर्थ बिहार के मिथिला के फ्लड को भी एड्रेस किया। पहली बार जो मखाना की चर्चा आजकल दुनिया में हो रही है, ये मखाना तो प्रोडक्शन हमेशा से होता रहा, लेकिन अब वहाँ जाकर के मखाना बोर्ड बनेगा जिससे कम से कम उसके पैकेजिंग में उपजा वहाँ होता था, पैकेजिंग जाके बेंगलोर में होता था, अब वहाँ पर पैकेजिंग होगा, मार्केट लिंकेज होगा। दरभंगा में एयरपोर्ट है तो वहाँ से पूर्णिया में भी शुरू होने वाला एयरपोर्ट, तो उससे उसका कार्गो वहाँ से जाने का वो होगा, वहाँ की इकोनॉमी में वहाँ लोगों के पॉकेट में पैसा जाएगा। उसी तरह एक जो बड़ा अनाउंसमेंट है, बिहार का लोगों का पूरा दुनिया में बिहार का डायस्पोरा है और खास करके गल्फ वगैरह में सब लोग रहते हैं। एक इंटरनेशनल फ्लाइट बिहार से नहीं जाता। और जो वित्त मंत्री जी ने घोषणा किया है 3 ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए, और एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा वो पटना के बगल में होगा। वो एयरपोर्ट बनने से निश्चित रूप से इंटरनेशनल फ्लाइट भी बिहार से जाना शुरू हो जाएगा। और एक जो सबसे बड़ा अनाउंसमेंट मुझे लगता है हुआ है वो 1972 से, सभापति महोदय, 1972 से डीपीआर बन के प्रोजेक्ट चल रहा था। 53 साल हम लोग तो पैदा ही हुए थे। वेस्टर्न कोसी योजना पूरा उत्तर बिहार के सिंचाई को लेकर के, लेकिन आज तक कंप्लीट नहीं हुआ। हम धन्यवाद देना चाहते हैं वित्त मंत्री को कि अपने भाषण में उन्होंने मिथिला का भी नाम लिया और वेस्टर्न कोसी को भारत सरकार ने सैंक्शन करके और उस पर काम करना शुरू करें। तो मुझे लगता है, और सबसे बड़ी बात इस बार तो बजट में खुद भी वो मधुबनी पेंटिंग का साड़ी पहन के आई, तो कम से कम उस पेंटिंग से जुड़े हुए पूरे जो मिथिला के लोग हैं
देश और दुनिया में है, उस सबके लिए एक प्रतिष्ठा की बात हुई कि इन्होंने वित्त मंत्री जी ने जो अपना बजट पढ़ा उसमें इसका ध्यान रखा। मुझे लगता है बिहार हिस्टोरिकली हमेशा उसको कभी भी फोकस में, रडार में नहीं आया। और नीतीश कुमार जी ने, अभी हम देख रहे थे 4 एग्रीकल्चर रोड मैप में बिहार में काम हुआ है। अब पूरा कृषि में वहाँ पर रिवोल्यूशन आया है। इतना अभी सब्जी के उत्पादन में 4th स्टेट, 4था नंबर पर देश में बिहार आया है। तो बहुत सारा काम बिहार में पिछले 17, 18, 19 साल में हुआ है। बिहार टेक ऑफ स्टेज में है। जो डेटा यहाँ पढ़ा जा रहा था वो सही है कि ये प्रॉब्लम है, लेकिन ये इतना जो इनहेरिट किए हम लोग कांग्रेस और आरजेडी से, ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हम लोग शुरू कहाँ से किए थे, हम लोगों को क्या मिला था बिहार में जब हम लोग सरकार में आए, और कहाँ से कहाँ हम लोग ट्रैवल किए। तो बिहार एक टेक ऑफ स्टेज में है। पहली बार बिहार भी डबल इंजन का मजा ले रहा है, और अगले 5 साल में निश्चित रूप से हम लोगों को लगता है कि जो विशेष ध्यान केंद्र का बिहार के ऊपर है, बिहार भी टॉप 10 स्टेट में आएगा। और दोनों बजट, पिछला बजट भी और इस बार के बजट में भी, जो केंद्र सरकार का और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो पूर्वोदय का एक परिकल्पना है कि जब तक पूरब के स्टेट मेन लिंक में नहीं आएंगे तब तक पूरा का पूरा जो विकसित भारत का सपना है नहीं हो पाएगा। तो उनका जो विशेष ध्यान गया है इस पर, निश्चित रूप से आने वाले टाइम में, बिहार के लोग वैसे भी मेहनती हैं, निश्चित आने वाले टाइम में बिहार भी टॉप 10 स्टेट में आएगा। मैं अपनी बात रखने का आपने मौका दिया, मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। श्री सुजीत कुमार। Sir, I genuinely believe that this is a visionary, historic, forward-looking and futuristic budget. Sir, these are not empty, vague words. I'll justify over the next 10-12 minutes, sir, why I believe so. Sir, the Honorable Finance Minister has focused on women, youth and other marginalized group by removing barriers to credit, technology, skilling and other things, sir. Sir, I will compliment her and Honorable Prime Minister for laying the roadmap for a $5 trillion economy. Sir, some of the members who spoke previously kept on harping, कैसे बनेगा 5 trillion, कैसे बनेगा 5 trillion. Sir, basic common sense. If with a base of $4 trillion economy, if you grow at 6.4%, which we are doing today, then over 3-4 years will definitely become a $5 trillion economy, and by 2047 will become a $30 trillion economy and Vikasit Bharat. Sir, reference was made to a particular railway project, Khurda-Balangi railway line. But sir, conveniently, what was not mentioned was that the project started in 1974. Sir, मेरा जन्म भी नहीं हुआ था तब. और सर उस समय तो सर अश्विनी वैष्णव भी रेलवे मिनिस्टर नहीं थे, वो तो 2021 में बने. प्रधानमंत्री भी नरेंद्र मोदी जी नहीं थे, 2014 में बने. तो 40 साल तक सर क्यों नहीं बना? Sir, that particular railway line today of 304 kilometers, almost 256 kilometers are complete. 80% से ज़्यादा complete हो चुका है, जो बताया नहीं गया ये सदन में. And sir, one incorrect statement was made that the allocation for Orissa railway in the budget has reduced over last year. It is incorrect, sir. This year the budget allocation for Orissa railway is 10,600 crore. Last year in FY 24-25 it was 10,536 crore. Sir, 2 साल का बच्चा ही बता देगा मैथमेटिक्स में 600, 536 से ज़्यादा होता है. But this was an incorrect statement made just for cheap publicity. Sir, I'll come now to substantial part of the budget, sir. Sir, no member has spoken about sports. और मुझे ये सर, I believe that everyone of us will be interested in sports. Sir, at 3,794 crore, this is the highest ever allocation to sports. And we must compliment Honorable Finance Minister for this. She has never got her due that she has been focusing on sports. Sir, and when Prime Minister Modi ji talks about we hosting or we aspiring to host the Olympics in 2036, we need to focus on sports and we need to allocate more. Sir, I would request actually Honorable Finance Minister to allocate 10,000 crore at least to sports. But sir, one data is pertinent here. Sir, in 2013-14, I don't want to make this a 2013-14 versus 25-26 thing, but this is interesting, sir. Only 1,219 crore सर 1,219 करोड़ रुपया 2013-14 में स्पोर्ट्स के लिए एलोकेट किया गया था, जो इस बार 3,800 करोड़ के आसपास है, almost 3.1 times. This should be remembered. Sir, also I'll urge the government to nudge the private sector to invest in sport as it done in other countries. जहाँ यहाँ पे सर private sector sports में खर्च नहीं करती है, जो सरकार should motivate them to spend. Sir, green growth. In this August House, sir, there are many members, including Sri Jairam Ramesh, who are passionate about climate change, environment, sustainability issues, and there are other members also.
But, sir, Honorable Prime Minister has walked the talk by hiking the budget for MNRE from 19,100 crore in last year BE to 25,600 crore, almost 39% hike. Sir, बोलना एक बात है सर, लेकिन करके दिखाना दूसरी बात है. 40% रेन्यूएबल एनर्जी डिपार्टमेंट को हाइक किया गया है सर, 25,600 करोड़ की लागत से. सर, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना. Sir, imagine 1 crore household getting free electricity, up to 300 units through this. Sir, this is going to save them almost 15,000 to 18,000 annually. 15,000 से 18,000 रुपया सर साल का उनका बचत हो रहा है from this प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना. Sir, National Green Hydrogen Mission, again something related to sustainability and green growth. The budget has been hiked from 300 crore of RE last year to 600 crore in the BE of this year. Sir, EV vehicles के बारे में हम वित्त मंत्री जी ने बात किया. Basic custom duty on EV component has been brought down so that EV vehicles become cheaper and affordable to a large section of people. Sir, R&D. Sir, this is the 6th time I'm speaking on the budget from 2020. And every time, sir, मैं R&D की बात करता हूँ, sir, at 0.75% of our GDP, we are one of the worst spenders on R&D in the world. Sir, comparable number दूंगा, sir, China का 2.2, US 3.2 खर्च करता है, sir. South Korea 4.5, Israel 5.6% of its GDP is spent on R&D. Sir, हम लोग सबसे दुनिया में कम करते हैं, sir. World average is 1.8. सर, प्रधानमंत्री जी ने जब कहा था स्लोगन जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान, करके दिखाया सर. नाउ इन दिस बजट सर, following the spirit and letter of what the Prime Minister said, Honorable FM has announced 50,000 Atal Tinkering Labs in our government schools in the next 5 years. सर, वहीं से क्यूरियोसिटी डेवलप होती है, वहीं से इनोवेशन आती है सर. Broadband connectivity has been assured to all government secondary schools. सोचिए सर, देश का हर सरकारी स्कूल में अगर broadband connectivity हो जाएगा तो सर then what will be the future of our country? Sir, Center of Excellence in AI. This is the age of AI, and Center of Excellence in AI for Education has been outlaid with an outlay of 500 crore. 20,000 crore has been allocated for private sector driven R&D. These are, sir, extremely laudable announcements in the budget. Sir, startup. We all know Prime Minister has been a great votary of startup, and sir, we are the 3rd largest startup hub in the country with almost 1.6 lakh registered startup in Startup India initiative. Sir, in the state of Orissa where I come from, there are almost 2,500 startups, of which 50% have been started by women. Sir, again, the focus on startup was clearly there in this budget. Sir, a deep tech fund was announced. A new scheme was announced for 5 lakh women, SCs and ST entrepreneurs, where they can avail term loan up to 2 crore during the next 5 years. 5 lakh, sir, महिलाएं और SC ST हमारे जो भाई बहनें हैं जो स्टार्टअप करते हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको 2 करोड़ तक की सर लोन मिल सकती है अगले 5 साल में. And sir, finally, tax exempt. Lot of startups. Sir, I worked a lot with startups, sir. और मुझे सारे startups सर बोले थे कि ये जो tax exempt था 31 मार्च 2025 को खत्म हो जाएगा. कृपया कर इसको बढ़ाने का कोशिश कीजिएगा. I'm so glad. I'll thank the Honorable Finance Minister कि उसको 5 साल के लिए बढ़ाया गया, जिससे startup culture और ज़्यादा होगा. सर, gig workers के बारे में बात किया गया था. सर, नीति आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से there are 10 million 1 करोड़ gig workers in the country, और by 2029 there will be 23 million, मतलब 2.3 crore gig workers in the country. सर, gig workers इनसे सर एक तो सर they provide employment, they also help in bringing gender parity, because सर ये जो gig sector है इसमें बहुत सारे सर महिलाएं काम करती हैं, and because of the flexible working hours, women find it convenient to work in the gig sector. And by supporting the gig sector in the budget, Honorable Finance Minister has shown that this government is about gender parity, about women empowerment, and about job creation. Sir, she announced ID cards and registration on the e-Shram portal for the gig workers. All the gig workers will be enrolled under the Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana, which is going to assist 1 crore gig workers. Sir, defense. Another area which I'm very interested in. Sir, many parliamentary standing committees have recommended that we should spend at least 3% of our GDP on defense. It hasn't happened yet. Still we are at 2%. Sir, today our defense spend is almost $80 billion. Exact number, sir, hai 6.81 lakh crore. China spends about $300 billion. Almost 4 times ours. And we know, sir, what kind of relationship we have with China. So, sir,
every time I have been speaking that we should spend more on budget, and I must thank the Honorable Finance Minister that she has hiked the defense budget this year 6.3% over last year's BE. Sir, export of defense product from now we are exporting 21,000 crore worth of defense product, which will be hiked to, which will grow to almost 50,000 over the next 3-4 years. Sir, I could go on and on. Sir, education, healthcare. Sir, IIT की सीट बढ़ाई गई सर, बढ़ाई जाएगी 6,500, मेडिकल की सीट 7,500 over the next 5 years. Daycare center, cancer center in all district headquarter hospitals. Sir, we all know. Everyone in this room, in this hall, August House, sir, has a family member or a friend who has cancer. And sir, how we know how difficult it is to go to Tata Memorial, Mumbai, or any city hospital to get cancer treatment. Now with this daycare center, cancer center in district headquarters, it will be a great boon for small town India and rural India. Sir, 36 life-saving drugs. Basic custom duty has been reduced on these 36 life-saving drugs, which will help millions of our patients. Sir, finally, sir, I'll come to my state of Orissa. Sir, I applaud the Honorable Finance Minister when she announced a mission for cotton productivity. Sir, I come from the district of Kalahandi, which is known, sir, just 1 or 2 minutes, sir, which is known for its black cotton soil. Sir, we have one of the finest black cotton soil in the country. And I have, in the past also, sir, during 0 hour, requested the government to set up a cotton research institute in Kalahandi. And now again, sir, I will request the Honorable, the government to consider this. Sir, Honorable Finance Minister also announced 5 national centers of excellence for skilling. So what a wonderful announcement, sir. Sir, I'll request the government that one of these centers should be set up in the state of Orissa, preferably in Western Orissa, sir. Tourism, sir, Honorable, in the last budget, Honorable Finance Minister had acknowledged Orissa's abundant tourism potential. Sir, through you, I will request that I have a couple of suggestions, sir. One is that Bali Yatra, we declared as a national festival. Sir, Dhanu Yatra, which is the largest open-air theatre on earth, for 11 days, one town called Bargat becomes Mathura Nagari. Sir, that should be considered for, sir, this intangible UNESCO. Sir, 30 seconds, sir. And sir, finally, sir, railway. Sir, during the UPA regime, between 2004 to 2014, Orissa got on average, sir, 30 seconds, 734 crore rupiah sir salana milta tha Orissa ko, 734 crore. Today it is 10 times more per year. This year being 10,600, 10 गुना ज़्यादा मिल रहा है सर. सर, उड़ीसा का रेलवे डेंसिटी आज 20 है, नेबरिंग स्टेट्स का 48 है, वेस्ट बंगाल में. सर, लेकिन सर इसके लिए जिम्मेदार तो सर अश्विनी वैष्णव जी नहीं है, इसके लिए जिम्मेदार निर्मला जी नहीं है. दिस इज पास्ट लेगेसी सर. पिछले सरकारों ने नहीं किया, तभी जाके सर ये लेगेसी आया जो अभी सुधारा जा रहा है. सर, फाइनली सर, मैडम फिनांस मिनिस्टर, सर, जस्ट लास्ट सर. So, sir, we should acknowledge the reality. When we demand more fund, is this enough? No, I don't think. As a member from Odisha, I will definitely expect more funding from the government. बहुत धन्यवाद. Thank you. धन्यवाद सर. धन्यवाद. श्री विवेक के तनखा. सर, इस वक्त जब बोलने के लिए निमंत्रण मिलता है तो ऐसा लगता है यू आर लाइक अ नाइट वॉचमैन, जैसे क्रिकेट में होता है लास्ट में. Anyway, let me do the best. आप तो अच्छे बोले रोले, आप बेटर अच्छे हो, आप नाइट वॉचमैन कैसे हो जाएंगे? ये स्पीच विवेक तनखा की नहीं है सर. ये स्पीच है देश के करोड़ों युवकों की. ये स्पीच है देश के 1.25 करोड़ गरीबों की. ये स्पीच है देश के लाखों मरीजों की. और ये स्पीच है देश के करोड़ों श्रद्धालुओं की तरफ से सर, जो हर बजट को बहुत उम्मीद और आशा से देखते हैं सर. बजट इनकम, एक्सपेंडिचर एंड एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर जो होता है नेक्स्ट कमिंग ईयर का, उसका एक लेखा जोखा होता है सर. हमको बार बार ये बताया जा रहा है कि विकसित भारत जो 2047 तक अचीव होगा, एज इफ ये बजट उस विकसित भारत का बजट है. ये बजट तो 1 साल का बजट है. हमको तो ये भी नहीं पता कि 4 साल बाद क्या व्यवस्था होगी. इसी इलेक्शन में अगर 20 सीट कम हो जाती तो दूसरी और व्यवस्था हो सकती थी. तो मेरा ये कहना है कि बजट को एनुअल फीचर मान के उस साल के बारे में हम बात करें. हम तो आज बात करना चाहते हैं उस कुंभ के बारे में. अब 12 साल में ये महाकुंभ होता है. 12 साल के बजट में आपने
क्या प्रावधान किया उस कुंभ के लिए? 300 किलोमीटर की कतार है सर, वहां घुसना मुश्किल है, एयरपोर्ट से कुंभ एरिया में पहुंचने में डिफिकल्टी है। वेयर इज दैट इंफ्रास्ट्रक्चर? आप जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, वेयर इज दैट इंफ्रास्ट्रक्चर? जो कुछ आपने बनाया इस वॉज कॉस्मेटिक। तो मेरा तो ये कहना है कि अगर धार्मिक पर्यटन जिसके लिए 2 लाख करोड़ से ज्यादा आमदनी होने वाली है, उन लोग की व्यथा तो देखिए क्या हालत है। कोई प्लानिंग नहीं, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर में 12 साल का समय आपको मिला था तैयारी का। हमने इस 12 साल में क्या किया? मेरा तो कहना है वाराणसी, मथुरा, उज्जैन, नर्मदा, जबलपुर, केदारनाथ, वैष्णो देवी, ये सभी प्राचीन और धार्मिक शहर हैं और ऐसी समस्याएं सब जगह उठती हैं। हमारे जो रिपीटेड बजट्स आए हैं उसमें इन शहरों के बारे में और इन ऐसे बड़े बड़े आयोजन के बारे में क्या सोचा गया? क्या प्रावधान है? मुझे तो कुछ दिखता नहीं खास। मिशन आत्मनिर्भर भारत पल्सेस के बारे में आपने बोला, एम इज टू रिड्यूस इंपोर्ट डिपेंडेंसी। फाइनेंशियल ईयर 24 में पल्सेस का आयात hit a 6-year high, surging by 84%. 6-year high of 84%. India is the largest vegetable oil importer. हम ऑयल का जो वेजिटेबल ऑयल का इंपोर्ट करते हैं, fulfilling 70% of its demand from foreign sources. Without investment in research and high-yielding seeds, such announcements remain a mere slogan. मेरे को खुशी हुई कि मखाना बोर्ड भोपाल का एक यूनिक इनिशिएटिव, बिहार का एक यूनिक इनिशिएटिव है, बट यूएसए आज एक मखाना का एक सुपर फूड एक जॉइंट मार्केट बन चुका है और जो हमारे फार्मर्स हैं उनको तो एमएसपी तक नहीं मिलती है मखाना की और जो प्रॉफिट्स होते हैं वो सब बाहर जाते हैं। तो आपके पास जो व्यवस्थाएं हैं, इन व्यवस्थाओं पे तो बजट का एलोकेशन होना चाहिए। इसी तरह मैं आपको बताना चाहता हूं MSME contributes 30% to GDP and 45% to exports। अब आप देखिए, आप कहते हो हमने क्रेडिट गारंटी टू MSME बहुत इंक्रीज की है, हम स्वागत करते हैं, मगर 19,828 MSMEs शट डाउन हुए हैं इन 23-24। तो 20,000 अगर MSMEs बंद हो रहे हैं लास्ट 1 साल में, तो ये क्या कहानी है? हम किस कहानी की बात कर रहे हैं? So this is support. This is the support reaching the right beneficiaries is the question. इसी तरह फिस्कल टारगेट आपने बात की कि 4.4 ऑफ द GDP होना कर रहे हैं हम, डाउन फ्रॉम 4.8 लास्ट ईयर। अब डेफिसिट रिडक्शन आप कर तो रहे हो एट द कॉस्ट ऑफ मैसिव कट्स इन व्हाट? कैपिटल एक्सपेंडिचर। एजुकेशन को आपने 11,584 करोड़ रुपीस से कम किया, सोशल वेलफेयर को रिड्यूस किया 11,900 करोड़ से, रूरल डेवलपमेंट को रिड्यूस किया 75,000 करोड़ से, एग्रीकल्चर को रिड्यूस किया बाय 10,992 करोड़ से। तो इस सब का क्या मतलब है? आपने डेफिसिट अगर कम भी किया और ये सब चीजें कैपिटल एक्सपेंडिचर्स को आपने रिड्यूस कर दिया, तो आपने अपने मेन सेक्टर्स को तो अनएड्रेस्ड छोड़ दिया ना। अब आप टैक्सेशन की बात करता हूं, आपने एक वर्ल्ड में प्रोग्रेसिव टैक्सेशन पॉलिसीज होती हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेस कंट्रीब्यूट 27% ऑफ ग्रॉस रिसीट्स, 27% इनडायरेक्ट टैक्स। कंट्रीब्यूशन ऑफ इनकम टैक्स इज 22%, जबकि इनकम टैक्स को इनडायरेक्ट टैक्स से ज्यादा होना चाहिए अगर हम कंट्री में इक्विटी की बात कर रहे हैं। कंट्रीब्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स इज जस्ट 17%, जिसको सबसे ज्यादा टैक्स करना चाहिए। ऐसा लगता है कि पूरी सरकारी कॉर्पोरेट्स के लिए आप उन्हीं को बेनिफिट देना चाहते हो, उन्हीं को सपोर्ट करना चाहते हो। तो दिस पार्शियलिटी टुवर्ड्स कॉर्पोरेट्स इज बिकमिंग वेरी हैवी फॉर अ कॉमन मैन। ये जनता के बीच में एक कॉमन बातचीत का विषय बन चुका है। इन पंडित नेहरूज वर्ड, द गवर्नमेंट इज रिलाइंग ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉवर्टी। हम पॉवर्टी को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं। अब सोचिए, 14th कैग रिपोर्ट ऑन आउटस्टैंडिंग डिमांड ऑन इनकम टैक्स एसएससी, कैग की रिपोर्ट है ये। आईटी डिमांड, आईटी डिपार्टमेंट तो डिफंक्ट हो गया है,
हमारे सेक्रेटरी जनरल मोदी साहब खुद हेड ऑफ द आईटी इनकम टैक्स बोर्ड थे। आईटी डिपार्टमेंट वर्चुअली डिफंक्ट हो गया है। कैग रिपोर्ट का है कहना यह है कि 2011 में कैग फाउंड 84.3% ऑफ आउटस्टैंडिंग टैक्स डिमांड टू बी अनरिकवरेबल। 84.3% of outstanding tax demand to be unrecoverable, and this has now risen to 97%. That is 19.35 lakh crores is unrecoverable. आप रिकवरी नहीं कर सकते। क्या कहता है? Despite multiple requests, CBDT refused to share tax defaulters data from March 2020 to 2024. अभी अगर आपका ट्रांसपेरेंसी ही नहीं है और सीबीडीटी अपना डाटा जो डिफॉल्टर्स का है कैग से शेयर नहीं करता है, तो हम क्या बोलें? आईटी डिपार्टमेंट फेल्ड टू प्रोड्यूस रिकॉर्ड्स, ये क्या कह रहा है? फेल्ड टू प्रोड्यूस रिकॉर्ड्स फॉर सेवरल हाई डिमांड केसेस इंक्लूडिंग 3 फर्म्स ओइंग अबाउट 11,000 करोड़। कैग के साथ आप छुपाते हो, कैग को नहीं बताने को तैयार हो आप। Out of 2,156 audit queries, जो कैग ने क्वेरीज भेजी 2,156, 81% were unanswered, उनका आंसर ही नहीं दिया गया, exposing systemic inefficiency in the tax recovery। अब आप कहते हो कि हम बहुत विकसित भारत की तरफ जा रहे हैं, आप कहते हैं हमारी टैक्स सिस्टम बहुत अच्छा है। अब इस कैग रिपोर्ट के बाद मैं क्या सोचूं सर, मैं क्या समझूं? अगर ये 19 लाख करोड़ जो हम कलेक्ट कर लेते हैं एफिशिएंटली, आप सोचो वो हमारा सोशल सेक्टर की स्पेंडिंग ऑन हेल्थ, एजुकेशन, रिसर्च, डिफेंस, फूड सब्सिडी, मनरेगा एंड इवन अ बेटर कुंभ उससे ऑर्गेनाइज हो जाता। बट हम कलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं अपने आउटस्टैंडिंग डिमांड्स। हमारा सिस्टम इतना वो हो गया है। अब मैं चाहता हूँ इंडियन जुडिशरी पे आता हूँ। आप देखिए 5 करोड़ केसेस पेंडिंग है। आपने जुडिशरी की तरफ ध्यान क्या दिया है? तो 24-25 में आपने 6,461 करोड़ जुडिशरी को दिया था। 25-26 में आप प्रपोज कर रहे हो 5,850, आपने कम कर दिया है। केसेस की एरियर्स की जो संख्या बढ़ती जा रही है, 5 करोड़ पहुंच रही है, बजट कम होते जा रहा है। आपने मीडिएशन बिल पास किया, इट्स अ नॉन स्टार्टर, क्योंकि मीडिएशन बिल मींस पैरेलल सेटअप। जैसे कोर्ट का सेटअप है, यू नीड अ पैरेलल मीडिएशन सेटअप। वेयर इज दैट सेटअप? वेयर आर द मीडिएटर्स? वेयर इज द बिल्डिंग? जो लोग आएंगे वो बैठे, आप जितने दफे जितनी सूट्स फाइल होते हैं उतना मीडिएशन होना चाहिए, दैट्स द लॉ। बट उतने फिर कोर्ट रूम्स होने चाहिए, उतने प्लेस मीडिएटर्स होंगे, काउंसलर्स होंगे, क्लाइंट्स आएंगे। सेटअप ही नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग ही नहीं होती है। We have more than 5 crore cases pending. अच्छा, every time you make a new law, आपको एक इम्पैक्ट असेसमेंट करना चाहिए कि न्यू लॉ से कितने केसेस जनरेट होंगे, कितने कोर्ट्स में केसेस बढ़ेंगे। कोई ऐसी प्लानिंग नहीं रहती। आपको एक्सटेंसिव ट्रेनिंग करना चाहिए फॉर जजेस, पुलिस एंड प्रोसिक्यूटर्स, which is lacking. Digital infrastructure for case management and evidence storage कहाँ पर है? आज हमको अगर कोई क्राइम होता है चेन्नई में और हमको दिल्ली में बायोमेट्रिक्स की कोई जरूरत कनेक्ट करना है कि वो आदमी ने कभी दिल्ली में क्राइम किया था, ऑटोमेटिक कोई सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं है। इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट फॉर न्यू प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स, हर चीज इतनी आपने डिफिकल्ट बनाई हुई है। और बजट के माध्यम से अगर आप लिबरल होते जुडिशरी के साथ, तो हो सकता है एक मॉडर्न जुडिशियल सेटअप आ जाता। मेरा तो कहना है कि 3,000 करोड़ फॉर फास्ट ट्रैक कमर्शियल कोर्ट्स टू क्लियर बिजनेस डिस्प्यूट्स आप विद इन 12 मंथ्स आपको बनाना चाहिए। अगर आप चाहते हो देश ट्रिलियन कितने इकॉनमी बने, तो कैसे बनेगी? अगर लोगों को विश्वास ही नहीं कि यहाँ पर डिस्प्यूट्स रिजॉल्व हो सकते हैं, बिजनेस डिस्प्यूट रिजॉल्व ही नहीं होंगे सालों तक, तो आपका वो सिस्टम ही नहीं है। 1,500 करोड़ आपको चाहिए टू रिक्रूट 5,000 न्यू जजेस इन कोर्ट्स एंड ट्राइब्यूनल्स। वेयर इज दैट इन द बजट? 1,000 करोड़ आपको मिनिमम लगेगा टू एस्टैब्लिश इवनिंग कोर्ट्स इन मेट्रो सिटीज फॉर कॉन्ट्रैक्ट्स, इन्फोर्समेंट केसेस। कोई नई सोच तो लाइए अपने बजट के माध्यम से। आप जो सिस्टम्स ऑलरेडी कोलैप्स कर चुके हैं, उनको आप एड्रेस कहाँ कर रहे हो?
खाली स्लोगन से अगर एड्रेस हो जाते तो चीजें बहुत पहले ठीक हो गई होती। नो, हमारा कहना यह है अराउंड 6 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स आर स्टक इन लीगल बैटल्स ड्यू टू जुडिशियल डिलेज। 6 लाख करोड़ के केसेस पेंडिंग है सर ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर। Real estate and infrastructure projects worth 1.3 lakh crores stuck in land acquisition disputes. Land disputes alone account for 66% of civil cases dealing infrastructure and industrial projects. अब ऐसे में कौन फॉरेन इन्वेस्टर आपके आने वाला है इंडिया में, और आप कहते हो कि यहाँ हमारे यहाँ दुनिया आने वाली है? कौन आएगा दुनिया सर? दुनिया तब आएगी जब आपकी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रियली सामने दिखे। मतलब उस आदमी को लगना चाहिए कि मेरे साथ अन्याय हो, मेरे साथ गलत है, और मैं कोर्ट गया, कचहरी गया, ट्राइब्यूनल गया, अधिकारी के पास गया, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। हेल्थ केयर स्पेंडिंग रिमेन्स एट 2.1% ऑफ GDP, barely enough for band-aids. I mean, forget health revolution. अरे बैंडेड के लिए हो जाए तो बड़ी बात है। In UK, USA, Europe, people pay 40-50% taxes and get 100% optimum health care. In India, we pay 50-60% taxes but get no health care. Look, पूरे आप देखिए मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड, सब लोग दिल्ली एम्स में आना चाहते हैं, और दिल्ली एम्स इज सो ओवरक्राउडेड, नो प्लेस टू स्टैंड। रिलेटिव्स पेशेंट्स के बाहर रोड पे और इनसाइड मेट्रो स्टेशन मिलेंगे आपको। सर्जरीज की लिस्ट, सर्जरीज की जो डेट्स मिलती हैं 1-1 साल बाद, 2-2 साल बाद, मेरे पास रोज रिक्वेस्ट आती है कि सर हम बचेंगे नहीं तो अब सर्जरी करा के क्या करेंगे। तो आप ये किस विकसित भारत की हम बात कर रहे हैं? ये किस हेल्थ मैकेनिज्म की हम बात कर रहे हैं सर? CGS स्कीम्स हमने लाए। आप बताइए कितने प्राइवेट हॉस्पिटल CGS स्कीम्स को एक्सेप्ट करते हैं? भगा देते हैं पेशेंट्स को। वो कहते हैं कि सालों तक हमारे बिल्स क्लियर नहीं होते। सबको पता है सर ये बात। फाइनेंस मिनिस्टर के एलोकेशन फॉर हॉस्पिटल बढ़ाते क्यों नहीं? 50% ऑफ इंडियंस लैक बेसिक हेल्थ इंश्योरेंस सर। 20,000 से 70-75 हज़ार के बीच में जो लोग हैं मिड सेगमेंट, उनको ये बेनिफिट्स ही नहीं मिलते हैं। कैग रिपोर्ट का आयुष्मान भारत के बारे में कितनी सारी बातें उन्होंने बोली हैं कि कितना फ्रॉड चल रहा है सर। एजुकेशन, आपका स्कूल ड्रॉप आउट 15 to 20% है सर। नेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस ऑफ स्किल्स जो हैं, इट्स लाइक थ्रोइंग अ बर्थडे पार्टी विद वन बैलून। Government promises Viksit Bharat in 2047, but we want IIT, IIMs and medical college today, not in 47, sir. So मेरा ये कहना है, आपने इंक्यूबेटर स्कीम लाई, 300 इंक्यूबेटर स्कीम लाए। आप बताइए एक यूनिकॉर्न आपने प्रोड्यूस किया क्या? आप करोड़ रुपए तो इंक्यूबेटर स्कीम पे लगा देते हैं, बट यूनिकॉर्न कौन बना यहाँ सर इंडिया में? तो मेरा ये कहना है, R&D में जब तक आप अपना बजट नहीं बढ़ाओगे, वो R&D में आप क्या स्पेंड करते हो? 0.64%। तो R&D का आप स्पेंड नहीं करोगे तो आप बताइए, आप चाइना विच स्पेंड्स 2.4%, US 3.5%, आप कैसे कॉम्पीट करेंगे सर? गवर्नमेंट का R&D इज 55%, प्राइवेट सेक्टर इज 45%, जबकि यूरोप का में इट इज 70%। डीप सीक एंड चैट GPT इज द न्यू ब्रेक थ्रू। अब वो देखिए ब्रेक थ्रू जो हो गया है वो तो अमेरिका यूरोप में हो रहा है सर, और हम कहते हैं कि हम इन न्यू एरा में जा रहे हैं। सर मेरे पास बात तो बहुत सारी कहने की, क्योंकि 15 मिनट हो गए हैं, तो इसलिए मैं ज़्यादा ले लूँगा। मैं तो लास्ट में यही कहना चाहूँगा सर कि GST को रैशनलाइज करिए। GST में प्रॉब्लम क्या है सर? अपार्ट फ्रॉम द टैक्स रेट्स सर, जो दिन भर जो विदाउट डिटर्मिनेशन जो लोगों को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया जाता है, पूरी इंडस्ट्री डरी बैठी हुई है। तो आपका एग्जीक्यूशन खराब है, आपका एग्जीक्यूशन खराब है, आपकी प्लानिंग नहीं है, आपकी कोई स्कीम्स नहीं है। धन्यवाद तनखा साहब। श्री सुभाषीष खूंटिया अनुपस्थित। श्रीमती जया बच्चन अनुपस्थित। श्री डॉक्टर V. शिवदासन। Yes, sir. Respected Chair, the budget itself is very insufficient. Government has failed
to mobilize the resources, the total budget is only 14.2% of the GDP. In USA, the expenditure of the federal government is 23% of GDP. Government should mobilize the resources and spend them for the common good. So, but the union government does not have the proper vision and proper foresight. Gandhi was martyred on 30th January. The budget is presented on 1st of February. We say Gandhi live in our hearts. But can we see Gandhi in the budget documents? Sir, Gandhi gave a talisman to us, recalled the face of the poorest and weakest human being whom you may have seen, and asked yourself if the step you contemplate is going to be of any use to them. Unquote. So, the budget fails according to Gandhi's talisman. Gandhi talked about Gram Swaraj, but rural India was completely neglected in this budget. The government has not spent the allocated amount 75,000 crore for the rural sector in 2024-2025. They have announced many schemes, but they did not spend the money. Sir, the government is not ready to increase the allocation for the MGNREG by even a single paisa from 86,000 crore rupees. So the government has been cutting the allocations for employment guarantee scheme. It was 1.1 lakh crore in 2021, but now only 86,000 crore each year they have decreased. They are telling MGNREG is a demand-driven project, but they will give more money. That is their announcement, more money according to the demand. But last year, the union government has not been ready to allocate more than a single paisa to the MGNREG scheme. The union budget has failed to address the basic issues of the common people. The value of the rupee is decreasing day by day. In the history of India, we have never seen such a fall of Indian rupee. The credit goes to the union government according to the statements of a former Gujarat chief minister. The government is selling the valuable assets of the nation. The government plans to raise 47,000 crores by selling public sector enterprises. They are telling about Ujjwal Yojana, but the LPG subsidy has been reduced by 2,600 crore. Sir, what about the allocation to the welfare programs? Only 12,500 crores have been allocated for the midday meal scheme. Sir, the last year allocated amount 12,460, but they have spent only, they revised and reduced the amount to 10,000 crore. In India, peasants are struggling, but the crop insurance scheme, the allocated amount has been reduced. Sir, fertilizer subsidy has been reduced. The amount of irrigation has been reduced. Earlier it was 11,840, but now it is only 10,764. Scholarship for Adivasis and Dalits have been reduced. Sir, everything, the pre-matric scholarship has been reduced. They did not increase a single rupee for Anganwadi workers, Sasha workers, and midday meal workers. They have presented the budget that completely neglected the rural poor and marginalized. In banking sector, employees are working day and night, but they are not getting proper remunerations. LIC, the Life Insurance Corporation, they are trying to complete privatize through the foreign investment. Sir, I am coming from Kerala. This government neglected the tear of the people of Wayanad in Kerala. Sir, I like to remind them Wayanad is in the Indian Republic. Sir,
सर वे राम के नाम बोलते हैं लेकिन नादू राम का काम करते हैं। सर, I request the government, you please protect the interest of the people of the country. Sir, they are trying, sir, 1 minute, sir. Sir, they are trying to reduce the entire welfare policies. They did not increase a single rupee for sir, only 1 minute, sir. Only 1 minute, sir. Sir, only 1 minute, sir. Because of the disturbance, I lost 1 minute. Sir, only 1 minute, sir. They are not ready to increase a single rupee for pension scheme, sir. This widow pension, this pension for elderly persons, pension for other weaker sections, they did not increase a single rupee, sir. Then how they will protect the interest of the common people? I request the government, don't sell the assets of the people, don't sell the entire national legacy to the foreign countries. I request the government to take the protective measures for the people. These words, I conclude my intervention for the speech. Thank you, sir. Thank you. माननीय श्री संजय राउत। धन्यवाद सर। आजकल के जो बजट होते हैं वो किसी राज्य में चुनाव है वो देखकर बजट बनाए जाते हैं, चाहे चुनाव दिल्ली का हो या चाहे चुनाव बिहार का हो। उस बारे में कोई तकरार करने की, कंप्लेंट करने की जरूरत नहीं, सब हमारे देश के हिस्से है। अब बिहार का चुनाव है तो बिहार के लिए अगर बजट में कोई ज़्यादा दिया है तो हम उसका स्वागत करेंगे, लेकिन उसके साथ सभी राज्यों को भी अपना हिस्सा मिलना चाहिए। दूसरी बात है कि बिहार को पिछले बजट में 60,000 करोड़ दिया था, मेरे हिसाब से जो जानकारी मेरे पास है, पैकेज दिया था 60,000 करोड़ का, लेकिन उसमें से कितना खर्चा ये सरकार कर पाई है? 600 करोड़ भी अब तक खर्चा नहीं हुआ है, ये जानकारी किसी ने दी है। अगर ये है तो पैकेज पे पैकेज देकर किसी राज्य को आप इस तरह से अपने कर्ज में या कोई दबाव में आप लेना चाहते हो। सर, हमारे अर्थव्यवस्था को आगामी कुछ वर्षों में हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य है और मैं उसका स्वागत करता हूँ, लेकिन उसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना चाहिए, बहुत सी बातें करनी चाहिए, देश की जनता के लिए भी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। वो मुझे उसमें से बहुत सी कमियां ये बजट में दिखती है। किसानों का इनकम डबल करने का वादा आप हमेशा करते आए हैं, लेकिन इस बारे में इस बजट में कोई खास योजनाएं नहीं है। कम से कम मिनिमम सपोर्ट प्राइस की जो मांग है किसानों की, और उसके लिए आज भी पंजाब का किसान आंदोलन कर रहा है, ये घोषणा तो आप इस बजट में अगर करते तो ज़रूर हम उसका स्वागत करते। सर, देश की अर्थव्यवस्था बहुत बड़ी है हमारी, फिर भी हमारे देश की अर्थव्यवस्था आज भी कर्ज में डूबी है। भारत सरकार पर लगभग 185,000 करोड़ का कर्ज आज भी है, और फिर भी सरकार ने कुछ गिने चुने उद्योगपतियों का लगभग 16 लाख करोड़ का कर्ज माफ़ किया, लेकिन किसानों का कर्ज अब तक हम माफ़ नहीं कर पाए हैं। हमारी पूरी अर्थव्यवस्था 325 लाख करोड़ की है, और ये जो कर्ज हमने माफ़ किया है ये अर्थव्यवस्था के 50% के बराबर है। देश के हर व्यक्ति पर आज भी 1.25 लाख रुपए का कर्ज है। सर, सरकार कहती है कि मिडिल क्लास का बजट है। कैसे? आपने 12 लाख तक का इनकम टैक्स को छूट दी है, इसलिए ये बजट सिर्फ मिडिल क्लास का नहीं हो सकता। देश की आबादी लगभग 140 करोड़ के पार हो गई है, उसमें से ये 12 लाख रुपए इनकम पाने वाले कितने लोग हैं? इनकम टैक्स से ज़्यादा परेशान अगर आज लोग हैं तो वो जीएसटी से है। जीएसटी का भी सीधा असर इस देश के मिडिल क्लास पर हो रहा है।
लोग मार्केट में जाते हैं, रोज़ लगने वाला सामान खरीदते हैं और हर सामान पर एक कॉमन लोगों को जीएसटी पे करनी पड़ती है और इसलिए महंगाई बढ़ गई है। अगर आपने इनकम टैक्स के साथ साथ जीएसटी के ऊपर भी कोई अच्छा एक पैकेज दे देते मिडिल क्लास के लिए, तो ये देश की जनता सचमुच खुश रहती, क्योंकि आज जीएसटी की वजह से महंगाई बढ़ी है, जीएसटी की वजह से व्यापारी खुश नहीं है, जीएसटी की वजह से बहुत सा एक बड़ा वर्ग है वो अपना कंजम्पशन कम कर रही है। ये सभी बातें हैं वो जीएसटी से जुड़ी है, लेकिन जीएसटी को आपने कोई कॉमन पीपल को जीएसटी के बारे में कोई आपने कंसेशन नहीं दिया है। दूसरी बात है सर कि आपने मिडिल क्लास की अगर आप बात करें तो आज भी ये सरकार 85 करोड़ लोगों 85 करोड़ लोगों को फ्री रेशन दे रही है, तो ये सभी लोग बिलो पॉवर्टी लाइन है, तो उसका मतलब है उनके पास कोई इनकम नहीं है। देश में 15% लोग ऐसे हैं जिनके पास कोई काम नहीं है, वो बेरोजगार है पूरी तरह से, उनका कोई इनकम नहीं है। और हमारे वित्त मंत्री ने अपने भाषण में बेरोजगारी के बारे में कोई न योजना दी है न बेरोजगारों का कोई नाम लिया है। देश में महंगाई बढ़ रही है, उस बारे में कोई योजना नहीं है कम करने के लिए, रुपया दिनों दिन गिर रहा है, उस बारे में कोई मजबूत योजना नहीं हमारे पास। तो ये सभी बातें अगर हम देखें तो दिखावा ज़्यादा है, इस बजट में दिखावा ज़्यादा है, शो ज़्यादा है, और ये इतना शो है कि ये शो देखकर लोग भूल जाते, लोग भ्रमित हो जाते हैं, बड़ी बड़ी आप भाषण करते हैं। अच्छी बात है, सरकार है, लेकिन मैं हमेशा कहूँगा जब तक इस देश में मिडिल क्लास जिंदा है तब तक ये देश जिंदा रहेगा, क्योंकि देश में लड़ने वाला जो आदमी है वो मिडिल क्लास है। तो आने वाले दिनों में बजट हो या आपकी योजनाएं हो, मिडिल क्लास को, बिलो पॉवर्टी लाइन जो लोग हैं, वो सबको ध्यान में रखकर आपको आपकी योजनाएं तैयार करनी पड़ेगी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद रावत साहब। श्री बीड़ा मस्तान राव यादव। Thank you, Vice Chairman, sir. On behalf of our TDP party and our leader and Andhra Pradesh Honorable Chief Minister Sri Nara Chandrababu Naidu Garu, I am participating on the Union Budget 2025-26 discussion, sir. Sir, Union Budget 2025-26 marks a significant milestone in India's economic journey under the visionary leadership of our Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji and Finance Minister Srimati Nirmala Sitharaman ji. This development-oriented budget reaffirms the government's commitment to economic growth, social welfare, and fiscal providence. Sir, Andhra Pradesh scenario. I don't want to waste much of time, sir, discussing other things. Budget allocation and impact. Honorable Vice Chairman, sir, recognizing our Andhra Pradesh Honorable Chief Minister Chandrababu Naidu's Andhra Pradesh pivotal role in India's economic growth, the Union Budget 2025-26 has allocated significant funds for the state across multiple ministries and schemes. These allocations are in line with Vision 2047 of the Government of Andhra Pradesh, that is Vikasit Andhra Pradesh 2047, with emphasis infrastructure growth, agricultural modernization, employment generation, and digital transformation. Sir, as per the wish of our Honorable Chief Minister Sri Chandrababu Naidu Garu, key ministry-wise allocation for Andhra Pradesh, sir. Ministry of Rural Development, 12,000 crores. MGNREGS, PMAAY Rural, PMGSY, 9.1% increase from 11,000 crore in the previous year. Ministry of Road Transport and Highways, sir. 18,500 crores, expansion of NHS Express, 8.85% increase from 17,000 crores in the previous year.
Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, 10,000 crore PM Kisan crop insurance and irrigation. This is 7.5% increase from 9,300 crore in the previous year, sir. Ministry of Jal Shakti, rupees 6,800 crore Jal Jeevan Mission Polavaram project, that is 6.3% increase from 6,400 crore in the previous year, sir. Ministry of Education, 8,500 crores new IIT skill development, that is 7.6% increase from 7,900 crore in the previous year, sir. Ministry of Health and Family Welfare, rupees 7,200 crore, that is the IIMS expansion rural health care, that is the 8.3% increase from 6,650 crore in the previous year, sir. Sir, as per demand of our Honorable Chief Minister Sri Chandrababu Naidu ji, approved projects in Andhra Pradesh. The budget clearly reflects the government's focus on the infrastructure development with key allocations directed towards infrastructure. 12,000 crore for roads under Bharatmala Phase 2, 10% increase from 10,900 crore in the previous year, sir. Metro and railways, rupees 4,000 crore for Visakhapatnam Metro and Rail Network expansion. That is 7.5% increase from 3,720 crore in the previous year, sir. Renewable energy, 5,000 crore for green energy corridor. That is 8.7% increase from 4,600 crore in the previous year, sir. समाप्त करें. Urban development, 5,000 crore under smart cities mission, 6.8% increase from 4,680 crore in the previous year, sir. Polavaram irrigation project, rupees 6,500 crores additional funding, that is 5.4% increase from 6,170 crore in the previous year, sir. These allocations reaffirm idea of our Honorable Chief Minister Sri Chandrababu Naidu Garu's strong cooperative federalism between Andhra Pradesh and the central government. Quoting the legendary leader Sri N.T. Ramarao, development is the right of every citizen and governance must ensure it reaches every corner of the society. The budget fulfills that vision by empowering Andhra Pradesh economy and infrastructure. These initiatives support Atmanirbhar Andhra Pradesh, leveraging the centre's vision to transform the state into an innovation and technology hub. Sir, with deep gratitude to the Prime Minister Sri Narendra Modi ji, Home Minister Sri Amit Shah ji, and Finance Minister Sri Nirmala Sitharaman ji, and our Honorable Chief Minister Sri Chandrababu Naidu Garu, we acknowledge their steadfast commitment to India's progress and Andhra Pradesh punishment. Thanking you, sir. समाप्त. धन्यवाद. Jai Bharat, Jai Andhra Pradesh. डॉक्टर भागवत कराड़. माननीय उपसभापति महोदय, मैं आपका और हमारे हाउस लीडर जेपी नड्डा जी, पार्लियामेंट्री मिनिस्टर माननीय किरण रिजिजू जी, इनका आभार व्यक्त करता हूं, मुझे इस बजट के ऊपर बोलने के लिए वक्त दिया है। माननीय वित्त मंत्री का आज ये दूसरा रिकॉर्ड बना रहे। पहले टाइम 2024 का जो बजट हुआ था उसी वक्त 7वां ये बजट उन्होंने पेश किया था, लेडी बोल के, और अभी 8वां बजट उन्होंने पेश किया है। इसलिए माननीय वित्त मंत्री जी का दिल से मैं अभिनंदन करना चाहता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत बदल रहा है। भारत का हर क्षेत्र में विकास हो रहा है और ये विकसित भारत करने का प्रधानमंत्री जी का जो सपना है 2047 में, इसीलिए हम सभी को एक मिलकर काम करना पड़ेगा। जिसमें मैं बताना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी का तीसरा टर्म का ये पहला बजट है। वैसा ही ये बजट जो ये हमारी सेंचुरी का, आपका भाषण कल जारी रहेगा। बहुत अच्छा है, अच्छा है। The House stands adjourned to meet at 11 a.m. on Tuesday, the 11th February 2025. धन्यवाद।